डेट स्टार्ट होती है. आई थिंक there might be some photo shoots, you never know क्या चल रहा है पीठ पीछे, but फिलहाल के लिए we can see Vidit Gujrathi drinking orange juice. I assume something in his hand. I don't know what it is. Orange juice लग रहा है ना यार, I think Ranjan भाई. मैग्नस कार्लसन ने एक बार कहा था ऑरेंज जूस कैन लीड टू स्पाइक्स इन ऐसे ग्लूकोज एंड इट कैन एक्चुअली हैम्पर योर गेम. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एटलीस्ट. वहां पे यू कैन सी चैट कितना क्राउड है, कितनी फोटोज खींची जा रही है. प्राग के हीरो है हमारे यहाँ के सारे इंडियंस, नोदिरबेक भी, सारे टॉप प्लेयर्स वहां पे. क्या हाल है चैट, क्या हाल है? आलू टिक्की लेट नहीं, आलू टिक्की पक रही थी, सॉरी आई मीन नहा रही थी. गोल पोस्ट को चेंज कर दिया. गोल पोस्ट नहीं भाई, कोई गोल पोस्ट चेंज नहीं किया है. जैसे गेम स्टार्ट हुई हम आ चुके हैं. विद गुजराती फुली फोकस्ड. we have three crazy games for you chat today. First of all, you can see Vidit Gujrathi against Nodirbek. It's going to be a crazy match because Vidit ke white pieces hai dobara. So yesterday he had a draw and today he gets a chance to become the India #1 yet again, because Nodirbek ko harane pe Nodirbek ki rating bhi kam hogi, so he will drop out of world top 10 and Vidit will go to world top 10 maybe. That's a potential possibility, let's say. That's one thing. So crazy match there. Second match is between Prague against Parham. Now Prague has the black pieces. Not to forget कि जो Prague है हमारे, वो कल जीते हैं और इंडिया #1 है अभी, विशी आनंद के भी आगे. So that is crazy news. And today he plays Parham with the black pieces. क्या वो और आगे जाएंगे? World top 10, 9, 8 and so on. क्या वो विशी आनंद से बहुत आगे निकल जाएंगे? क्या वो 2800 की तरफ बढ़ेंगे? आज हमें इसके आंसर मिलेंगे इस सवाल के. भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है. एंड देन फाइनली वी हैव गुकेश अगेंस्ट थाई दाई वैन nguyen. यहाँ पे गुकेश is playing the lowest seed of this event with the black pieces. So बहुत interesting रहेगा. I would say Gukesh should have excellent chances to basically win this game, even with black, especially if he wants to win the candidates. वहाँ पे ये नौबत आएगी when he's playing Abasto with the black pieces or some other player with the black pieces. He needs to win on demand. So it's really, really important today he wins. Nodirbek ने इनको हराया था Nguyen जी को, तो clearly Nguyen जी अच्छे फ्लो में नहीं होंगे, थोड़े डीमोरलाइज्ड होंगे, बुरी तरह हराया था. सो यहाँ पे गुकेश के पास अच्छा चांस है टू गेट हिज फर्स्ट विन एंड आल्सो क्रॉस 2750. एंड एक एक करके चैट हमने देखा था कितने सारे इंडियन 2747 थे, सब एक एक करके 2750 क्रॉस कर रहे हैं एंड स्लोली एंटरिंग द वर्ल्ड टॉप 10. सो दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इनसेन. बट द स्टार गेम फॉर टुडे, बाय द वे बाकी गेम्स में है रैपोर्ट अगेंस्ट बार्टेल, we have Navara against Keymer, and then finally these are the games. So but the cracker game today, as you can see Gukesh there fully focused, is going to be Vidit Gujrathi against Abdusattorov Nodirbek. That is the sharpest game, the most exciting game of today, because clearly मतलब ये दोनों प्लेयर्स बहुत खतरनाक तो है ही है. दोनों वर्ल्ड टॉप, एक तो वर्ल्ड टॉप 10 में कल ही पहुंचा है, बट जैसा हमने देखा है जैसे ही कोई वर्ल्ड टॉप 10 में जाता है वो बंदा हार जाता है. सो क्या वो दिन आज होगा नोदिरबेक के लिए? चैट हमने एक पोल डाला है, डू वोट. अभी 64% लोग कह रहे हैं विदित जीतेगा, 17% नोदिरबेक, 18% ड्रॉ. अब मैं पूरा मेजॉरिटी के साथ हूं भाई, बिल्कुल मैं पूरा बिल्कुल भी यहाँ पे रुक के नहीं खाने. वी वांट विदित टू क्रश नोदिरबेक हियर. यहाँ पे कैमरा थोड़ा टिल्टेड है, हमें वीडियो थोड़े कम दिख रहे हैं, नोदिरबेक ज्यादा दिख रहे हैं. इस कैमरा एंगल थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं. निजम कैन यू एडजस्ट? अगर हमें वीडियो थोड़ा और दिख पाए तो मजा आ जाए. सैल्यू केल इज केटी. केल का मतलब वेयर होता है क्या? आई डोंट नो भाई. केल इज केटी कैसे वेयर भाई आप? एलिगेसी अर्जुन भी है 2748 एंड ही स्टार्ट्स हिज टूर्नामेंट फ्रॉम टुमारो, जहां पे ही विल प्ले अनीश गिरी, तो वो अलग ही है भाई. सो यहाँ पे धीरे धीरे करके मतलब सारे प्लेयर वन बाय वन विल क्रॉस 2750, जो सिर्फ और सिर्फ विशी आनंद और हरिकृष्ण ने क्रॉस किया आज तक, बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, पिछले महीने से पहले तक एटलीस्ट. एंड अब सारे लोग क्रॉस करने वाले. माय फिट रेटिंग इज 2200, इनसे कुछ 400-500 पॉइंट पीछे है, बट समझने के लिए हमारे पास तुम हो चैट, और हमारे पास बार भी है, समझ के हम सब समझ जाएंगे भाई. एंड यू कैन सी Nodirbek there, slightly nervous, fiddling around with it, very calm. Will we have its meditation pose today? थोड़ा कैमरा ब्लरी होते हुए, मतलब विदित की मेडिटेशन एनर्जी कैमरा को भी ब्लर कर रही है भाई. कैमरा भी है. Oh, Nodirbek fully focused there. Can you see chat कितना focused है? Vidit is like भाई तू कर ले फोकस भाई, तू अभी स्टार्ट कर ले. मेरा जैसी क्लॉक दबती है तब फोकस स्टार्ट होता है. तब तक स्टार्ट भी नहीं होता मेरा फोकस. तो तू कर ले भाई, तू कर ले अपना, तू कर ले मेडिटेट. मेरा अभी स्टार्ट होगा, मेरा भी मौका आया भी नहीं है.
Can we have the board plus cameras, Nanjan bhai, because थोड़ा blurry है, so maybe मुझे blurry दिख रहा है, maybe it's just me. Vidit हल्का सा smile कर रहा है, पता नहीं क्यों. I can see a little smile there on Vidit's face, nodding to some, I don't know who it was, maybe some, I don't know, fans, family, friends, I don't know who it was. Javal Francais, just spreche Deutsch, ich spreche Deutsch, Javal Francais. Is Jospem good? He's epic, man. Like, he's one of the talents, especially online chess में खतरनाक है. Chat, यार crowd देखो यार. Look at the crowd, chat. Like, honestly, this makes me happy, यार. I don't know, chat. बड़ा अच्छा लग रहा है देख के crowd, नहीं? इतने लोग, can we have full screen again for a second? Sorry, Nanjan bhai, to make you ऐसे back and forth, but I really want to see the crowd once. कितना से, I don't know, maybe उनका fan कोई और है. It's maybe not Tweedy. अच्छा, maybe prize वो inauguration के लिए आए थे, but really nice to see so many people standing there. ऐसे फैंस की तरह एक बंदा अपनी नाक भी पहुंच रहा है. काफी इंटरेस्टिंग फैंस हैं, बट क्रेजी. Yeah, Vince, like you do commentary same till the game on. कल रात के आखिरी 1 घंटे के बारे में I cannot say the same. Apart from that, maybe yes. जब तक गला चलेगा, जब तक हमारी स्ट्रीम में एनर्जी चलेगी भाई. So विदित भाई कैमरा के देखते हुए, हे वीडी भाई, क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब चंगा सी. रेडी हो ना भाई? आज हरा देना यार, मस्त. What is हिंदी? हिंदी हमारी भाषा है भाई. अब सारे लोग उधर देख रहे हैं. नोदिरबेक को देखो यार, बाय द वे, बिल्कुल भी बोर्ड से फोकस नहीं उठा है. यू कैन सी वीडी लुकिंग एट एवरीवेयर, रिलैक्सिंग, हमारी तरफ भी देख रहा है. बट नोदिरबेक इज लाइक, भाई ना भाई, फुल फोकस. Very interesting strategies by both players, and they are shaking hands, and the game begins. VD's meditation starts now. I guessed it. VD's meditation starts now. So 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oh, it's dot 40 seconds. I saw this 40-second number even earlier. So apparently, chat, we found the magic number of Midi's meditation. That is 40 seconds he meditates for, and he finally plays the pawn to e4. Let's see what Nodirbek plays. We saw him mumbling something as Vidi was, meditating. Let's see कि अब board पे क्या खेलते हैं. E5, very solid choice. Pawn के आगे pawn. विदा के आगे कोई नॉर्मल रह सकता है क्या? भाई हम तो नॉर्मल नहीं है भाई. Nodirbek भी लाइक, भाई क्यों इग्नोर मारेगा भाई? इट्स अ बिट अनकंफर्टेबल एज योर ओपोनेंट, नो, बिकॉज तुम हाथ मिलाते हो, सडनली ओपोनेंट आंखें बंद कर लेता है. तुम सोचते हो ऐसा क्या छू दिया मैंने हाथ की, भाई क्या इमेजिन कर रहा होगा ये. ओ, पेट्रॉफ डिफेंस, दैट्स एन इंटरेस्टिंग चॉइस. यूजुअली पेट्रॉफ लोग इसलिए खेलते हैं जब उनको ड्रॉ भी चलता है. नंजन भाई, आई वांट योर एडवाइस ऑन दिस विदाउट द वो जो एको आएगा इफ पॉसिबल. डू यू थिंक कि जब भी कोई पेट्रॉफ खेलता है, दे आर सेइंग, यू नो व्हाट, ड्रॉ इज ओके विद मी? और डू यू थिंक ये पुराना कंसेप्शन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कारुआना भी खेल चुके हैं, एंड दैट परसेप्शन हैज चेंज्ड नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अभी तक पूरा पेट्रॉफ नहीं है, क्योंकि नाइट इनटू e5 के बाद मैं एक मूव नाइट c6 खेल सकता हूं, जो इंटरनेट नहीं, एरिक रोजन नहीं है भाई. एरिक रोजन नहीं है भाई, दैट विल नॉट हैपन. तो ये तो पहली चीज है कि पेट्रॉफ के बारे में, पूरा पेट्रॉफ के बारे में अगर बोलेंगे तो यस, इट इज अ वे टू से दैट अगर चांस लेना है तो आप ही को लेना है, मैं तो ड्रॉ से भी संतुष्ट हूँ. तो इट इज अ प्रोवोकेटिव ओपनिंग दीस डेज, दैट्स व्हाट आई फील. Oh, look at the stair, look at the stair. Can you full screen and अपनी echo बंद कर देना Anuj भाई please. Oh, he played knight c3. He does not allow it. निरंजन भाई hitting the nail on the head. पता नहीं किसका हेड था, बट जो खतरनाक हिट किया है भाई. क्या बढ़िया गेस किया निरंजन भाई ने. अभी पेट्रॉफ नहीं है मेरे दोस्त. So we have the 4 knights, but based on my understanding, chat, यहाँ पे usually it used to be considered drawish. Now bishop b5 I assume, but कहीं ना कहीं d4 यहाँ पे ऑप्शन है, बिशप c4 ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है. बट यूजुअली काफी थ्योरी आजकल रिसेंटली आई है रंजन भाई, आई थिंक, जहां तक मुझे आइडिया है. मे बी आई एम रॉन्ग ऑन दिस, बट आई थिंक रिसेंटली थ्योरी काफी डेवलप हुई है ना इधर. हाँ, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ भाई, विदित d4 खेलेंगे. d4 खेलेंगे क्या रंजन भाई? ओके, इंटरेस्टिंग. रंजन भाई एको का ध्यान रखना. एंड ही प्लेस बिशप b5. रंजन भाई भी गेस नहीं कर पाए. इतना कॉम्प्लिकेटेड गेम ऑलरेडी. चैट, वी आर गोइंग टू सी सम. ओ, knight d4. Knight d4 played. Wait, this is not the main line. No, I think main line bishop b4 है, right? Bishop b4 is the main line. Knight d4 is also there.
It's also there though, also there, chat. But not the main line, not the main line here. Bishop b4, knight d4 played. Black moves the same piece twice here. Look at this. So एक piece को 2 बार चलाया उन्होंने. तो ये यूजुअली ओपनिंग प्रिंसिपल बीट करता है. सो वीडी भाई तो जीत ही जाएंगे ना. भाई निरंजन भाई अब तो इजी वन होनी चाहिए नहीं? देख लो भाई 800 किलो वाले सारे लड़ाई कर बैठेंगे. हाँ भाई, हाँ भाई, अब विन होनी चाहिए. मुझे लगता है अभी भी, मतलब अभी बिशप b5 नाइट d4 बिशप c4 अभी भी स्टिल कंसिडर्ड एज मेन लाइन, बट द कॉमन लाइन इज बिशप b4. लेकिन यहाँ पे पॉन सैक लाइन है भाई, बहुत अच्छा पॉन सैक है, और ये फोर्स लाइन है, 20 मूव तक जाएगा ये. हाँ c6 वाला है ना, 95 वाला आई थिंक. करेक्ट. हाँ मुझे एक्चुअली थ्योरी नहीं पता, बट आई हैव सीन दिस लाइन एंड व्हाइल कमेंटेटिंग. सो मैं कमेंट्री करते करते लाइन सीख गया. चैट स्ट्रीम लाइक करते चलो, समोसा चैलेंज करेंगे एग्जैक्टली 369 लाइक्स पे. लेट्स गो. सो या 95 अभी हो सकता है, अभी के लिए पॉसिबल नहीं था चैट, बिकॉज 95 पे हमारा ये बिशप थोड़ा सा कमजोर है. मे बी इट्स नॉट इनफ. एंड ऑल्सो क्वीन e7 के आइडियाज है. सो e4 पॉन कैन बी हैंगिंग. सो इट्स नॉट फुल प्रूफ प्लान नहीं है हमारे पास. दिस इज ऑल थ्योरी. नाइट d4 प्लेड. Bishop drops back to c4 and now he plays. Has he played? No, not yet. He's not played yet. So Nodirbek जी बिल्कुल हाथ तो सर के ऊपर हाथ रखते हुए, हाथ के ऊपर सर या जो भी है, फुल फोकस होते हुए विदित पूरा चिल कर रहे हैं. Can we have full screen for a second before we shift to the next game? भाई पानी बहुत पी रहे हैं विदित भाई. लगता है उनको डाइटिशियन ने कहा है कि बहुत पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो. रेंज भाई, this looks like a clear strategy to drink more water. I don't know. बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं आजकल. Yes, liquids are good. लिक्विड्स आर गुड. देखो भाई निरंजन भाई ने कहा है लिक्विड्स आर गुड, सो आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू दैट. एक तरफ पानी, एक तरफ जूस, बहुत बढ़िया है. गोइंग बैक टू द बोर्ड अगेन, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द अदर टू गेम्स. एंड आई क्विक, ओ बिशप c5 प्लेड. So he plays bishop c5 and that is the main move in this variation apparently. And let's see अब क्या होता है यहाँ पे. Interesting game. Chat, let's do one thing. Quickly, let's go through all the 3 games एक बार and then we'll come back and look at it deeply. ठीक है? This is it against Nodirbek. Looks exciting. Opening theory आज हम सब कुछ सीखने को मिलेगी. Let's go to Maghsoodloo against Parham. Now here, finally we have 1d4. I'm glad to see 1d4 on the board as a 1d4 player. Boom! Yes! London system on the board. अरे परहम खेल गया यार. निरंजन भाई, कोई धर्म संकट में आंसर कैसे देते? हाउ डू यू चूज बिटवीन योर लाइफ पर्पस एंड टेम्पटेशंस? You don't choose. You don't choose, yeah? Because London is मेरी फेवरेट ओपनिंग है, बट अपेरेंटली आज उनको सपोर्ट करना मुश्किल है भाई. लंदन बैड, लंदन रियली बैड. एंड नाउ बिशप f5. यूजुअली यहाँ पे ये बिशप f5 नहीं खेलते लोग, बिकॉज c4 के बाद white gets kind of queen's gambitish kind of structure with queen coming to b3. So let's see वो खेला क्या. बिल्कुल c4 खेला, e6. I think queen b3, knight c3 बहुत जल्दी आएगा. So ये position as a white player I would be really happy to see. Honestly, I love this position as white. But देखते हैं, अगर परग ने खेला है तो स्ट्रैटेजी तो होगी 110%. कल हमने परग को देखा खेलते हुए परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ. आज भी वैसे ही खेलेंगे तो जरूर जीतेंगे. We'll come to this game. अभी ओपनिंग थ्योरी चल रही है. 100% एक्यूरेसी में बोथ प्लेयर्स. Prague fully focused. Maghsoodloo अभी बोर्ड पे नहीं है. That means he is in his prep right now. Going to the game of Gukesh D against Thai Dai Van Nguyen. जो गुकेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है चैट, बिकॉज ही इज प्लेइंग द लोएस्ट सीड ऑफ दिस इवेंट. ही हैज टू विन टुडे. अगर आज जीतते नहीं है तो रेटिंग भी खूब गिरेगी. He will go back to a couple of ranks, maybe, who knows. And also because फिर टूर्नामेंट जीते हैं कैसे? अगर उनको टूर्नामेंट जीतना है तो लोएस्ट सीड को तो अटैक करना ही होगा. c4, e6, g3, d5, बिशप g2, और यहीं पे आता है d4, पुटिंग द पॉइंट द सेंटर. कहते हैं भाई तुम्हें मौका हमने दिया, तुमने नहीं लिया, दोबारा नहीं मिलेगा. Now he will play c5. He might even play knight c6, might even try to go e5, take a huge center and basically play as white with the black pieces. तो बड़ा मजा आने वाला है इस गेम में. आई थिंक व्हाइट के ने 1 मिनट गेन किया है, so that means white is in his prep. Something to keep in mind. गुकेश ज्यादा टाइम लिए हैं, so we'll have to see. फिलहाल के लिए आई थिंक गुकेश इज फाइन, बट व्हाइट अपनी प्रेप में लग रहे हैं. उनका हेयर स्टाइल क्या चमक रहा है, शार्प उन्होंने करके रखा है. उसमें लिखा है भाई दिस इज ऑल प्रेप, क्योंकि उनका स्क्रैम्बल्ड है, कॉम नहीं करा है. दैट मींस आखिरी मोमेंट तक प्रेप कर रहे थे भाई.
So crazy preparation there. Let's go back to Vidit's game for a second. And wahan pe we have this variation, bishop c4, bishop c5. And as you said, Niranjan bhai, he has taken the pawn on e5. And now we have queen to e7 and knight drops back to f3. So निरंजन भाई, यहाँ पे काफी क्रेजी पोजीशन लग रही है व्हाइट का. तीन पीसेस दोनों के पास डेवलप्ड है. व्हाइट अगर कैसल कर चुका होता तो बहुत ही उम्दा होता, बट कैसल नहीं है. बट आई डू थिंक कि अगर 94 तो कैसल व्हाइट के लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे रूक e1 के साथ. सो व्हाट इज द मूव निरंजन भाई हियर? अगर 94 अच्छी चाल नहीं है तो व्हाट इज द मूव फॉर ब्लैक? क्या व्हाइट पॉन अप होने वाला है? नहीं, वन मोमेंट. 95 क्वीन e7 के बाद विदित नाइट f3 खेला है. हाँ, तो ब्लैक से मूव पूछ रहे आप? हाँ बिल्कुल. व्हाट शुड ब्लैक प्ले? बिकॉज़ अगर 94 पे कैसल्स तो मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है यार. d5 खेलेंगे. d5 विदित खेला है ये d5. वाओ, दैट इज अ क्रेजी मूव चैट. d5 यू कांट टेक विद द पॉन. अब मुझे याद आ रहा है मैंने शायद किसी गेम में देखा था रिसेंटली, पिछले ही 2 टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं पे. एंड विदित को देखो भाई, लुकिंग एट द लेफ्ट. दोनों प्लेयर्स, कैन वी हैव फुल स्क्रीन? एक बंदा बाएं की तरफ देखता हुआ, एक बंदा दाएं की तरफ देखता हुआ. It's like you know, it's like a couple who's angry at each other. Sorry. एक उधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है. Both of them are not looking at the board. ये क्या चल रहा है mind games chat? Look at the psychological pressure they're trying to. Is this Ninja bhai, I have a question. ये psychological pressure है कि like is it just randomly occurring? Both players know कि दूसरा बंदा दूसरी तरफ देख रहा है तो मैं भी बोर्ड की तरफ नहीं देखूंगा. Do you think this is that, or I am just like over speculating? नहीं, I think you are very close to the truth because ये Nodirbek is known for giving some stares. तो जब ये स्टेयर मारता है ना तो थोड़ा इफेक्टिव रहता है. तो अगर मैं अपना साइड में देखूं ना तो इसका स्टेयर का इतना इफेक्ट नहीं रहता है. ये हो गया फर्स्ट. और दूसरी बात ये है कि ये मैं इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ कि 2024 माइक में चक्कर है क्या? अनुमति सिंह माइक नहीं, जनवरी 16 को 2024 को विदित ने यही पोजीशन ब्लैक से खेला है. Oh, I thought so. I've seen this somewhere. I thought so मैंने recently देखा था कहीं पे. I thought so. I've seen this somewhere recently. Exactly. Oh, chat देखो, अभी भी दोनों प्लेयर. रंजन भाई एको का ध्यान रखना. Finally Vidit looks at the board. Finally इतने टाइम के बाद. And remember Nodirbek की मूव है यहाँ पे. He's not played d5 yet. Yo, रौनक भाई क्या हालचाल? Vidit has a never give attitude which makes him strong. He is by पूरा. And अब दोनों राइट में देख रहे हैं. This is epic man. I love chess. कैसे over the board और ऑनलाइन में चैट यही डिफरेंस है. ऑनलाइन में क्या है? ऑनलाइन में कि कोई अपन को देख नहीं सकते. यू कांट फील द टेंशन. ओवर द बोर्ड में दोनों प्लेयर लेफ्ट में देख रहे हैं. नोबडी इज लुकिंग एट द बोर्ड. भाई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई होगी कोई दीवार पे किसी ने. मुझे लग रहा है मॉडर्न आर्ट. I love this man. I love chess. No wonder. Chad, by the way, most likely he's trying to remember his opening prep. Of course, I'm exaggerating a little bit, but it might not be far from the truth. And now you see him looking at the board. Now he's focused. किसके साथ खेला है वीडी ब्लैक से? किसके साथ खेला? आई डोंट थिंक नोदरबेक था, तो कोई और था शायद, है ना अनिल भाई? ठीक है. एको का ध्यान रखना भाई. सो चैट क्या लग रहा है आज? चैट पहले मुझे बताओ, जल्दी स्पैम करो. व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन दिस गेम? डज वीडी विन? डज नोदरबेक विन? और विल इट बी अ ड्रॉ? कम ऑन चैट, जल्दी चैट में लिखो, मुझे पढ़ना है. ग्रैंड मास्टर कितने मूव तक प्रिपेयर करते हैं भाई? जब तक पोजीशन में क्लैरिटी ना मिले. अगर क्लैरिटी 6 मूव में मिल रही है तो 6 मूव तक. अगर क्लैरिटी उनको मिल रही है 25 मूव में तो 25 मूव तक. एंड जैसे ही उन्होंने खेला है d5, he has found the move, the best move on the board. Let's go back to the board and see कितना जल्दी विदित गुजराती खेलते हैं मूव. Yo Ame bhai, what's up? And Nodirbek ji playing the best move. Now you can't take with the pawn, chat, because this is pinned against the king. If you take with the knight, for example, which would be the logical move, but then comes queen takes c4 and we can't castle. या knight को वापस लाना पड़ेगा. बार बार घोड़ा नहीं हिलाना है हमें. This is not being good. Hence you have to take with the bishop, but then of course bishop pair हमारा जाएगा. And this is also not exactly what I want to do. So we'll have to see how it goes about. यहाँ पे क्या खेलते हैं? सारी moves technically possible है, but I do think bishop d5 might be played. Let's see what Vidit plays. I'm sure he's in his prep.
he was the one to play knight c3 chat. Remember, उन्होंने खुद खेला है knight c3. He was the one to play bishop b5 here, then bishop c4. So it should be his prep, and he has taken on d5 with the bishop. Let's see how Nodirbek responds. We should sacrifice his king. वो भी आएगा भाई, वो भी बहुत जल्दी आएगा. लेकिन hopefully गेम जीतने के बाद जो sacrifice करना है कर दे भाई. We don't mind. By the way, okay, so Nodirbek now thinking, let's go to the Prague game. Has something happened? Yup, he did play. Maghsoodloo has played the queen to b3 as expected, and now, he has to make a choice. Does he go passive, or does he play a move like knight to c6? यहाँ बहुत crucial है chat. I think knight c6 is a possibility here, but then you're kind of leaving b7 hanging for a while. So dono options hai. Let's see which one he goes for. It'll be interesting to see. Prague right now calculating, he's shaking a little bit. That tells me maybe he's not fully prepared. Do you think Ranjan bhai he's out of prep on move 5? I don't think so, right? भाई कल का इंटरव्यू देखा कि नहीं, इससे ही पता चल जाता है कि स्टिल इन प्रेप. कल 24 मूव्स तक प्रिपरेशन था भाई. हाँ, but the thing is, कई बार ना याद नहीं रहता होगा इनको. It's not like they've seen it last day, so it might be prep, but they might be trying to remember it and calculate everything as they go along. So अब ये तो obviously they've seen this position before, या कभी ना कभी. Nodirbek to Vidit head to head. यार head to head तो यार अब chess boxing नहीं कर सकते यार. Head to head तो लड़ाई हो जाएगी यार. देख लो तुम क्या स्कोर है रंजन भाई. Can you figure it out? I do think कि Vidit ने हराया था Nodirbek को in Tana Steel. So that's recent. हाँ, तो एको क्या ध्यान रखना भाई. तो recently तो I think Vidit has the upper edge, but yeah, I mean it's all in the past now. So आज भी वो prove करना पड़ेगा उनको. Let's see वो prove कर सकते हैं कि नहीं. And यहाँ for example chat, let's क्या रंजन भाई, क्या नहीं है? चेक नहीं, ठीक है. चैट कितने लोग चैट में भाई हाई लिखो यार. भाई आलसी क्यों हो भाई? कम ऑन, इतनी ऐसे स्लो चैट की आदत नहीं है अपन भाई को. जल्दी से सब हाई चैट में हाई लिखो भाई. और मेरे को चैट दिख क्यों नहीं रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है. जल्दी चैट से हाई लिखो. Prague has no chance against London system, right? टिक्कू भाई यार आज के लिए लंदन को त्यागना पड़ेगा यार. हमारे पास हम मजबूर है, हम देश किस लिए मजबूर है भाई. वी कांट हेल्प इट. आज के दिन के लिए हमें बोलना पड़ेगा लंदन इज नॉट द बेस्ट, अनफॉर्चुनेटली. चैट क्या करे. So hopefully Prague will fight this. Going to the game of Gukesh now. जल्दी से एक बार क्या चल रहा है वहां पे. So after knight, we saw it till I think d4, knight f3, c5, castles, and now knight to e7. ये knight कहाँ जा रहा है? Maybe to c6, and then he will go this knight to d7 and then e5. सारे knight का support लेंगे e5 खेलने के लिए. Interesting. हाय हे, ये क्या चल रहा है भाई? हाय हे भाई, एक हे लिखो ना यार. यो नैतिक भाई क्या हाल चाल? यू आर एन भाई, जैन जी, निशान जी, सूरज जी. भाई सूरज तो ढल गया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नरेश भाई कनाडा में कितने बज रहे हैं यार? नोदिर्बेक ब्लंडर्ड कह रहे हैं. ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो स्कैम है, 100% स्कैम है. लेट मी कंफर्म दिस स्कैम. तो रुकेश भाई थिंकिंग आफ्टर d3, आई थिंक knight c6 आएगा यहाँ पे. वेरी वेरी लॉजिकल मूव. लेट्स गो टू विदित गेम नाउ. एंड Nodirbek हैज टेकन ऑन d5. सो निरंजन भाई, इन दिस पोजीशन यहाँ पे I just checked the Chesscom database. Around 48 games have been played. एक गेम में c6 खेला गया था, one game में, so that is not a good move apparently. And 42 games में bishop g4 was played. 42 games में. And 5 games में we had knight takes d5. So my question to you is now, do you think this is, a slight, error in quotes? Or do you think this is like definitive prep from Nodirbek? What do you think? No, still both are. And chat, come on. अभी भी दोनों preparation में ही हैं. Prep में ही कह रहे हो ना? Interesting. So you're saying this is all prep. Okay, let's see. अरे कौन बोला London is not the best? भाई best नहीं है तो second best तो हो सकती है ना यार. It's just same against every game. ये क्या है भाई? मेरे कान तो ठीक है भाई, कान ठीक है तुम्हारे भाई. ये पापा कहां से आ गया भाई? What? यो मिस्टर कल्ब जी कैसे आप? चैट बताओ भाई क्या लग रहा है यार. मुझे लग रहा है कि आज वीडी का चांस तो है, बट वीडी इज नाउ थिंकिंग he definitely did not expect this move. And now chat यहाँ पे for example if knight e5 then black is absolutely fine. Queen e4, knight will have to come back, black will take on f3, queen takes f3, queen takes, pawn takes. Clearly black is slightly better. Damage structure I mean what 5 6 7 pawn down, but
I don't think यहाँ कोई इतना feel हो रहा है pawn. Bishop pair है black के पास, and white has double pawn, so he should be fine. So going back, I think यहाँ पे the best move is actually knight takes d4, and then let's say you grab on c3, pawn takes c3, queen takes e4, and now bishop e3 or queen e2. Both moves are possible. अच्छा नहीं, queen g2 भी है, so queen e2, queen takes e2, king takes e2, and Niranjan bhai, in this position, if we get this position, that is, do you think white has a better position, or does black have enough compensation for the pawn? What do you think? White is playing for two results. That would be a good way to put it, because at the end white के पास double pawn है, but Petrov में ये double pawn वैसे भी कई बार होता है, so it's not a big deal. Black के पास bishop pair तो है, but if I somehow exchange one of these bishops, which is possible, yeah, bishop e3 at some point, and then I move the knight, exchange the bishop, then I could be even better. And endgame में pawn up, I can definitely push, and black has no chances to win this. So going back, this is the current position. Let's see क्या variation होती है. Nodirbek wins. कहां से wins? कैसे wins? He will not win this. Today, VD will win, I think. मुझे लग रहा है भाई, पूरी feeling आ रही है. समोसा where? समोसा in my stomach भाई. आज मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने रात को एक समोसा लाके रखा है खाने के लिए, सो आज चैट में मैं दूंगा. जैसे ही we touch 369 likes, 369, वैसे ही we will have our first समोसा challenge भाई. तुम्हारे हाथ में है चैट. जितना जल्दी लाइक करोगे उतना जल्दी हम समोसा चैलेंज करेंगे. एंड चैट, कम ऑन भाई, जल्दी से लाइक करो स्ट्रीम, एंड लेट्स सी व्हाट ही प्लेज. नोदिर्बेक अभी भी स्टेयर करते हुए वीडी को, कभी लेफ्ट कभी राइट, फुल फोकस के साथ. नाइट टेक्स e2 विल बी रादर किंग. कैसलिंग का इतना फर्क नहीं पड़ता कल भाई, बिकॉज queens have been traded off. So knight in the center is a good piece. After king takes, I don't even want to castle. करना ही नहीं है castle भाई. I want to play rook e1 and maybe just king f1 in a best case scenario. So I don't honestly care about the castling rights here. If bishop g4 check, for example, just f3, no issues. Next, I can play like, rook e1, king f1, and I'm absolutely fine. So this is the current position. VD is thinking about his prep. What was the best move here? उनके seconds ने कभी ना कभी इनको बताया होगा. तो जो भी उनके secret seconds है, sweating right now. क्या हमने VD को अच्छे से याद कराई थी variation? VD is my favorite player. Chat, come on. Who is the favorite player among the three players? Not necessarily in terms of candidates, in general. Who do you love the most? Prague, VD, or Gukesh? Come on, let's go. Sandeepan Chanda had played and won. Arey, nice. So maybe we have some context here. कल गेम बहुत लंबा होता है भाई. कल तो बहुत ही लंबा चला था भाई. Honestly, कल तो हम थक गए थे भाई. Are you playing National Rapid and Blitz Ticku भाई? Most likely not यार. हम खेलने का टाइम नहीं है भाई. हम लोग कंटेंट के साथ खेलने वाले लोग हैं आजकल. कल भाई कह रहे हैं वीडियो उनके फेवरेट हैं. गुकी कह रहे हैं अर्का जी. एलियो कह रही है प्रग. गुकेश, प्रग एंड विदित. यार फेवरेट एक बंदा होता है यार, दो नहीं होते. स्वराज जी कह रहे हैं वीडियो. भाई किसकी वीडियो फेवरेट है भाई? वीडी गुकेश, वीडी प्रग. Interesting. I think maximum people are voting for Sahil Tikku. Thank you, Mr. DAD. But आपका praise मुझे नहीं चाहिए भाई. It's okay. I'll manage without it भाई. It's okay. VD, because he's the first GM I got to know after Anand. Prag, Gukesh, भाई तीनों के लिए पूरा सपोर्ट है. किसी के लिए भी कोई क्लियर फेवरेट नहीं दिख रहा मुझे. Uzbek will beat India, but where will they beat India? They're not even playing the candidates. Adiban is not playing this tournament. Is Adiban playing this tournament? Is he like कहीं बेचारा खेल रहा है? Actually मुझे पता ही नहीं है. गुकेश, प्रग, वीडी भाई साहब. गुकेश आउटप्लेड. क्या बात कर रहे हैं यार, कुछ भी. गुकेश को कोई आउटप्ले नहीं कर सकता यार. नहीं, बढ़िया पोजीशन उसकी. ऑल गुड, ऑल लुक्स गुड. सेंटर अपने पास है. मारा पॉन से मारा, सब बढ़िया लग रहा है. ही विल कैसल नाउ. नाइट विल कम टू d7 में भी. बिशप कैन डिसाइड कब आना है. e5 के बाद समवे से कम. सो लुक्स ओके फॉर गुकेश. वीडी भाई फिर जूस पीते हुए, बहुत ही ज्यादा जूस पी रहे भाई आज क्या हो गया यार? I don't know man, like I genuinely heard Carlson say कि भाई नहीं पीना चाहिए orange juice because it gives you like energy, glucose spikes, and then you kind of feel tired afterwards in the game. So I'm not sure if that's a good strategy. Maybe he's done some research. New dietitian maybe. I don't know exactly क्या चल रहा है. VD, but Nihal in general, interesting. Nihal, of course. Nihal is, I think he's 2697 right now. So 2-3 पॉइंट अवे है दोबारा 2700 पहुंचने के पास में. So काफी पास है.
ओनली अर्जुन, अरे भाई अर्जुन तो है ही यार, अर्जुन ऑफ कोर्स ही स्टार्टिंग प्लेइंग टुमारो, तो वो अलग है। प्रग की गेम बाय द वे नाइट D7 खेला है उन्होंने, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो प्रग प्लेस नाइट टू D7। आज तक सिर्फ 6 गेम आई हैं chess.com पे इस पोजीशन में। Again, we have some preparation by Praggnanandhaa on the board. And if I was playing as white, honestly, I have never faced this in an over-the-board game, and I've played the London a lot. So, I would say कि मकसूदलू भाई ने ज्यादा कैलकुलेट नहीं किया होगा इसके ऊपर। एंड जो 6 गेम हुई है यहाँ पे, सब गेमों में नाइट C3 खेला गया था। ऑल द गेम्स नाइट C3 was played. So, chat, for example, first question, can we take on B7? Apparently, we can't. We can't take this, chat. यहाँ पे बहुत सारी moves है black के लिए, but the craziest move apparently is some move like E5, which feels ridiculous at first. भाई क्या ये क्या चल क्या रहा है? Free का pawn है, but now comes Rook B8 attacking the queen. And if you take the pawn on A7, now comes Knight E4 with Bishop E4 incoming next. And you have not even castled. और अगर तुम Knight C3 exchange करने की कोशिश करते हो, I will not take this, I will take on B2. And after Knight takes C4, let's say even Bishop B4 directly check. This is already mate. So it's been what, 10 moves and white is lost. So I think काफी interesting move है Knight D7. Let's see how Parham plays this. Prag भाई पूरे chill लग रहे हैं, स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। यो सूरज भाई, एसएल नारायण बहुत पास है भाई, बिल्कुल। Yesterday you didn't give samosas. Yesterday यार लाइक हुए नहीं भाई, जल्दी से 369 लाइक्स कर दो भाई, 369 लाइक्स पहले समोसा करेंगे भाई। 4 मूव के आगे नहीं सोच पाते भाई, वो धीरे धीरे बढ़ेगा यार। स्टार्टिंग में हम भी एक ही मूव सोचते थे भाई, बट आगे जाके बढ़ता है लाइफ में आगे बढ़ोगे तुम, फिक्र मत करो भाई। गोइंग टू द गेम ऑफ Vidit back again. Has Nodirbek played something? Nothing yet. Let's go back to the camera of Vidit and see what Vidit is right now thinking. क्या उन्होंने मूव नहीं देखी? I would be very shocked if he has not seen this move before. I think वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या थी मूव, क्या बताया था मेरे सेकंड्स ने। आपका कौन फेवरेट है? मेरा वो फेवरेट है जो कैंडिडेट जीतेगा भाई, बिकॉज उस बंदे की वजह से we get to have an Indian in the World Championship. I will officially put my favorite tag on the guy who wins the candidates भाई, हम विनर पे पैसा लगाने वाले लोग हैं। And chat, VD has played knight takes D4. He finds the only move to gain the advantage. Let's see what happens now. Nodirbek will take on C3 or D4 quickly, one of these moves. Let's see. VD पानी पी रहा है तो हम भी पियेंगे भाई, let's go. वहां पे उन्होंने उसको रोटेट किया for some reason. What will be your reaction if you saw 10 blunders in a row? Then I will break my laptop. I will jump off the first floor into nothing because I'll go crazy. I think 10 blunder in a row, 10 blunder in a row कभी नहीं होते यार, कभी नहीं होते। जय के लिए ड्रॉप लेने के बाद कुछ होता तो नहीं है ना भाई, नहीं लेना चाहिए ड्रॉप यार। ड्रॉप लेना आई थिंक इज नॉट वर्थ इट इन टुडेस टाइम्स। जमाना इतना फास्ट बढ़ रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता। ओनली सेतु भाई, सेतु तो हम सब फैन है भाई, सेतु भाई के पूरे फैन है। नोदिर्बेक नाउ थिंकिंग कि यार सेतु, अगर यहाँ पे लॉर्ड सेतु होते तो क्या खेलते। दैट्स व्हाट ही इज थिंकिंग राइट नाउ चैट, फुल फोकस ऑन हिम। हाउ कैन आई हैंडल दिस मूव? आई थिंक यहाँ पे दोनों कैप्चर्स पॉसिबल है। इनको ये पॉन मारना है, सो नाइट C3 तो मारना ही पड़ेगा भाई, दैट्स नॉट डिबेटेबल, वो तो इनको मारना ही पड़ेगा। क्या वो पहले D4 मारेंगे कि नहीं मारेंगे? दैट इज द क्वेश्चन हियर, दैट इज द मेन क्वेश्चन। कम ऑन नोदिर्बेक भाई, जल्दी हारने का भाई टाइम नहीं है। विदित भाई बिल्कुल बोर्ड की तरफ देख नहीं रहे हैं, फुल रिलैक्स कर रहे हैं। पीछे यू कैन सी the same, I think 2 ही प्लेयर फिर से मूव कर रहे हैं। One was that kid, आज तो सूट पहन के आया वो हमारा यूट्यूबर जो घूम रहा था अभी। तो प्राइवेट क्लब चले जाओ भाई, मैं भी प्राइवेट क्लब में गया था, थापर में गया था यार, जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो यार। यो शैल भाई बिल्कुल याद हो भाई, क्या हाल चाल है यार? Thinking. What if Bishop D4 is possible, definitely. And यहाँ पे then we will take on D5. That is obvious. And now we basically allow queen takes E4. But now after queen to E2, queen takes E2, king takes E2. यहाँ पे again we are a pawn up. Black has 2 bishops. यहाँ पे maybe bishop G4 check. And if you play F3, then black can even queenside castle. And the idea is if I take on G4, I take on D5. And you are a pawn up.
but you are not developed. बहुत दूर है भाई development अभी. So this is not looking easy for white, but maybe c3 here. And if check, for example, I can run to f3 or run to c2, both options possible. And then I can go d4, play the bishop out, bring the rook, and maybe I win this. Black has to constantly find the best moves to not allow me to stabilize. So I would rather be white here, man, because white is not risking anything. एक एक्स्ट्रा पॉन है, डबल पॉन है, ठीक है समझता हूं, but it also gives me the open f file, and I'm not worried as white here. Honestly, it's not enough pieces to launch a mating attack, and I have very safe squares on c2 and f3. So going back, I think most likely that's why he will take on c3. Knight takes c3, we'll have pawn takes c3, opening the bishop, and then you will have queen e4, queen e2. So this will be the end game, and black will have some compensation. वैशाली गेम भी खोलता हूं मैं. I'll open it up quickly. खोल रहा हूं उसको भी. Anyone winning? So far नहीं भाई, अभी तक तो नहीं, पर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई ब्लंडर करने वाला है भाई. आएगा भाई, बहुत जल्दी आएगा. गुकेश भाई गेम में कुछ हुआ है क्या? गुकेश भाई की गेम में अब तक तो नो मूव्स प्लेड तब से, एंड परहम की गेम में भी परहम हैज प्लेड नाइट c3, सो ही फाइंड्स द बेस्ट मूव. So he is not gone after the pawn. Very logical move. ये check उन्होंने हमेशा के लिए avoid कर दी. Knight e4 भी avoid कर दिया. Now I can just take. And now he has to think, yeah, कि do I take on c4? That's potentially one of the main moves, taking on c4. For example, let's say white takes back with the bishop here, activating it in one move, and then knight to b6. But yeah, white is absolutely fine here. I don't see any problem with the white position. So Prag को देखना पड़ेगा what he has to play, what has he prepared at home. Going back to the game of Vidit here, let's see what he plays. Nodirbek. Any chance of black winning in this game? VD game में chance is minimal. So I really doubt कि Nodirbek can somehow confuse matters here. For example, जो 4 game Chesscom पे खेली गई हैं, 4 game इस position से, it has like I think 2 draws and 2 wins for white. So there have been no losses, and I'm not surprised. काफी decent position है. Only if white over pushes, black gets some bishop pair advantage, open game, and he uses somehow, is it possible? But otherwise, if white plays solid, it's impossible. हेलो करण जोरा, हेलो आलिया भट्ट, कैसे हैं आप? आपको जूस नहीं मिला यार? जूस नहीं मिला यार, क्या करें यार मैं कॉफी से काम चलाता हूँ. कॉफी इज गुड इनफ भाई. 5 मिनट में आओगा भाई, ये गजब है भाई. दिस इज लाइक योर पार्टनर टेलिंग यू ओके. एनीवे, समझ जाओगे तुम लोग क्या कहने वाला था. समोसा इज एनर्जी बूस्टर फॉर टिक्कू भाई. अरे थैंक यू भाई यार, लेकिन एनर्जी बूस्टर मैं रात को खाऊंगा. बोर्ड्स चालू है बट चेस की आदत नहीं जा रही. भाई बोर्ड्स कब से कब है यार? 10th और 12th के कोई डेट बताओ मुझे. आई एम क्यूरियस कि मतलब कैंडिडेट्स के साथ क्लैश कर रहे हैं क्या? बोर्ड्स कब होते हैं यार? आई थिंक मार्च में होते हैं ना, लेकिन I think they usually finish in like March last week. So yeah, April first week, right? Oh, he takes on c3. He has grabbed the knight. And now, of course, we can take with the b pawn also. But I personally like taking with the d pawn. I just checked the engine. 2 games है, दोनों में dc3 मारा गया है. So they kind of agree with me. Let's see which one Vidit goes for. आप इंडिया में, बिल्कुल इंडिया है भाई, अपने घर पे बैठे हैं भाई. Vidit now thinking carefully कि भाई किससे मारना है. And by the way, important, yeah, why are we not moving this knight? Because हमारी queen hanging है. So we cannot like move this knight somewhere, like knight f3, knight d1, we'll lose the queen and lose the game. Important there. कौन लगता है जीतेगा? चैट ये तुम बताओ मुझे, क्या लगता है कौन जीतेगा? हाँ, वैशाली गेम. Just quickly, I'll open that game as well. Where is Vaishali? 21st March to 13th March. वाह, मतलब बोर्ड एग्जाम्स टाइम ट्रैवल कर रहे हैं. मतलब पास्ट में जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स. दैट इज इनसेन मैन. आई नेवर थॉट दिस वाज पॉसिबल, बट ग्लैड टू नो कि CBSE हैज इन्वेंटेड अ टाइम मशीन. रियली हैप्पी अबाउट दैट मैन, रियली हैप्पी अबाउट दैट. वैशाली गेम में, हाँ, सो वैशाली की गेम में वी हैव ब्लैक पीसेस फॉर वैशाली एंड Sicilian on the board. d6, e5, b5, typical. Okay, h4. Yeah, this is the current position. Feels like roughly the bar says white is slightly better after queen to d6, but I am going to assume that there is some level of prep. Hopefully there's some level of prep. Otherwise, I think she's probably worse already. Let's see how it works out. She's taken on a4. ये दोनों double pawns मुझे पसंद नहीं आ रहे, especially with this pawn hanging both with the knight and the bishop. So it does look like she's slightly worse.
But I'm hoping she has some prep there. She has some plan, some sort of composition deep here. Let's see क्या होता है. You are NM or CM. I am both भाई. भगवान ने कहा कि भाई NM बनोगे CM बनोगे. मैंने कहा दोनों क्यों नहीं. H4 pawn क्यों नहीं लिया? So usually जो H4 pawn होते हैं ना. So for example, bishop H4. It is possible to take, but what happens next? White at some point will play G3. Bishop वापस आना पड़ेगा. And then the H file is opened up. So ये ना कल को Queen H5. When you castle on the king side, ये खतरनाक अटैक लगने वाला है. So this H pawn is usually not worth taking. इसको ना मारो तो अच्छा है. It's usually the best just to leave it alone, especially until white ने castle नहीं किया है. So once he castles, if this pawn is hanging, I will pick it up with the queen. Of course, अगर white castle करता है यहाँ पे, I will pick it up. But फिलहाल के लिए no, we will ignore this pawn. She's not losing. It will be okay. She'll come back. I'm pretty sure there should be some level of prep there. She will not get out prepared. Why is Samay not streaming? Because he has comedy shows regularly right now. Who knows? I'm hoping he will stream at some point. भाई एक YouTube short तो उसने डाला था. वो भी कोई प्रोमो था किसी चॉकलेट समथिंग का. बट होपिंग कि भाई ही विल कम बैक एट सम पॉइंट. भाई मुझे बुरा लग रहा है यार. From next to next board exam onwards, मतलब people who are in 10th right now will have open book exams for boards, and there will be 2 boards जिसमें से best of 2 लिया जाएगा. What? क्या बात कर रहे हो तुम? Open board exam? What? मजा April Fool मत बनाओ मुझे. What? There is no way India has open book boards. No way on earth that is possible. That is impossible. क्या बात कर रहे हो तुम? Come on यार, उल्लू मत बताओ मुझे. That is impossible. क्या बात कर रहे हो तुम? No way, man. No way. That is not possible. मजाक कर रहे हो. It is not possible. If Vidit offers a draw now, will Nodirbek accept? 100% he will take it. He has the black pieces. He's a pawn down. He is not going to, not take that. It's not happening. Yeah, seriously. Arey, nahi, that's impossible, man. That's really impossible. I can't believe that's true. That's not possible. That's impossible actually. इंडिया में ओपन बोर्ड की लोग किताबें लेके आएंगे और पेपर देंगे. भाई फिर पेपर क्यों रखना है फिर मत ही रखो पेपर. घर से सॉल्व करा लो. It is not implemented yet. अब से 12th में 2 हाफ में होंगे. बट दोनों हाफ ओपन बोर्ड है क्या? It's real भाई. बिहार में तो ओपन बोर्ड पहले से. वो मुझे नहीं पता. मैंने कुछ वीडियो से देखी उसके बारे में. But if that is true, then that's crazy. Can Vidit realistically win candidates? 100% he can, man. I really did not expect that he would win the Grand Swiss, because that was a tournament on paper, even stronger than the candidates, or at least, it was just as difficult to win. And he won that. और 8 लोगों में जीतना is relatively slightly easier for each player than to win a tournament with hundreds of players. So Vidit की जो form रही है पिछले, I would say roughly Grand Swiss से actually, it has been impeccable. World Rapid हो, Gashimo Memorial हो, Tata Steel हो, Grand Swiss हो, all of these tournaments he's played spectacularly well. Is he the favorite? Maybe not. I think clearly US के दोनों player Hikaru और Caruana are the favorites. They are the top 2 seeds and they are the most experienced, so they have to be the favorites. But I think देखते हुए कि 3 इंडियंस हैं, एक इंडियन के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. ओपन बुक एग्जाम में तो फिर अगर ओपन बुक एग्जाम होने वाले हैं तो फिर ड्यू की एडमिशन परसेंटेज क्या होगी? 100% पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा फिर तो. मुझे लग रहा है कहेंगे 100.5 चाहिए भाई. Losing the first round and then winning is more shocking. Exactly. So I do feel he has really good chances to win the candidates. Is he the favorite? Probably not. समय लेना स्ट्रीम क्यों नहीं करता? मैं अगर तुमने 369 लाइक्स किए ना, आई प्रॉमिस मैं समय से तुम्हारी एक बार फोन पे बात कराऊंगा अगले 1 महीने में. कभी ना कभी कॉल कर दूंगा उसको. वो उठाएगा नहीं शायद, वो अलग बात है, शो पे होगा, बट कॉल जरूर करूंगा मैं अगले 1 महीने कभी ना कभी स्ट्रीम पे उसको. बस अब उठाए ना उठाए वो भगवान के ऊपर है भाई. अभी चेस भी ओपन बुक होना चाहिए. वो ओपन बुक नहीं होगा ना भाई, वो ओपन कुछ और होगा. एंड आई डोंट थिंक चेस विल बी फन दैट वे.
By the way, chat still thinking. VD is still thinking here. I'm a bit surprised because I thought कि इस variation का उनको idea होगा. I think he's trying to understand कि which pawn capture is better. I think both are good. That's the best part. Regardless of what he chooses, दोनों तरफ से मारना ठीक ही लग रहा है. DU के लिए CUET देना होता है. अच्छा, ये कौन सा पेपर है यार? पहले तो मुझे याद है कि DU का सिर्फ परसेंटेज पता था यार. ये कोई नया एग्जाम आया क्या? CBSE कोई प्लान्स नहीं है. शॉकर. CBSE is not allowing people to have open board exams. Not surprised with that. मकसूदलू भाई दूर से देखते हुए ये गेम मैं भी खेला था. 10th के मार्क्स केवल रिश्तेदारों के लिए मैटर करते हैं भाई. 10th के मार्क्स घंटा मैटर नहीं करते. आई एम टेलिंग यू, लास्ट टाइम किसी रिश्तेदार ने मुझसे नंबर पूछे थे ना, वो 10th के बोर्ड के दिन ही थे. उसके बाद किसी ने पूछे नहीं आज तक. वो सिर्फ ना 10th और 12th के सर्टिफिकेट काम आते हैं जब तुम कहीं पे भी कॉलेज में अप्लाई करते हो या फिर कहीं तुम्हें बाहर तुम्हें शिफ्ट होना है. तुमसे वो मांगेंगे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, या फिर तुम मान लो MBA के लिए ट्राई वो करे हो, या फिर तुम कुछ भी कहीं भी एडमिशन है तब काम आएगा. Otherwise, these papers, like, they are not that valuable. They matter. ऐसा नहीं है, they don't matter. They do matter. By the way, B takes C3 plate. So he takes with the B pawn, chat. According to the engines, that was the preferred choice. Not my choice, but the engine's choice. So yeah, we have to agree with that. And now the B file is opened up. And you can see the bishop already coming in at some point if the bishop moves. And now black has to grab the pawn. There is nothing else. अगर नहीं मारते हैं तो I will castle, and then you are basically just lost. And if we count the pawns, chat, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6. So 2 pawn up है, at least एक तो मारना पड़ेगा ब्लैक को. 10th में थे 81.2 और 12th में थे 87.8. भाई ये कभी बंदा भूलता नहीं है. That's surprising. कभी दिमाग में रहता ही है. Can you increase mic volume? रुको भाई, increase करते हैं mic volume. बड़ी क्या भाई वॉल्यूम? बड़ी क्या? बताना भाई अगर बड़ी हो तो. A piece of paper cannot decide your future. ये तब बोलना भाई जब शादी हो जाएगी और मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा. फिर तुम्हारा फ्यूचर विल बी अफेक्टेड बाय अ पीस ऑफ पेपर भाई, फॉर श्योर. आप अपना क्लब बना के टूर्नामेंट करवाओ भाई. मेरे क्लब में कौन आएगा यार? मेरे क्लब में कोई नहीं आएगा यार. हम 4 लोग ही खेल रहे होंगे. हाँ भाई, बोर्ड टॉपर मैं ही था. जो तुम्हारे शर्मा जी का लड़का मैं ही हूँ. How is Guki doing? They are doing really well भाई. Guki भाई की गेम पे जाते हैं एक सेकंड के लिए, अगर हम जाएं, जब तक हमारे सोचते हैं नोदिरबेक जी. So we saw it till knight D3 तक हमने देखा था. Then knight EC6 coming to the center, E3, bishop E7, rook E1, and this is the current position. The advantage is Guki has a lot of space in the center and time पे already 8 मिनट आ गए. So that's the plus point. And वो also काफी weak से खेल रहे हैं relatively, so there is a good chance he can win this game and cross 2750. And Prague की गेम पे अगर हम जाएं, so we have seen exactly जो हम सोच रहे थे. यहाँ पे उन्होंने DC4 मारा है, and अगर यहाँ पे Queen B7 आता है तो again Rook B8, Rook B2, it's very dangerous. So he takes the pawn on C4 with the bishop, and I think यहाँ पे Prague Knight B6 खेलेंगे most likely. So very very solid structure for both players. Let's see कैसे develop होता है यहाँ पे. So going back to the game of the camera feed, that is Vidit against Nodirbek, the star game for today, chat. Vidit फिर जूस पीते हुए, कितना जूस लेके गए हैं आज वो? हेलो गेमिंग गुरुजी. आप गेमिंग के गुरु है भी कि ऐसे ही बोल रहे हो? टिक्कू भाई ओपी, थैंक यू. अनिल लेकर, यार अनिल लेकर जी आपका यही पूरा नाम है क्या? अनिल लेकर नाम है क्या आपका पूरा? आर यू रिटायर्ड? यस भाई, आई वाज रिटायर्ड व्हेन आई वाज बोर्न. आप इंडिया को समझते क्या है? हम कर सकते हैं ओपन बुक. भाई नहीं करेंगे यार. ओपन बुक नहीं हो सकता. मेरे डैड की एक कहानी है. ही यूज्ड टू लिव इन लाइक सम प्लेस कॉल्ड द्रास और समथिंग इन कश्मीर, वहां 1980s में. एंड वहां पे ओपन बुक पेपर होते थे, एंड पीपल हु वर like in their 50s 40s 60s used to come with a book and try to solve the paper and still fail. So open book is not guaranteed to work. लोग तब भी फेल होंगे. बट यार आज के जमाने में with phones with everything, it's kind of मतलब literally WhatsApp पे लोग टेक्स्ट कर रहे होंगे भाई. एक जमाने में तो 2200 पीक कॉलिंग 2650 वीक. भाई वही ना यार, क्या करूं? मेरा जॉब में ये भाई, जब चेस को ये मेरा जॉब प्रोफाइल का है भाई, 2650 को रोस्ट करना. भाई क्या करूं भाई? Will drinking juice and irritating opponent like Magnus Carlsen.
आई डोंट थिंक कि कार्लसन को कॉपी कर रहा है. कार्लसन पीता तो है जूस, इतना मुझे याद है. आई रिमेंबर सम मोमेंट्स जहां पे ही वाज ड्रिंकिंग समथिंग. बट ओके, विदित क्या इंटेंस लुक दे रहा है कैमरा में भाई. नॉट कॉपीइंग कार्लसन, ऐसे कैसे बोल दिया भाई तुमने? नहीं कर रहा मैं कॉपी कार्लसन को. मकसूद इज ऑलवेज वाचिंग समर्स गेम. आई एग्री. मकसूदलू भाई हर मकसूदलू भाई और एक वो कल कौन था, एक और था, आई थिंक एंटन कोरोवोव. ये गए कोरोवोव ही है ना, आई थिंक दैट्स कोरोवोव. नाम लिया बंदा हाजिर. ये दो लोग और वो एक छोटा बच्चा ने मैंने छोटे बच्चे का नाम लिया, छोटा बच्चा आ गया. व्हाट? जिसका नाम ले रहा हूं वो आ रहा है भाई. ये हो क्या रहा है? मकसूदलू का नाम लिया वो भी आ गया. ओह माय गॉड. ये तीन लोग तो सिर्फ घूम ही रहे हैं भाई हॉल में. Once Hikaru put money on himself and said, I am the answer your question, Magnus Carlsen. Since that day, dude has not won a single classical game against Carlsen. Or I think somebody mentioned कि Hikaru is betting money on Nodirbek. He told yesterday on stream. Interesting. So we would love to bet against Hikaru then. Let's go. Drinking something. Orange juice है भाई, orange juice है. I think it's orange juice. Looks like orange juice for sure. आदियो कश्मीरी पंडित, हाँ भाई. नोदिर्बेक जी बोर्ड पे चढ़ के, पता है मैं ना हमेशा देखता हूं कि ओपोनेंट का सर ना कितना बोर्ड के ऊपर है. इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम नोदिर्बेक्स हेयर टुवर्ड्स द बोर्ड, you will see it was touching the middle line of the board. So he's basically covering up half the board at this point. So काफी irritating लगता था मुझे personally है when my opponent used to do it. So yeah, Vidit also got up. With a knight to e2 better. So यहाँ पे queen e4 के बाद if you play knight to e2, let's say, the problem is कि black is not forced to castle here. He can simply grab the pawn on g2, and there is queen f2 का threat and also queen h1. And if rook f1, then there is bishop h3, and ये हार गए भाई हम लोग. So that's why this is not possible. And I think yeah, you will have to play queen e2 to trade queens. निज भाई है, बिल्कुल है भाई. Can you read my poem? कहाँ है आपकी पोयम अर्घा जी? कहाँ है आपकी शानदार पोयम? I don't think Nodirbek भाई distract हो रहे हैं, और in fact he is known to have some deadly stares himself. So he's not the guy to get distracted, and he's the guy to distract. Any tips for classical? भाई डांस की म्यूजिक किसकी बात कर रहे हो? ओके, अभी भी सोचते हुए. बुक सिर्फ अलाउ करने से मार्क्स नहीं आते. अरे भाई नोदिर्बेक अब टेबल पे ही बैठ जाएगा क्या? नहीं भाई, अब विदित उठ गया तो वो भी पीछे हो गया. दैट्स हाउ इट वर्क्स यार. ओपोनेंट चला गया तो भाई अब बोर्ड पे चढ़ने की जरूरत नहीं है. पीछे वहां पे अनदर आई थिंक इंडियन किड, और एटलीस्ट सम किड ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लेइंग. आई डोंट नो हु इट वाज दो. इंडियंस हर जगह फैले हैं यार. किसी इंडियन प्लेयर ने जो सिंगापुर में खेलता है, he crushed some GM at 8 years old. मतलब कमाल ही है. निरंजन भाई, what do you feel about these 8-year-olds crushing grandmasters? It's not good for my ego भाई. ईगो पे लेने का नहीं भाई, लेकिन देखो ये मैं इसके बारे में सोचा, और मुझे क्या लगता है कि अगर आप अभी फरीदाबाद में हो ना, अभी फरीदाबाद से मेरे शहर आने के लिए आपको कम से कम 1 दिन लगेगा. अभी फ्लाइट पे लिया तो भी 1 दिन लगेगा, करेक्ट? 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था. 5-6 दिन 4 दिन जाता था. 4 दिन के बाद आप पहुंचते थे यहाँ पे. अब ये जो टाइम है ना, इसको कॉम्प्रेस करके फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है. तो इसका मतलब है जो आदमी बुक पढ़ के 8 घंटा चेस करके जो नॉलेज पाता है, वो अभी 10 मिनट में मिल रहा है ना. तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है. ट्रू. तो इसी के हिसाब से आई थिंक, ऑफ कोर्स नॉट belittling it, I think it's amazing that this 8-year-olds are winning against GMs, but I also think that technology has been a big boon to them. I agree. And the main thing is कि मतलब कहीं ना कहीं पे the only problem is people are worried about AI taking their jobs. यहाँ पे 8-year-olds are taking my jobs or every chess player's jobs. Amazing. So और अगर AI जॉब लेगी तो बहाना अच्छा है, कम से कम AI ने जॉब ले ली यार. छी यार. 8 साल के बच्चे जॉब ले ले तो यार जस्टिफाई करना मुश्किल रहता है, नहीं रंजन भाई? हाँ भाई, डिफिकल्ट है, लेकिन टैलेंटेड है और बहुत मेहनत भी कर रही है 8-year-olds. ऐसा नहीं है कि एक गेम जीते
और खत्म। ये तो न्यूज में आते रहे। फॉर एग्जांपल बोधना शिवानंदन जो है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से एको आ रहा है मुझे भाई। उन्होंने रिसेंट मंथ्स में खेल रहे हैं। ठीक है, सो एको का ध्यान रखना भाई, बंद कर देना उसको। ठीक है भाई, रंजन भाई डेफिनेटली सपोर्ट्स 8 year olds एंड इवन आई डू, बट जिस दिन रंजन भाई को एक 9 साल के बच्चे को हराना पड़ेगा उनके नाम के लिए और गलती से ड्रॉ ले लेगा वो, उस दिन पूछूंगा निरंजन भाई से कितना सपोर्ट करते हो 8 साल के बच्चों को। That will be the day I will ask, but regardless, I agree भाई, jokes apart, I do agree. I think आपका एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट था भाई, कि आजकल लोग बहुत जल्दी सीख रहे हैं, बहुत जल्दी सब कुछ, सिर्फ चेस ही नहीं, बहुत जल्दी सब कुछ सीख रहे हैं भाई। Bro, can you just be quiet for a while? You distract those players on screen. Ranjan bhai, I'm not even sure if Manan bhai is like joking or if he's serious. What do you think? I'm not नो even sure if कमेंट्स। he's serious. भाई एको बंद कर देना। पूछो कि चेस की दवाई मिलेगी जिसको पीने के बाद आप इमोर्टल हो जाओगे। भाई नहीं यार, ऐसी दवाई पी के नहीं करना यार, जब पता होता ना कि खुद की बस की बात है तब अलग ही मजा है यार। इट्स नॉट द सेम। जिन भाई इस लैंप राइट नहीं नहीं भाई, वो लैंप जी नहीं है, उनकी ऑडियो है हमारी स्ट्रीम पे, वो आपको सुनाई दे रही है। कृष्ण से याद आया, आपको तो इंडिया नंबर 1 को हराया था। अरे बिल्कुल यार, जो करंट इंडिया नंबर 1 है उसको मैं हरा चुका हूँ यार। मैंने ट्वीट कैसे नहीं किया यार ये, अरे यार ये ट्वीट करने का था, मैंने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी। देखते हैं आज भी रहता है कि नहीं इंडिया नंबर 1। सिंगापुर में 2 साल के बच्चे के पास फोन होता है, सब लोग फोन पर होते हैं आजकल। ओ माय गॉड। नो पॉन एंड पीसेस ट्रीटेड इन रैपोर्ट्स गेम। भाई रैपोर्ट गेम से हमें उतना फर्क पड़ता नहीं है, बट जस्ट टू हैव अ लुक। अभी एक्सचेंज जाएगा भाई, डोंट वरी, इसी मूव पे एक्सचेंज होगा 100%। गोइंग टू द गेम ऑफ गुकेश, कुछ भी नहीं हुआ है। गुकेश की गेम बहुत स्लो चल रही है आज। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज 8 मूव हुए हैं सिर्फ, एंड दे हैव ऑलरेडी यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड बिकॉज कहीं ना कहीं पे हमने बहुत पहले गेम देखी थी 15-20 मिनट पहले, तो से एक ही मूव हुई है, दैट इज कैसल्स बाय गुकेश। सो काफी स्लो चलते हुए, दैट मींस कि बोथ प्लेयर्स काइंड ऑफ आउट ऑफ थ्योरी हियर। एंड गोइंग टू द गेम ऑफ प्रज्ञानंदा, जहां पे वी सॉ बिशप c4, then knight b6 as we expected, and the bishop drops back to e2। बिशप तो नहीं देंगे भाई, वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। And now I think the question is, do I play bishop e7 castles? Do I try to distract this queen a5 a4? Let's see क्या होता है यहाँ पे, काफी ऑप्शंस है। And Prag is now thinking, the fact that उनका टाइम बहुत कम है tells me कि शायद वो प्रेप पे नहीं है, बट ऐसा जैसे मैंने कहा कल के बेस पे कुछ नहीं कह सकते, क्या पता उन्होंने उनकी प्रेप बहुत डीप हो, सिर्फ he's trying to remember it। सो इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड नोदिरबेक ने पॉन मार दिया है e4 पे, ही इज जस्ट ग्रैब द पॉन। लेट्स सी, जल्दी से क्वीन e2 खेल देना चाहिए। आई डोंट थिंक दिस मच थिंक अबाउट। नितिन भाई इज जार्विस, भाई ही इज नॉट टेक ओवर द वर्ल्ड होपफुली। जाने वो लोग जहां से जिनके हमने जो कांटों का हार मिला। वाह 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 भाई, वाह वाह, क्या ही पोयम है भाई। नोदिरबेक टेक्स अननेसेसरी रिस्क। मैंने पहले नोडी के बदले मोदी पढ़ा भाई फॉर सम रीजन भाई। he is extremely clever, like his judgment about where to take risks and where not is almost perfect, man। He's like a talented youngster and world number 10 है, so it's hard to argue कि भाई ये नहीं कर सकता कुछ। So I'm pretty sure कि his calculation is not a weak point। प्लीज लास्ट 5 मूव दिखा दो। लास्ट 5 मूव ये है भाई। सो ये थी लास्ट 5 मूव। यहाँ पे d5 खेला था ब्लैक ने, एक पॉन ब्रेक, हम पॉन से नहीं मार सकते, नाइट से मारेंगे तो क्वीन टेक c4, दैट्स व्हाई बिशप d5, नाइट d5, नाइट d4, नाइट c3, pawn c3, and finally queen takes c4, and I think queen e2 आएगा and we will trade queens। we will go into an end game जहां पे white will be pawn up but double pawn होगा, and black will also have the bishop pair and a very decent position। let's see what I've seen so far is, if you want to defeat Vidit, you have to out prep in the opening in classical। कुछ हद तक ये वीडी के लिए नहीं, सबके लिए सच है, बिकॉज टॉप प्लेयर्स इतना स्ट्रांग होते हैं, दे नेवर मेक अ मिस्टेक। नेवर मतलब नेवर, दे नेवर मेक अ मिस्टेक। ठीक है, सो आउट प्रिपरेशन इन द ओपनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में आई डोंट नो एग्जैक्ट परसेंटेज कितना है,
बट मोस्ट प्लेयर्स मान लो कि अगर 6 महीने तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने से 4 महीने तो ओपनिंग ही देखते होंगे. दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज समटाइम्स. सो दैट्स व्हाई ओपनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट टॉप लेवल, नॉट जस्ट फॉर वीडी बट एवरीबॉडी एल्स. भाई कस्टम्स बनाया करो. कस्टम्स क्या है भाई? डिड प्रखर विन अगेंस्ट दैट बूमर? हु इज बूमर भाई? बूमर जी कौन है? In your opinion, what are the chances of Indian playing win the candidates? I would say roughly 3/8, man. That sounds like a fair judgment. If I had to give a mathematical term, I would say 3/8, jitna 37.5%. ठीक कोई MBA चाय वाला. भाई कॉफी वाला बोलो ना यार, उसमें कॉफी पीता हूँ, चाय आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ. यार वीडी है कहाँ यार रंजन भाई? वेयर इज वीडी? बोल. आगे आगे आ गया भाई. मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो आ रहा है यार. व्हाट इज हैपनिंग? मैंने उस बच्चे का नाम लिया, बच्चा आ गया. मैंने जिसका भी नाम लिया है, चाहे वो मकसूदलू हो, चाहे वो जो भी हो, वो बंदा कुरबो हो, वो आ चुका है. चलो भाई किसी रैंडम बंदे का नाम लेते हैं. कठिना कैफ. ऋतिक रोशन. अरे ऋतिक रोशन भाई. क्या पता समय रहना. नहीं यार, मेरी पावर खत्म हो गई यार. क्रैप. विशी पोस्ट विद बोटेज. अच्छा वो भी है क्या प्राग में? दैट्स इंटरेस्टिंग. If Nodi wants to win, he needs to avoid queen trade. There is no way to avoid the queen trade. The queen is pinned in front of the king so that it cannot move left and right. यहाँ पे नहीं चलेगी और मिलिट्री परेड मारना ही पड़ेगा. And I think VD will take with the king now, then rook e1 and king f1. लोल हो गया भाई के साथ. भाई लोल ही हो रहा है बचपन से यार, क्या करें यार, बचपन से ही लोल हो रहा है यार. लोल हमारा बचपन से ही चल रहा है, कुछ कर नहीं पाए हम. गेटिंग परमिशन फ्रॉम टिक्कू टू टॉक. ये क्या बेसमेंट में नहीं है भाई वो. भाई ही इज मैनेजिंग द स्ट्रीम ताकि एक लैपटॉप पे लोड ना है, एंड ही इज कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग एवरीवन. उनका काम आसान नहीं है भाई. हाँ भाई मैं यहीं पे हूँ. देखा, एको का रखना बस भाई. करीना कैफ को भाई, भाई ने कहने पर भी नहीं आए आप क्या? अरे यार, अरे यार आई कैन हियर माई सेल्फ निरंजन भाई. ओके, छोटा बच्चा फिर से आ चुका है. डेफिनेटली यूट्यूबर बनेगा, ये तो कंफर्म है, बंदा यूट्यूबर बनने वाला है भाई. टकरार होने वाली थी अभी. बेसमेंट में कोई नहीं है भाई. ओ बाय द वे, नोटिर्बेक कमिंग अप विद, आई डोंट नो, इट फील्स लाइक आई डोंट नो, टी प्रॉब्ली टी है. हाँ अरे टी फैन है नोटिर्बेक. अब तो और मुझे लग रहा है वीडी जीतना चाहिए भाई. जूस ओवर टी एनी डे मैन. जूस ओवर टी. चैट, दिस इज द बैटल ऑफ जूस वर्सेस टी. तो कौन सा तुम्हें ज्यादा पसंद है यार? अगर तुम्हें ऑप्शन मिले, जूस पियोगे ऑरेंज जूस कि चाय पियोगे भाई? विच वन डू यू लाइक मोर? बिकॉज क्लियरली दोनों लोग पीने के लिए फुल एक्साइटेड है आज. कोरोमोव नहीं बैठता है भाई. Korobov does not like sitting at the board. That is very clear to me. Yesterday, Korobov, तो मतलब he was moving around 24/7. Continue कैसे the chat. भाई आ गया नहीं, आ गई होना चाहिए था. स्कैम भी करना है तो अच्छे से करो. टी टी जूस 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 जूस. या इवन आई प्रेफर जूस यार. नो 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 सरप्राइजेस. कोका कोला कह रहे हैं आई लाइक टी. मंदिर भाई वो ऑप्शन में नहीं है भाई. ये कि आप गौतम गंभीर क्यों बन रहे हो भाई स्ट्रीम के? टी टी जूस. आई थिंक 75-25 चल रहा है यार, मुझे भी लग रहा है यार. ऑलवेज टी. वाओ. टी बोलते ही एक बंदा टी लेके जा रहा था. ये मस्त है यार. वाओ. सो अपेरेंटली आई कैन ऑर्डर थिंग्स ऑन डिमांड या मतलब कॉफी. अरे यार छोड़ो, मेरी पावर बहुत लिमिटेड है लगता है. वीडी भाई स्टेयर देते हुए वहां पे, और उन्होंने किंग से मार दिया है उसको उठा के जल्दी से. ब्लैक क्वीन सोच थी शायद बच जाऊं मैं, क्या पता यहां से निकल पाऊं, बट नहीं, किंग से मार दिया उन्होंने. अब क्या करेंगे? चैट, वीडी इज अ पॉन अप. ही इज अ क्लियर पॉन अप नाउ. काउंट करो. अनलेस मेरे चश्मे का नंबर बढ़ रहा है. वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 पॉन्स एंड ब्लैक के पास 1 2 3 4 5 6. सो व्हाइट इज अ क्लियर पॉन अप. डबल पॉन है बट पॉन अप है.
एंड वो पॉन नाइट को भी सपोर्ट कर रहा है, बिशप को भी ब्लॉक कर रहा है. The question is, black can at any point enter opposite color bishop endgame. लेकिन this might not be a draw because rooks are on the board. जब तक रुक बोर्ड पे है कुछ भी पॉसिबल है. So यहाँ पे नोडिरबेक को सोचना पड़ेगा कि क्या मैं ये मार दूं और होप करूं कि भाई शायद ड्रॉ हो जाए आज से 7 साल बाद, या फिर वो कहेंगे नहीं भाई, आई हैव द कंपनसेशन, I will not go for a draw. I also want winning chances. I want the best move on the board. And then he will try to play bishop g4, check, castle, and so on. Vidi को solid chess खेलना है. He's a pawn up. बस maintain करना है advantage बस. And he should be slightly better at least. प्राग क्या कर रहे हैं, उनकी गेम भी देखते हैं भाई जल्दी से. जब तक नहीं सोचते जल्दी गेम देखते हैं, उनकी जल्दी से जाते हैं उनके पास. We go to Prague first. We saw it till knight to b6, bishop e2, and तब से a5 खेला है. First preference of the engine. Prague playing the best moves yet again. 96.6 accuracy है white की और 97.2 है उनकी. So एक move Prague in the driver's seat और at least roughly equal. You can see Prague very relaxed. Their camera relaxed नहीं है, but Prague तो relaxed है. और मकसूदलो जी थोड़े स्ट्रेस में लग रहे हैं अगर देखा जाए ध्यान से तो. और फिर से कोरोव भाई चलते हुए, वो सिर्फ चलते रहते हैं भाई. So going to the game of Gukesh now quickly, एक बार क्या चल रहा है वहां पे. And his opponent has played knight to a3 here. The knight will go to c2, will put pressure on the d4 pawn, will also allow white to play a3 and b4 long term after knight c2 and rook b1. So long term planning. Position does feel equal, but यहाँ पे e5 आएगा on the board. Opponent अभी सीट पे बैठे नहीं है शायद. गुकेश thinking क्या करे. वहां मुझे लोगो भी दिख रहा है वका का. चाय, ये भी चाय पी रहे हैं. ओ माय गॉड, आज तो मैं धर्म संकट में हूं. चाय बोलो कि जूस. He thinks he is the most prepped in this tour. Really? That is very, very interesting. If Vidit says he's the most prepped, let's go to his game and see if he can prove that. So yesterday Vidit ने पूरा prep में फंसाया था डेविड नवारा को, but नवारा को पता था कि क्या करना है. So looking at that, is it a bit of, confidence? Is it overconfidence or is it just actually true? We don't know. समय ही बताएगा. हर समय ही बताएगा हमें कि क्या है उसका आंसर. What do you think who will become next world champion, Abasov or Ding Keren? Keren नहीं है भाई, लिटर है भाई. और Abasov का तो कोई चांस मुझे लग नहीं रहा है. I do think Abasov will finish like second last or last in the tournament. That's my guess. I could be wrong because बाकी सब प्लेयर 2700 plus हैं. I think, in fact, I was checking कि I think they are like world number 2, 3, 5, 2, 3, 6, 7. And like 12, 13, 14, and then there is like world number 93. So he's like definitely he's a dark horse for sure, but he also has the least number of chances. And हर कोई उसको हराने की कोशिश करेगा. I am not a big fan of tea either यार. It's okay, but yeah, जब गला कभी खराब होता है तो गरम गरम green tea अच्छी लगती है, but otherwise probably not. Knight to b5 would be a good move. Knight to b5 will not be such a great move actually. Imagine करो black castle करता है and you play knight to b5. What is the idea? First of all, rook e8 check, so king को हिलना है. Let's say you go to, I don't know, f1 क्योंकि pawn भी hanging है. Just bishop to b6 and I've saved both these pawns. Next I will play a6 or c6, kick the knight back and आपने दो move फालतू की waste कर दी. So I would say knight b5, it's too early for this. पहले बाकी पीस डेवलप करते हैं, किंग को सेव करते हैं, देन वी कैन थिंक अबाउट कि नाइट को कहां डालना है. फिलहाल नाइट इज नॉट द प्रायोरिटी. वो इकलौता पीस है डेवलप, सो लेट्स नॉट मूव इट अगेन. मैंने कोई ऐसे अब शराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है भाई. आई माइट बी नॉटी बट दैट्स द ओनली वर्ड आई यूज जो एन से स्टार्ट होता है. पिछली बार एक पॉन ने ही विन ली 3 नोडिर्बेक अगेंस्ट इन टाटा स्टील. हाँ, actually I think so, unless I'm messing up games. I do think he will have some chances. There is no doubt. And ऊपर से पता क्या है, the fact that नोडिर्बेक अभी सोच रहा है, अभी he is not blitzing out the moves, tells me कि maybe this is not his deep preparation. And if that's the case, because याद रखो भाई, when somebody plays knight f6,
Knight c3 is not the main preferred choice. It's not the move you expect in 9 out of 10 games. So 10 में से 9 गेम में यहाँ पे white मार देता है, and that's why I think this might not be his preparation, and Vidit might just actually win out of the opening. निजन भाई कुछ कह रहे थे आप निजन भाई? अच्छा ठीक है, चलो वो म्यूट कर देना वो. क्रैक some playing some random match, उसका बारे में मुझे आइडिया नहीं है भाई. पढ़ाई कर लो भाई. I feel like a parent right now. नहीं भाई, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी भाई, जल्दी से कमरे में जाओ, चेस खेलो. ऐसे नहीं चलेगा भाई, जाओ चलो जल्दी चेस खेलो कमरे जाके. क्या कर रहे हो? इतना इतना बोला यार, तुम्हें देखा शर्मा जी के लड़के भाई जीएम बन गए यार, तुम चेस नहीं खेल रहे हो, चेस खेलो यार तुम. By the way, 1 hour and 1 minute for Nodirbek now. विदित भाई फिर से लेफ्ट देखते हुए फुल फोकस के साथ. वहां पे कौन है क्या है पता नहीं. आई थिंक he's trying to just visualize the board in his mind. Nodirbek does feels under some pressure. फिर से उठते हैं वीडी भाई. Ninja bhai, what do you think? Do you think like this is still his prep, or do you think like he's out of prep and he's like a little worried now कि pawn down हूं मैं? What do you think, Ninja bhai? अभी बहुत बाकी है भाई, एंड गेम बाकी है, तो अभी मुझे तो लगता है स्लाइटली बेटर है भाई. ठीक है. So can you show the standings once? We can. Hopefully we can show that once. I will get it to you soon. Pick why please move towel from what? ये क्या स्टेटमेंट है भाई? What does this even mean? ये क्या था? Mishra is improving fast as well. I know भाई, I know. मिश्रा जी बहुत improve कर रहे हैं भाई. छोटे बच्चे ये क्या है भाई? नहीं, छोटा बच्चा नहीं आएगा. I don't think so अभी आएगा. He must be playing his game. What do you think? Can anyone surpass Magnus Carlsen? कभी ना कभी कोई ना कोई सरपास करेगा. I am pretty sure about that. वो कौन होगा, वो कब करेगा, ये नहीं पता. I don't think Carlsen will be the greatest ever. मतलब कि फ्यूचर में कोई ऐसा नहीं आएगा who will not cross his break his records. कोई ना कोई तो आएगा. Could be some Indian, could be Prague, could be anybody abroad, we don't know. But it's hard to believe because हमेशा ना फिशर उस जमाने में 1972 में जब फिशर कैंडिडेट जीता था, लाइक मतलब वो 6-0 पीपल मस्ट हैव थॉट कि भाई ही इज द गोट. फिर कार्पोव आया, लोगों ने कहा ही इज द गोट. फिर कस्पारोव आया, लोगों ने कहा ही इज द गोट. अब कार्लसन आया, लोगों ने कहा ही इज द गोट. सो विद एज निज भाई सेड, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है. कोई अभी बच्चा होगा 10 साल का हु इज लाइक प्लेइंग चेस ऑन हिज एप्पल विजन प्रो. मतलब क्लास में बैठ के भी वो हवा में मूव चल रहा है, E4, E5, Knight F3, Knight C6, and he suddenly becomes like a champion. Who knows, man? My rating is 2200 FIDE भाई. Prague game भी देखते हैं यार, of course Prague game भी देखेंगे. This game is the star game for today यार. By the way, these are standings chat. एक बार फिर से दिखा दो भाई. Parham Maghsoodloo, Nodirbek and Prague with 1 point each. We have Gukesh on 0.5, Rapport 0.5, Vidit 0.5, Navara 0.5. And the 3 people who lost yesterday were Mateusz Bartel, Thai Dai Van Nguyen, and Vincent Keymer. तीनों non-Indians थे, Indian कोई हारा नहीं. So that's a great day for India yesterday. आज भी बस continue होना चाहिए. Sahil Tikku's son will break the record. I will not have any son by where I will not have children. So because they'll be so extra advanced. By the way, before we go to Prague's game, by the way, Bishop G4 check played. This is the best move. It puts the king under check, so doesn't allow white to develop a piece immediately. And most likely we'll see F3 on the board to attack this bishop. The bishop will drop back, and then we'll try to bring the rook into the game. Isse bishop ka diagonal bhi open ho gaya. So there's no more, this bishop has become stronger. And also then, yeah, it's kind of a little bit of a weakening move, let's say. अरे जलाओ मत, जला कहाँ रहे भाई? विद भाई थोड़ा स्ट्रेस में लगते हुए, आई डोंट नो कि स्ट्रेस का क्या रीजन है. सो लेट्स गो टू द अदर गेम्स तक वीडी भाई सोच रहे हैं. लेट्स गो टू द गेम ऑफ प्रग. वहां पे कुछ हुआ है क्या? सो एक ही मूव हुई है चैट. आफ्टर A5, आफ्टर अ डीप थिंक, Maghsoodloo plays the pawn to A3. Now I think यहाँ पे A4 could be a potential move.
And looking at the fact कि white ने a3 खेला, I'm going to assume he's going to go queen a2. He could go queen d1, which is kind of my preferred choice, honestly, because keeps an eye on this pawn and goes towards the center, let's say. And then you kind of just castle, yeah, bishop e7 castles, and then you white will play knight f3. Let's say bishop e7, knight f3, castles, and then the game goes on. And ye pawn weakness hai, strength hai, we don't know yet. We'll get to know with time. So Prague's game is very complicated, I think. Abhi opening phase mein hi hai. So we don't have anything decided yet. बहुत कॉम्प्लेक्स गेम होने वाली है लंदन सिस्टम के साथ. So let's go to the game of Gukesh D now. Nothing has been played by Gukesh after knight to a3. So still in a deep thought. So Gukesh Prag की गेम्स काफी लंबी चल सकती है आज यार. यो अनिश नायक जी, क्या हाल चाल? निशा भाई, can we make Anish Nayak mod if possible? अगर असली Anish Nayak है तो. When you give check and realize it's checkmate, you be like और Chesscom में वो साउंड इफेक्ट आता है भाई तुरम वाला. रियल लाइफ में आता भी नहीं है भाई. रियल लाइफ में रियलाइजेशन होती है, अबे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, एक बार बात हो गया यार, ऐसे लगता है. तो रियल लाइफ में कोई साउंड इफेक्ट नहीं है यार. By the Gukesh takes on e3. He doesn't want the huge center. He wants control over the d4 square. I think next he might play bishop f6 or might play e5, one of these moves, to control this square completely. पूरा control establish कर लेंगे. वो कह रहे हैं white भाई, आपने खेला है c4 d3, आपने अपना backward pawn दिया है. Backward pawn क्या है? ये जाति सिस्टम नहीं है, just to point out. ये है जो pawn एक pawn के पीछे रह गया है. It cannot be supported by another pawn, and this is a weakness. It's easy to attack. हम डबल ट्रिपल क्वाड्रपल बहुत जल्दी कर सकते हैं d5 पे लॉन्ग टर्म, एंड वी कैन पुट प्रेशर ऑन दिस वीक पॉन, एंड दिस कैन नॉट बी डिफेंडेड बाय अदर पॉन. परम मकसूदू चलते हुए वहां से, ऑफ कोर्स एज यूजुअल बिशप से मारा है, एंड नाउ आई थिंक वी माइट जस्ट सी e5. bishop 6 not possible because of bishop c5. So maybe we have okay, not immediately actually, there is bishop b2 as well, but regardless I think we might see e5 here to control this center पूरी तरीके से. Let's see what he plays. Going back to the VD game, Gukesh by the way looks extremely focused there. Nguyen भाई भी काफी stress तो नहीं लग रहे, cool लग रहे हैं, but I think stress बहुत जल्दी होगा उनको. Going back to the VD game, has something happened? Not yet. And you think it's made, but no sound. yeah. ऐसा भी हुआ है भाई. एक बार लिटरली पता है, मैं बचपन में चेस खेला था, कोई स्कूल टूर्नामेंट था, मेरे को लगा मेट हो गई. मैंने सब में अनरेटेड था, रेटिंग भी नहीं थी. मैंने एक मूव खेली, मैंने कहा ऐसा आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने मूव खेली, इट वाज मेट, बट एंड आई थॉट आई डिडंट रियलाइज इट वाज मेट, समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ हुआ था कि आई डिडंट रियलाइज इट वाज मेट, एंड माय ओपोनेंट पिक्ड अप हिज किंग, मूव्ड इट अंडर चेक, एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि भाई अच्छा ऐसा अलाउड होगा मतलब. This was like my second or third tournament in my life, तो कुछ पता नहीं था मुझे उस टाइम पे. So life में बहुत चीजें होती है भाई. Keymer 30 minutes behind भाई. Keymer भाई struggling for sure भाई. I'm sure जर्मनी में बहुत ठंड है, अभी से struggle कर रहे हैं वो. Nodirbek will castle long, बिल्कुल. Long looks likely. Rook immediately d8 आएगा, then next rook to e8. हमें यहाँ पे f3 खेलना है. Chat फिलहाल के लिए VD is a pawn up. I really want him to win this. Hello Janvi, hello Raghav, कैसे हो? Chat stream like करो. 369 likes पे पहला challenge करेंगे. You know what? जल्दी से like करो भाई, जल्दी से. Let's get to 369 likes and let's do the first samosa challenge भाई. We are all set for VD defeating Nodirbek today. Nodirbek is world number 10. If VD defeats him, he becomes India number 1. Maybe. Who knows? Let's see. बिशप बाय द वे मस्त एंगल से काटते हुए दोनों को भाई सीजर की तरह खचाक. अच्छा ये नहीं बोला कि वीडी गिविंग स्पीच आफ्टर विनिंग ऑन सागर स्ट्रीम. आगे ही चलता है वहां पे सब भाई. So going to the game of Prague, कुछ भी नहीं. Oh, c6 played by Prague. He pushes the pawn to c6, controls d5, but yeah, I think the plan doesn't change for now. This also avoids any check on b5, queen b5 check. So now bishop e7 castles. So जब तक वो castle नहीं करता, there's not much to do. पहले castle करना बहुत जरूरी. He might include a4 and then castle. So going to Gukesh, is there something happening there? He has played the pawn to e5, so he controls d4 as expected. And chat यहाँ moves काफी simple है.
We have to remove pieces जो d4 control कर रहे हैं. कल को हम pin कर सकते हैं. We can bring this knight as well to d7, control this, support this. In fact, chat, long term, the plan could be knight d7, rook e8, knight f8, and knight to e6. And these knights will control d4, just dominate the board. तो मस्त पोजीशन बन सकती है गुकेश की. लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ी सही है, शॉर्ट टर्म भी सही लग रही है. So going to the game back of Vidit Gujrathi, कुछ चल रहा है क्या? One difficult Vishali game, by the way. She has made one mistake. She has already made a blunder in this position. जहां bishop e6 खेला था, she played rook to b6. That was a huge blunder. Queen c5, and she's apparently just losing the game. So Vishali losing 2 in a row, very, very, convincingly, to be honest. So that's not a good start for her in this tournament. Going back to the game of Vidit, let's see what he plays. Both players below the 1 hour mark now. Prague next match is going on right now, bhai. It's going on right now. He became world champion on Saga stream. Nice, nice. कल को पिन करें, कल तक चलेगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं है. How to remember chess board in mind? Start with 4-5 squares. Like जितना imagine कर सकते हो imagine करो, and then gradually add squares. पहले मान लो 4 square कर लो, फिर 8 कर लो, फिर 16 कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 64 कर लो, ऐसे करो. Vidit, आज जीतने का चांस क्या है? I would give VD, maybe I'm optimistic, I would give him 50% chances of winning. Let's say 40% chances of winning. 40%, that's too harsh actually. Let's say 50% chance of winning, 40% of drawing, and 10% of losing. Maybe I'm over optimistic, but जितना उसने कल push किया था, याद है शायद कितना push किया था कल उसने? Like that drawn pushes pushing and pushing and pushing and pushing. So I do think कि यहाँ पे ही push करेगा, and that might be good for us. In fact, accuracy देखी जाए तो VD की accuracy so far 100% है after 12 moves, and Nodirbek had 98.7. So I do think there are good chances. Sad life. अरे life क्यों sad है भाई? Life तो मस्त है. Hello सिंद्रम भाई, कैसे हैं आप? Imagine तो होता है, but name याद नहीं होता और उसकी position. भाई तो नेम का क्या करना है यार? तुम बोर्ड याद रखो ना यार. बोर्ड याद होगा तो बाकी सब कुछ याद हो जाएगा. अपना टेक लव निकलता अभी लेके आता हूँ. लव यार थोड़ा महंगा हो गया आजकल मार्केट में प्यार, तो लेके आता हूँ भाई. वीडी भाई फुल फोकस से यार, पूरे बाल वाल नोचे हुए हैं अभी देखा जाए तो. कैन वी हैव फुल स्क्रीन फॉर अ मोमेंट रंजन भाई? जब तक के लिए ही इज थिंकिंग. आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज कि व्हाई इज ही सो टेंस्ड. रंजन भाई आर यू देयर? हाँ, थैंक यू. व्हाई विशाली को अर्जुन अवार्ड, व्हाई कृष्णा? I think it depends because Vaishali is a woman player, so उनका different चलता है, and I'm sure कि there are separate awards for both. So chess को मिलना था, and Vaishali is fully deserving. She's the third ever woman grandmaster. Like she's the third ever grandmaster who's a woman. So it's a great achievement. She deserved it. And Vidit, Arjun, Gukesh will all get it one by one. बहुत साल है इनका भी. Chat, don't forget these guys are mostly teenagers in some cases. Arjun is 18 years old, I think. Gukesh is 18 years old. Arjun is like 19 maybe. So don't worry. They have like potentially next 20 years to get all these awards. भाई 20 साल तक ये लोग top level chess तो खेल ही सकते हैं. So I do think they are all okay. आपकी एज भाई यार मत पूछो यार. आज सारे बच्चे भी स्मार्ट लग रहे हैं भाई. स्कूल प्रिपेयर क्या है? With by fully focused thinking. Let's have the board, Nanjan भाई. Let's have the board. रेटिंग कितना आपका भाई? मेरा फिट रेटिंग 2200 है भाई. भाई आपका डिले है क्या? नहीं भाई कुछ डिले नहीं है भाई, सब कुछ एक्टिव है भाई, सब कुछ एक्टिव है. ब्रो इज डिलेड हियर. क्या बात कर रहे हो भाई? क्या डिलेड है भाई? क्या डिलेड है? मिस्टर कोरोना वायरस कहां से आ गए भाई चैट में? भाई ये कहां से आ गए भाई? आपको तो हमने बाय बाय कह दिया था यार, दोबारा कहां से आ गए? 45 पक्का? अरे बाप रे. नहीं भाई लेट्स हैव द बोर्ड. बाय द वे पीछे वाला बंदा थोड़ा घृष्टुक लगा मुझे एक सेकंड के लिए.
मेरा 2800. अरे नाइस रंजन भाई, आर यू देयर भाई? लगता है रंजन भाई चाय फैन है, हाँ हमें फोर्स कर रहे हैं देख। भाई वो बोर्ड लगा दो, बोर्ड के साथ लगा दो भाई, एंड वो एको बंद कर देना, थैंक यू। हु इज विनिंग भाई? आई एम विनिंग, आई मीन वीडी इज विनिंग, नॉट विनिंग एग्जैक्टली बट आई थिंक ही इज अपॉन अप। तीनों गेम चैट, दिस इज द मोमेंट जहां पे क्रिटिकल चॉइसेस ले रहे हैं लोग। सो इट्स मूविंग वेरी वेरी it's happening very cautiously, by the way. Best move must be f3 here, I think. That's a very logical move. I don't like knight f3, pinning my knight khud se. Not a big fan. And king d1 possible nahi hai. King e1 pe check aayega, and king f1 blocks the rook. So I don't want to block my rook here, chat. So I think f3 will be played, then rook e1, then king f1, and white is absolutely fine. I don't see any issues. मिस्टर प्रसन्ना तो भाई मेरी रोस्टी करने आ गए भाई, कपड़े उतार दिए भाई उन्होंने। वेरी समय रहना भाई, समय रहना शो कर रहे हैं भाई। नेपो ऑल्सो रोमिंग, रोमिंग की स्ट्रीमिंग, अच्छा रोमिंग भाई। नेपो नहीं खेल रहा है भाई, वो इट मस्ट बी वो कोरोबोव जी होंगे शायद, आई एम अज्यूमिंग। बट ओ बाप रे रंजन भाई, ये आप किस कौन आ रहा है चैट में? आज लोग भाई बेइज्जती कर रहे आ रहे भाई। भाई आज क्या हो गया भाई चैट को? गुकी एंड प्रग गेम, गुकी गेम हम देखेंगे भाई, आई थिंक बहुत स्लो चल रही है अभी सब गेम्स। कौन आ गया भाई लगता है हमारे कुछ बड़े फैंस आए हैं। लगता है कोई 2700 लोग चैट में बैठे हैं आज तभी। बाय द वे गुकी गेम में कुछ भी नहीं हुआ है। सो थाई दाई वैन नगुएन को काफी टाइम से सोच रहे हैं, and this position is no orthodox position because there are no games on Chesscom from this, so it will not be easy. But गुकेश के लिए तो बहुत बढ़िया है भाई, because I mean he's up on the clock. अभी बस पीस क्वीन साइड के डेवलप हो जाए एक बार। Let's say I play bishop g4 or bishop f5, one of these moves. Either I pin the knight or I attack the pawn. Both ways work. And then this knight goes up, goes to f6 or whatever, or e6 as we had a look at. Then queen d7, rook d8, rook e8. बहुत ही हार्मोनियस पोजीशन लग रही है भाई मुझे, बहुत ही हार्मोनियस। So I really like Gukesh's position. White is also fine, yeah. मतलब he can even go knight b1, knight c3, knight d5. So he is not under too much stress. But टाइम को, समय को देखते हुए मुझे लग रहा है कि maybe black is better. What is the biggest mistake that you've played in chess and lost many games because of that? I think the biggest mistake was, not working out my physical fitness. That definitely harms you a lot in the fifth hour. So very, very important to be extremely fit. As you see, all these players are extremely fit. Gukesh, Prag, Vidit. And these are the three who reach the top. So that's very important. दो लोग कमेंटेड करने चाहिए। साहू जी आपको मैं लिंक भेजता हूं, प्लीज आ जाइए भाई, प्लीज जल्दी से। वी वुड लव टू हियर योर एक्सपर्ट कमेंट्री। लेट्स प्ले 2 वर्सेस 2 चेस बिटवीन मैग्नस कार्लसन एंड प्रग वर्सेस हिकारू मिशन। भाई आइडिया तो बढ़िया है भाई, फंडिंग भी कर दो आप तो बस मजा आ जाए। प्रीतम भाई करेंगे भाई, कभी तो करेंगे, लेकिन आइडिया बढ़िया लग रहा है सोचने में। Why is Nihal not improving like Prag? यार Nihal is playing less tournaments by the way. Queen b3 played. So ये move does prevent the bishop from developing. That is the advantage. But problem ये है कि it's kind of a, well, Queen, she's like the hero of the story. Well, she's like the star behind the star, like best actor role जिसको मिलता है ना, like she's that sort of actor in this chess game का movie. She is not supposed to attack a pawn, like that cannot be her role. मतलब वो 12th man की तरह हो गया है मतलब क्रिकेट पिच पे। So yeah, I think I will not move the bishop. I will play other moves. I'll play f6, I will play knight d7, I'll play knight a6, whatever. And your queen is kind of just looking a bit weird on b3. So I think this is not the best move. Gukesh should take advantage of this long term. So yeah, oh, Gukesh ने तो हाथ ही मार दिया स्क्रीन पे भाई, कैमरा ही गिर था अभी। So Gukesh should be absolutely fine. So going to the game of Prague now, if something has happened, let's have a look. So nope, nothing has happened. White still thinking. VD played, then pawn, VD played, then pawn, VD played. What? ये क्या है? रुको VD गेम देखते हैं भाई, यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं है। VD गेम देखते हैं भाई। So VD गेम में, oh, he played f3, bishop d7, and now he plays d3. So very logical move, chat. First of all, bishop खुल रहा है, I can put the bishop on f4, and also now I think the king on d1 is also a safe square. For example, जैसे
I don't see any checks vex, nothing. Both यहाँ से भी कोई checks नहीं, यहाँ से भी कोई checks नहीं. Very solid move, very solid move. And now black castles queenside. So if you look at the board right now, both players looking extremely focused, and yeah, this is going to be a cracker of a match. Nodirbek बदला लेने की फिराक में है पिछली लॉस का, पिछली हार का उनको पूरा ऐसे क्रोध होगा अभी, और उनका रुक आने वाला है E8 पे चेक देने के लिए. सो आई थिंक यहाँ पे बिशप F4 should be the move, and let's say black gives a check, rook H8 check, you put the king on D2 with 3 pawns here. I think he's absolutely safe. Next we'll play rook He1, and to be honest Ranjit bhai, I have a question for you. मुझे कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही व्हाइट की पोजीशन में. मे बी दीज पॉन्स आर अ बिट वीक, बट आई डू फील कि ब्लैक को अगर खेलना है तो ही विल हैव टू गो फॉर द ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम. और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्लियर कट ब्लैक के लिए. डू यू थिंक दिस एनी अदर प्लान टू फाइट फॉर कंपनसेशन अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग द ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम? रंजन भाई, ये एक ऐसा आइडिया है कि A2 पॉन को थोड़ा एक्सचेंज सब करके A2 पॉन को कैप्चर करे, ऐसा एक टैक्टिक हो सकता है. बट इन द लॉन्ग रन व्हाइट इज स्टिल प्लेइंग फॉर 2 रिजल्ट्स. तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक के पास ऐसा कोई इवैल्यूएशन चेंज करने वाला तरीका तो नहीं है. तो ये गेम शायद 1:30 बजे खत्म होगा भाई. 1:30 बजे? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जल्दी खत्म होगा. दैट्स माय गेस. आई विल से कि प्रॉब्ली लाइक हो जाएगा जल्दी खत्म. बट फिलहाल के लिए that's as you said, A2 pawn एक definitely बहुत बड़ी weakness है. कल को once knight has moved, you can imagine these moves being very strong. Rook coming to A3, keeping an eye on both these pawns, especially खाली rook endgames में ना, this is very very irritating as white, क्योंकि तुम्हें पूरा एक रुक यहाँ रखना पड़ता है पॉन को बचाने के लिए, या किंग को लाना पड़ता है, बट देन फिर ये रुक दूसरा रुक यहाँ से घुस जाएगा. सो इट्स नॉट इजी, बट clearly pawn is a pawn, and फिलहाल के लिए कोई clear compensation तो है नहीं. So VD should play bishop F4 here, extremely logical move. Put the king on D2 and black को पूछो भाई अब क्या? We have developed all the pieces. My king is safe. ठीक है, bishop पे तुम बोल सकते हो, but I don't see any like full compensation for you. So I am better. एको का देख लेना भाई. जर्मनी का क्या हुआ? जर्मनी बढ़िया चल रहा है भाई. जर्मनी तो अच्छा देश है, रिसेशन में चला गया अभी थोड़ा बहुत. व्हाट अबाउट बिशप C7 सैक? व्हाट डू यू मीन लाइक दिस? व्हाई वुड आई सैक माय बिशप भाई? नहीं भाई, फ्री का बिशप नहीं देना यार. आई वुड से नो. आई वुड से कि फ्री के पीस नहीं देते. दैट इज नॉट द बेस्ट मूव फॉर श्योर. नोदेव भाई स्टेयर कर रहे हैं भाई. अच्छा नहीं, he's probably just looking at the wall or something. फिर जूस पीते हुए विदित भाई, यार जूस तो खत्म होने वाला है यार. Do you think he has another bottle there? Or will it finish for him? What do you think, Ranjan भाई? Does he have a spare bottle? हाँ भाई, रॉयल टूर्नामेंट है तो बहुत बॉटल्स भी मिलेंगे, जूस भी मिलेगा, कॉफी मिलेगा, टी मिलेगा. रंजन भाई ने क्या मस्त बोला. कॉफी मिलेगा, टी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा. मस्त था भाई. Never seen Ranjit bhai and Tikku bhai in the same frame. They both are same person. Bhai, you never know. Life में जो twist होते हैं ना, बस it could be. अमिताभ पिक्चर का कॉपी है भाई. Nice. What about King B3? भाई ये कौन सा किंग है जो उड़ के जा रहा है? हुई! ऐसे नहीं चलता किंग भाई. King can only move one square at a time in one direction भाई. This is the range of the king's movement. And I think because यहाँ पे पिन है, यहाँ पे और यहाँ पे रुक ब्लॉक हो रहा है, D1 पे ये वाला रुक्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो D2 is the safest square. So let's move the bishop, and जब चेक आएगी we'll put the king on D2. So फिलहाल के लिए VD, I would predict a VD win in this game. So I'm going to be bold and go for the bold prediction that VD wins. So let's see how it works out. And knight B3 would be a decent move usually to attack the bishop, but because we are not developed yet, that's probably not the best move. So first we develop the pieces, bring the rooks, safeon the king, then we see कि जो piece already developed है उसका क्या करने वाले हैं. It could be possible, but I think will not be the best move 100%. So going to the other two games, Gukesh has found the best move, chat. Knight to A6.
telling black ki bhai the queen is weirdly placed on b3. For example, let's say white passes the move with h3. Now comes knight a to b4. The d3 pawn is weak. Ye pawn ko kaise bachaye is the question. Let's say white plays rook a d1, says bhai pawn bach raha hai. Again attack. Now how do you save it? So you can clearly see that this is not looking that great for white. He's already defending on move number 11. So I do think this is like, going wrong for white here. Gukesh seems to be in the driver's seat here. आपके पास तो 10 करोड़ है क्या बैंक? मेरे पास करोड़ क्या है यार, मेरे पास तो 1000 भी नहीं है यार. समोसा दे दे के मैं कंगाल हो गया हूं भाई. This is not bold prediction in Indian channel. भाई तो अभी मैं जाता हूँ भाई, बाकी बाहर के चैनल पे चेसकॉम स्पेनिश में जाता हूँ, बोल के आता हूँ कि भाई इंडियन जीतेंगे. अभी जाता हूँ. Have you seen goat in real life? Of course भाई, goat तो हर जगह होते हैं. By the way, VD has played the pawn to bishop to e3 instead of f4, so he goes for this move. Second best move in the position, also extremely logical. Even though black can pin this bishop, I will not let it stay pinned. I will immediately play king to d2, and next I will play rook h1. So absolutely normal here, and yeah, VD looks slightly better. Going back to the Gukesh game for a second, क्या खेला है white ने? अभी कुछ नहीं खेला है. So let's go to the Prague game now and देखते हैं क्या हुआ है. So Prague has the black pieces also. We saw it till c6 here, bishop g5, moving the same piece twice, and now comes bishop e7, unpinning the knight. So only 2 moves. निरंजन भाई यहाँ पे they are using a lot of time. 47 minutes बचे हैं. That means Parham Maghsoodloo has used roughly half his time for the first 10 moves, and बाकी 30 moves के लिए he has 45 minutes. So what do you think, Niranjan bhai? Is it going to be a time trouble situation in this game, or will they somehow manage it? What do you think? मैनेज कर लेंगे भाई, परम मकसूदलू है, मैनेज कर लेंगे भाई. बोलो ना ये करेंगे. हाँ, he will fall into time pressure. अरे गया बंदा, खत्म, प्राग जीतेगा भाई. कॉन्फिडेंट रहो भाई, कॉन्फिडेंट रहो, डोंट वरी. मुझे लगता है प्रज्ञानंदा पोजीशन से जीतेगा भाई, टाइम से क्यों. ये तो है भाई, बट हाँ ये तो है, ये बात है भाई. आप ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो. नाइस, लाइक इट. डू यू लव सलमान खान? नहीं भाई. हैव यू टॉक टू मैग्नस टिक्कू भाई? I don't know anybody named Magnus Tikku. कोई मिलेगा तो I'll definitely try talking to them and ask them कि भाई how did they get the first name Magnus and surname Tikku. But if I find them, I'll surely do that. So going to the game of Vidit Gujrathi again, जहां पे उन्होंने after bishop e3 नोदिरबेक जी ने रुक h to e8 खेल दिया है. वेरी वेरी लॉजिकल मूव. बहुत स्मूथली उन्होंने रुक लाया, स्लाइड करते हुए, मून वॉक करते हुए e8 पे आया है. And I'm pretty sure VD will play one of 2 moves, either rook h1 first, or he will play king d2. I think king d2 being the more likely one. Side step कर लो. कल को मार लो rook h1 पे, if bishop d4 तो I can't take with the bishop, pawn से मारना है. It gives me more options. cd4 is also of course better, but gives me more options as white. So he will probably play the move king to d2, and he has no shocker there. The king comes to d2, and yeah, VD is pawn up still. Man, अबे ये क्या भाई? Nodirbek, come with it, leave definitely mind games with the such confidence. I agree, Kishan bhai. I think both players are definitely playing some mind games. Starting में हमने देखा था कैसे दोनों players right left देख रहे थे, बोर्ड पे देख रहे थे. And Nodirbek तो ऐसा बंदा है जो literally मतलब बहुत घूरता है भाई, जो कार्लसन को भी घूरता है. मतलब बाकी को तो तुम छोड़ ही दो. So he's not somebody who's scared or who's shy of even having those tactics. He's very obvious in his intimidating tactics. So he's very very strong as well. So पूरा perfect combination है force की तरह, जो हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा immediately. एक दीवार बन के खड़ा होना पड़ेगा भाई हमें, अंबुजा सीमेंट की तरह. का स्पॉन्सर होते हुए अभी अच्छा प्लग हो जाता है यहाँ पे. तुम पढ़ते पढ़ते सलमान खान बोल दिया, तो और कौन से खान थे भाई? टी समोसा. कॉफी समोसा हो सकता है भाई, टी समोसा नहीं हो सकता यार. VD should trash talk Nodirbek. Yeah, over the board now you're not allowed to talk. That's not allowed.
So if it was allowed, I would love to see it though. It would be epic. अबे क्या नोदिर भाई, क्या खेलेगा रे तू भाई? प्यादा दे दिया भाई, 10-15 मूवी हुए, प्यादा दे दिया भाई, ऐसे कैसे चलेगा यार? It will be awesome. कैंडिडेट स्ट्रीम करेंगे बिल्कुल भाई, रात के 1 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक स्ट्रीम करेंगे हम। पूरा क्रेजी स्ट्रीम होगी विद लाइक कितने लोग आएंगे भाई? चैट तुम में से कितने लोग आएंगे अप्रैल में रात को 1 बजे देखने के लिए स्ट्रीम? भाई सच में बताना, हाँ या ना, यस और नो भाई। रात को 1 बजे, लेट्स सी कौन कौन है, कौन कौन है हमारे हीरोज जो रात को आएंगे देखने भाई। ओ रुकी 7, ही वांट्स टू डबल अप रुक, सेइंग कि भाई रुक डबल करना है। सो विल वीडी नाउ प्ले रुक के C1 and basically say कि let's trade rooks, or will he try to move the pieces and say कि भाई अभी no trades as of now? Do you believe in ghost? I went to the most haunted place in Asia. Apparently वो भांगड़ फोर्ट है, I don't know if you've been there. घंटा का मुझे घोस्ट वहां मिला, सिर्फ वहां पे बैट्स बहुत सारे थे, एंड एक स्केरी सा हमारा एक गाइड था जो खुद घोस्ट से ज्यादा स्केरी था। उसके अलावा तो भाई मुझे वहां कुछ मिला नहीं। सो आई डू बिलीव इन गोस्ट, आई थिंक हो सकते हैं, बट इतना भी खतरनाक डर नहीं है भाई। मी नॉट कमिंग, नॉट सरप्राइज बाय यो ब्रो, नो नॉट मी। नीट एग्जाम कॉलेज होता है, +1 आएंगे? नो, यस प्रेजेंट, नो। व्यू देख लूंगा, बढ़िया, ठीक है, गॉट इट। आई थिंक रफली 20% लोग मुझे लग रहा है चैट में जो आएंगे, दैट्स गुड टू नो। चलो कोई तो आएगा। हाउ इज माय बॉय प्लेइंग टुडे? मोदी जी चैट में तो प्रग की गेम लगा लेता हूँ, या क्या चल रहा है प्रग की गेम देख लेते हैं एक बार। प्रग की गेम में अभी कुछ हुआ नहीं है यार, काफी टाइम से, पिछले पता नहीं 25 मिनट से परहम मकसूदी सोच रहे हैं। सो वी हैव सीन नो मूव्स देयर। प्रग भाई तो चिल ही कर रहे हैं भाई, वो तो बोर्ड पे देख ही नहीं रहे। मकसूद तो भाई फालतू में पसीने खा रहे हैं, वो खुद ही के पसीने खा रहे हैं फॉर सम रीजन, मतलब लाइक फालतू का स्ट्रेस ले रहे हैं भाई, ओपनिंग में ही इतना प्रेशर। आई थिंक चैट प्रग विल विन टुडे, मुझे लग रहा है, पूरी फीलिंग आ रही है कि मकसूद इज टेकिंग टू मच प्रेशर हियर फॉर सम रीजन। प्रग जीतने वाला है भाई, आई विल कम कैन, थैंक यू भाई, ऑसम। यप, आई थिंक प्रग टाइम के हिसाब से काफी सही पोजीशन में। सो लेट्स गो बैक टू द बोर्ड एंड हैव विदित गेम। एक बार गुकेश गेम में देखते कुछ हुआ क्या। Nope, nothing has happened. Yup, nothing. Rook D1 has only happened. That's the only move. So let's go. I think फिलहाल के लिए Gukesh slightly better on the position and the clock. Prag slightly better on the clock, and VD slightly better on the position but slightly worse on the clock. So तीनों बोर्ड पे अभी काफी बढ़िया चल रहा है सबका। Only Vaishali is the one challengers में जो I think हार रही है. But yeah, I mean she's also not the strongest player there, so it's not easy for her as well. बढ़िया विष्णु भाई, ये ना बात। What is the maximum number of moves played in chess game that is in a win? That will be a stat जो रंजन भाई हमें बताएंगे, but I do think कि कम से कम 150-200 मूव तो रहा होगा यार। प्रग्स, अच्छा वो पुराना स्टार्ट छोड़ो, ये बताओ प्रग की अनबीटन स्ट्रीक कितने गेम की हुई? सो निशा बताएंगे, एक को बंद कर देना भाई। आई थिंक ऑल द 3 माइट विन। इफ ऑल 3 विन चैट, आई विल गिव आउट अ पिज्जा टुडे इटसेल्फ। अगर 4 की वॉचिंग भी होगी ना, और अगर तीनों जीत गए तो एक बंदे को पिज्जा मेरी तरफ से आज स्ट्रीम पे भाई बनता है भाई। तीनों जीतेंगे, तीनों 2750 क्रॉस करेंगे। दैट इज इनसेन। आई मीन एक तो कर चुका है प्रग ऑलरेडी, प्लग विल गो अप टू 2760 ऑलमोस्ट, बट बाकी दोनों भी क्रॉस कर लेंगे। दैट हैज नेवर हैपेंड। वी विल हैव 4 प्लेयर्स अबव 2750। वाओ, दैट वुड बी क्रेजी निरंजन भाई अगर ऐसा हो गया तो ना। इफ लेट्स से प्रग इवन ड्रॉज, ठीक है, एंड गुकेश एंड वीडी विन, in that moment for the next 24 hours at least, we would have at least 4 players above 2750 rating from India. That is crazy. Crazy तो है भाई। Man, I can't believe that. समोसा कराएंगे, समोसा चैलेंज होगा भाई। चैट, समोसा चैलेंज हम करेंगे 369 लाइक्स पे। So जल्द you have another let's say 10 minutes, 9:35 तक तुम 150 लाइक्स बढ़ा दो, 10 मिनट में 150 लाइक, तो भाई
लेट्स गो, मिल जाएगी समोसे एक बंदे को. लेट्स गो चैट, जल्दी से लाइक दबाना स्टार्ट करो. एक बंदे के पेट में समोसे जाएंगे. प्रग भी बेचारा भूखा है, कह रहा है मुझे भी खाने हैं, मगर नहीं, पहले हम चैट को देंगे. प्रग भाई आप खेलो गेम. बाय द वे रुकी सम के बाद वीडी भाई स्टिल थिंकिंग. लेट्स गो टू द प्रग गेम. क्या चल रहा है? F3 खेला है. परम मकसूदलू टेकिंग अ रिस्क विद F3. Question mark on the board. I didn't do it. Chesscom said it, and the bar agrees. The engines agree. F3. That's a very, very risky move. Does he want to go E4? But he can't. The D4 pawn is hanging. What happens if I just push the bishop back? Does he want to go G4? Doesn't make sense. What is the idea of this move? Niranjan bhai, can you explain? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है move. क्या है ये move? सोच रहा हूँ भाई, सोच रहा हूँ. अच्छा अच्छा भाई, chat, this is crazy. I think F3 is a mistake. And यहाँ पे chat, for example, my first question is, let's say I put the bishop back. What is Maghsoodloo's point? Apparently, it is knight to H3 and knight to F4. That does feel logical with some variation of the Caro-Can and so on. But this is not exactly that structure. So I'm not sure if this would be a good move. And for example, यहाँ पे the two best moves are basically A4. The queen goes back and then H6, or ulta, pehle H6, the bishop goes back and then A4. And basically you're pushing both these pieces back, and then you play knight D5 and you're already attacking this pawn. If E4 chat, then knight to E3. भाई literally उनके गोद में जाके बैठ गया घोड़ा हमारा. And if the queen has to move now, let's say queen D2, knight G2 check, एक fork, and white resigns. So literally this is extremely dangerous choice by Maghsoodloo. I think Prague is winning yet again. आज भी जीतेगा Prague, and he is going to cross like 277, 2758 or something today. Prague is crushing, man. He's crushing today. I think Maghsoodloo भाई बहुत extra risk ले रहे हैं for no reason, especially when he has no time on the clock. या मकसूदुल ने वीडियो में एक्स्ट्रा रिस्क लिया था, मुझे बिल्कुल याद है, फ्रॉम टाटा स्टील, एंड इट कॉस्ट हिम डियरली. ही लॉस्ट. इनफैक्ट आई थिंक गुकेश था शायद, वीडियो में नहीं था, गुकेश की गेम में मुझे याद है. सो मे बी ही टुक अ रिस्क अगेंस्ट बोथ, जहां पे गुकेश को क्वीन D1 आया था, मुझे याद है. सो मकसूदुल भाई इज अ वेरी क्रिएटिव प्लेयर, बट इट्स बैकफायरिंग. एंड प्रग ने कल परफेक्ट चेस खेला था. यस्टरडे ही प्लेड ऑलमोस्ट 8% एक्यूरेसी के साथ. इफ ही प्लेज दैट टुडे, I think Maghsoodloo will not survive, especially with the time difference of almost 10 minutes. I think, Prague is going to take this home. Let's have a look at Gukesh. What's happening there? Gukesh also slightly better. भाई Prague का तो मुंह खुला है भाई. He's licking his lips. He knows कि भाई position better है. And if you go to this position, यहाँ पे after rook at D1, he's played knight to B4. And again, look at this pawn on D3. Full pressure incoming. Queen D7, rook D8, rook E8. Queen क्या कर रही है B3 पे? I think even Gukesh is slightly better. And again, chat, 10 minute ka edge on the board, on the clock, sorry. Man, I think VD, Gukesh, and Prague might win. All of them might win today, chat. There's a genuine possibility of that. And that means Tino player would be 2750 plus, including Vishy. We will have 4 players. And Niranjan bhai, I forgot. Chat, I completely forgot. Tomorrow, Arjun plays his match. And Arjun's game starts at 3 p.m. So if Arjun finishes his game, which he will, so there might be a moment tomorrow jahan pe we have 5 players above 2750. भाई कुछ ज्यादा ही बढ़िया चल रहा है सब, नहीं? ये कुछ विश्वास के बाहर चल रही है चीजें. I really hope it works out. I really hope so it works out. That would be the ideal, the dream case scenario. Most likely not going to happen, but let's see how it works out. Going back to Vidit's game, by the way, तुम कह रहे हो भाई double exclamation mark. Look at the move. Double exclamation mark played. So by the way, यहाँ पे knight F5 is a brilliant move. Why do you think that is? Because it basically gets rid of the bishop pair. I don't see how you can maintain the bishop pair now. Why? Because rook is attacked,
So you have to do something about this knight, or you have to move the rook. So first of all, if you take on f5, I will take on c5. I'm a pawn up. I have a safer king. I have the rook coming in. Your rook is attacked. Your pawn is attacked. I will have a, pushing all these pawns all the way. And maybe you will draw, maybe you will not draw. I will push for the next 50 moves. You will have to sit there for 3 hours and try to defend this. Or you move the rook to e5. Now I take here. Let's say you take, I don't know which one you take. Let's say you go for the opposite color bishop. Yeah, so that's the better probability. And again, the same position. And if you take here, then I save the knight, come back. And this is even worse, I feel, because now there is no opposite color bishop endgame chances. So regardless, what a brilliant move by Vidit. Nodirbek looks slightly shocked. I think he missed this game on this move. He is playing with 100% accuracy. By the way, that's almost true. Vidit Gujrathi so far is playing with an accuracy of 99.8. वो 0.2 handwriting के लिए काटे हमने, and Nodirbek is playing with 98.9. So वो भी इतना बढ़िया खेल रहे हैं, and still he is worse. What a beautiful game so far. भाई सारे लोग जीत रहे हैं भाई. This game looks drawish, opposite bishops and double pawns. For example, let's say opposite color bishop होता है, ठीक है? We get this endgame and black plays rook e6, ठीक है? If I remove these 4 rooks, then I say you are correct. There is no chance they will draw. But with the rooks on board, it is not easy. It is not easy. Black का play कहाँ से आ रहा है? Where is black's play coming from? There is no play at all, no plan, nothing. And especially, I think VD तक जितना उसने कल push किया, chat कल कौन था chat में? कौन रात को 12:30 था videos pushing? इतनी dead drawn position में he pushed till for like 5.5 hours. Do you not think he will like put his blood and sweat into this, where he's a pawn up? I mean, he will grind this game forever until Nodirbek makes a mistake. So I would love to have this position. I think he will get this position. Let's have a look what Nodirbek plays. I do think he's feeling the pressure right now. 400 की वॉचिंग है. Let's get to 369 likes chat. फिर एक बंदे का समोसा चैलेंज करेंगे. Let's go. VD is a pusher भाई. बिल्कुल भाई. You have to know when to push and when to pull. हम थे बिल्कुल नैतिक भाई, बिल्कुल exactly. और कल बहुत पुश किया था VD भाई ने. Timing is less. Time कम है. I agree. But the thing is, यहाँ पे end game है. No queens on the board. यहाँ पे VD could आराम से play 5 moves very quickly. It's not a difficult plan. मान लो मैंने सोचा मुझे H pawn push करना है. 1, 2, 3 move तो यही मिल गई. And by the way, this pawn is also attacked, yeah. So, just moving the rook, it's always dangerous because knight g7 also a move you have to keep in mind. So I do think we'll see bishop f5, bishop c5, and then opposite color bishop endgame हम जाएंगे. I think if he thinks he's winning, he will push for sure. Absolutely. कल तो draw में ही push कर रहा था. I do think he thinks he has chances. I'll tell the plan. Double up on the e file and have to play rook g4, protect g pawn and be passive. I think e file पे double करना white का probably is not the plan, because then black will also double and we'll exchange all rooks and it'll be a draw. What he wants to do is ensure कि rooks cannot penetrate on the e file. यहाँ पे rook e2 check कभी नहीं आना चाहिए. And then maintain as many rooks as possible. अगर एक exchange करना पड़ रहा है मजबूरी में, ठीक है. एक तो कम से कम बोर्ड पे रखना है. And then you start pushing your pawns as far as you can. ये pawn पूरा यहाँ पे मतलब push this pawn to g4, push this pawn to h5, f4, g5, h6, जहां तक लेके जा सकते हो. मतलब बोलते हैं ना, मतलब ऑपोजिशन के घर तक पहुंच जाओ, ऐसा करना है. अच्छा, for black को तो passive. Black has no plans. Black has absolutely no plans, and he has played something. He plays rook e5. So now let's see what happens. I think bishop c5 is the move. Let's go. टाइम से अभी ये क्या है भाई? रियल टिक्कू, रियल टिक्कू हो चुका है. What if Nodirbek takes bishop on g3? I think you mean this. Then I take with the knight back, and again this is awesome because I have knight against bishop now. I have avoided opposite color bishop endgames. That's very important. So वो तो और बढ़िया होता. That's why he plays rook e5. I think he's going for the opposite color bishop endgame. Karpov in the chat. Salam Karpov ji, कैसन बा? कैसे हैं आप? So Putin, अबे यार,
प्रणाम सबको जी, प्रणाम सारे रशन जी को भी जो चैट में है. बाय द वे, लेट्स हैव अ लुक एट द अदर गेम्स क्विकली. जस्ट ये गेम शार्पन होने वाली है. लेट्स गो इस गेम. कहां पे कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है. व्हाइट का टाइम देखो भाई, 34 minutes for white. And chat, he has to play still 28 moves. He has to find 28 moves in 34 minutes when he is worse. So Gukesh is going to take this home, chat. Gukesh is going to cross 2750 today. I am not going to be even slightly surprised when he wins this game. All looking awesome for Gukesh. Let's see Prag. क्या खेला उन्होंने? उन्होंने खेला है best move on the board. A4 played by Prag. The queen will go to D1. Only move for white. Prag be in the driver's seat. यहाँ पे time की advantage थोड़ी कम है, but board पे we are even better than Gukesh. So दोनों player black से यहाँ पे जीते हुए. And finally VD, who has taken on C5, and as mentioned, black takes on F5. So we have the opposite color bishop endgame, chat. And now perfect play. If black plays perfect chess, अगर मैं यहाँ पे स्टॉकफिश लेता, कहता ब्लैक से खेल, तो वो ड्रॉ कर लेगा. बट क्या नोदरबेक कर पाएंगे? इट इज नॉट क्लियर येट. It is potentially a draw, potentially a win. Let's see. 3-6 लाइन हो गए क्या? क्या बात कर रहे हो भाई? 255 लाइक्स है भाई. 369 लाइक्स चाहिए फॉर द फर्स्ट चैलेंज. लेट्स गो. I think there will be up to 3 Indians top 10 by the end of the tournament. Absolutely भाई. I think हम लोग सोच रहे थे कि ओलंपियाड में यूएस की टीम सबसे स्ट्रांग होगी, याद है? विद कारुआना, हिकारू, Dominguez and then Aronian. Just to point out the obvious, Aronian 2750 से नीचे गिर चुका है. ठीक है? His rating right now, where is Aronian by the way? Where is Aronian? What? I can't even find Aronian. Where is Aronian? What is Aronian's rating? He is 2721. Aronian is 2721. ठीक है? And Dominguez is 2748. And Dominguez does not play chess abroad. He plays mostly in the US only. So that means Aronian and Dominguez are weaker than Indian players already. So 2 out of the Indian players, मान लो ऐसे Prag है. Prag is stronger than Dominguez right now in the current form. And Gukesh is stronger than Aronian. ये मुझे clearly दिख रहा है. Then you have Arjun VD against Caruana and Hikaru. And maybe Hikaru doesn't play. Who knows? So I think कि हमारी टीम US टीम से strong होने वाली है भाई इस बार ओलंपियाड में. We might just win this one. We might just win this one. और पिछली बार क्या था? हमारी टीम divided थी. Like A, B. So we had couple of youngsters. B में थे. तो we had not fielded the best team in one category. समझ रहे हो? मुझे ऐसा feeling आ रहा है. Now we will only have one team. एक shot है and we might just win this time. तो बड़ा मजा आने वाला है भाई. क्या मस्त फील आएगी. Now VD calculating how can he push here. Bishop hanging है, भूलना नहीं. And chat, by the way, तुम्हारे लिए सवाल. Can we grab this pawn, chat? क्या ये pawn हम खा सकते हैं? क्या ये pawn edible है? Digest होगा? या फिर बाद में हमें बाथरूम जाना पड़ेगा? What do you think? Can we take this pawn, chat? Wesley भी है. If Wesley plays, now again, Wesley would be a strong opponent. I missed Wesley, I agree. Again, but what is Wesley's rating? Let me check his current rating right now. Because his rating is 2757. And you know what Prag's rating is? 2752. So is he weaker than Wesley right now? I would argue Wesley plays much, much less chess now than Prag. Prag will play even more chess than Wesley in the coming months. So who is stronger? I am not so sure. So I think Indian team might be stronger than the US team. It is definitely possible. No, yeah, chat. अगर यहाँ पे ये pawn मारोगे तो you are in good company. Bobby Fischer ने गलती करी थी World Championship में, तो you are not in bad company here. But after B6, the bishop is trapped and you will lose the bishop for a couple of pawns. King B7 या फिर Rook A5, whatever, and the bishop is trapped. So yeah, you cannot take this pawn, but you can bring the bishop back to F2. Very safe choice. And the bishop can later go to G3, attack this, or go to D4, attack this. आगे जाके बहुत options है हमारे पास. Only Bobby Fischer will take A7. And you know what? I am pretty sure, purely because of this move that he played, he grabbed on H2. Some people don't consider him to be the GOAT.
That is one reason. By the way, he plays bishop d4, also a logical choice, but I think he's tempting the move c5. It's like, खेल भाई, c5 खेल, खेल c5 खेल, ऐसा कुछ मुझे tempt करने की कोशिश कर रहे हैं. Otherwise, why would he play bishop d4? Because you are not going to grab on g7. For example, c5, bishop g7, there is rook g5, and once you move this, rook takes g2 check, and now black is even better because white ka king bahut weak hai. King c1, rook e8, rook e. This is how you lose a winning game. So let's not do that. I think bishop c5 ke baad bishop f2 wapas aana padega. So he's tempting black to play c5. VD will lose for sure. Dude, this is impossible to lose. This is impossible to lose. VD will literally have to blunder a piece or blunder a simple move like bishop g7 to lose this game. That's like a 1200 level blunder. अगर वीडियो के सेकंड देख रहे हैं, प्लीज रिफिल. ही नीड्स अ रिफिल. जूस चाहिए भाई को. भाई के लिए जूस लाओ जल्दी से. जूस लाओ भाई लोग के लिए जल्दी. भाई को जूस चाहिए भाई. भाई को जूस चाहिए. वीडियो का जूस खत्म हो रहा है. उसको लाके दो जूस. ऑरेंज जूस चाहिए उसको. कोई लाके दो भाई. रिफिल करो प्लीज. ये बच्चा भी आ गया यार. कितना घूमते हैं लोग. So going to the game of Prague now. By the way, look at this chat. In the Prague game, after a4, queen d1, he played knight f to d7. That is a question mark apparently. The best move here was h6, which he did not play, but knight f d7 is the second best move in the position. And after knight f d7, bishop takes, queen takes, comes e4, bishop goes to g6, and white ne pura center apne liye le liya hai. Now the question is, can Prague break this center? Chat, question for you. इस पोजीशन में व्हाइट की वीकनेस क्या है? कौन है वो स्मार्ट बंदा हमारी चैट में जो बताएगा कि व्हाइट की वीकनेस क्या है इस पोजीशन में? बताओ भाई. कम ऑन चैट, देखते कौन है. व्हाट इज व्हाइट्स बिगेस्ट वीकनेस? क्या प्रॉब्लम है भाई? अभी नाइट s3 पे कैसल भी कर रहा है, सेंटर भी है, बिशप पेयर भी नहीं है ब्लैक के पास. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद व्हाइट्स पोजीशन यार? सब बढ़िया लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो लग ही नहीं रही. व्हाई इज द बार सेइंग ब्लैक इज बेटर? व्हाट डू यू थिंक चैट? लेट्स सी. नॉट रॉन्ग टू से ब्लंडर. वो ब्लंडर 1200 का था भाई. साहिल भाई का सरनेम बहुत क्यूट है, टिकू. हाँ भाई, जितने ओ लगाते हो मर्जी है भाई तुम्हारी. d4 बिशप. I think any of these Indians can touch 2800 if that is the question. Raga bhai, any of them. But I do think इनमें से probably एक या दो ही touch करेंगे. I don't think कि सारे के सारे 4-5 करने वाले हैं. Like, you know, all of these youngsters, probably 1 or 2 will touch it, but they will do it really well. साहिल, get with the orange juice. अरे मैं अभी निकलता हूँ भाई, अभी फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ. वीडी को जूस चाहिए भाई. वहां पूछेंगे भाई मुझसे इमिग्रेशन पे, सर व्हाई आर यू इन चेक रिपब्लिक? वीडी को जूस चाहिए, वीडी को जूस चाहिए. भाई क्या मस्त रहेगा ना इमिग्रेशन मेरा वहां पे भाई. why are you traveling to Europe? Education, job, family trip, so what is the holiday? भाई वीडी को जूस चाहिए भाई. The main problem for white, chat बहुत लोगों ने सेशन दिया है कि f3 and so on, and knight g1 अभी passive है, ये b2 d4 weak लग रहे हैं. At the end the problem is the dark squares and the development. दोनों combined is a big problem. Development जैसे knight g1 बोला, अगर white यहाँ castle होता तो obviously it would be slightly better valuation as compared to now. And the second problem is the dark squares. Look at these squares, कितने कमजोर हैं. Like I can legit play queen g5, queen e3, and black की गोद में जाके queen बैठ सकती है white की गोद में, and there's nothing white can do. All he can do is offer a trade. So that's why ये dark squares सारे के सारे weak है. Even the d4 pawn, even the b2 pawn, even h4, and कल को मान लो h3, मान लो white plays h3, you can already see the problems coming in. एक pawn और गलती कर दी तो there are huge problems. So dark squares and the development is the problem for white. So he has to take care of it. As of now, I do think Prague is the favorite, and the bar also agrees. और जब bar में से agree करता है तो I'm very happy because that means the valuation is correct. So Prague should be the favorite to pull this, although it's debatable whether he'll win or not. Draw या win. Gukesh game में brief look, we saw it. Knight c2 खेला है white ने, good move. I think he can just trade this off and play like takes and bishop f5. Put more pressure on the d3 pawn. Knight b4 might be a threat.
f6, queen d7, rook e8, rook d8, पूरा pressure is d4 pawn पे, and Gukesh also slightly better, especially because clock पे time ही नहीं है white के पास. 27 मिनट है to play 27 moves. He has to play 27 moves in 27 minutes. I don't know how he does it. So going to the game of Vidit now. Let's have a look. So Vidit game में after bishop d4, black ने खेला है pawn to h5. Already you can see बार को white के लिए अच्छी लग रही है move. बार को धक्का लगा, देखो हल्का सा फूक मारा, देखो हल्का सा हल्का सा ऊपर गया. So that's good news already. As you can see, ये pawn light square पे है, dark squares मस्त लग रहे हैं, tempting लग रहे हैं. Top 10 list I cannot show you. I think I don't know if you can show that top 10 list, but regardless I will tell you the top 10 players in the world. It is Carlsen, Caruana, Hikaru, Ding, Anish, Firuzja, Nepo, Wesley, Wei Yi and Nodirbek. But 11 to 16 देखो अब, Prague, Vishy, Kayakin, Dominguez, Arjun, Gukesh, Vidit. So सारे players एक win दूर है top 10 and 2750 से. So यहाँ पे chat, I think c4 looks very strong, opening up, taking space in the center. Bishop को वापस pull कर सकते हैं. Then you can play rook h e1, very very logical. Rook can also defend via e2. Rook b1 भी हमेशा दिमाग में रहेगा ही रहेगा हमारे. So that's always an idea. Prague games, like, I disagree. Why? I think that's too early to call it a draw. I think Prague should be better there. Bar हमें बता रहा है it's minus 0.5 only. We think it's close to a draw. It's not. Prediction for today, carry Raghav bhai. Gukesh and Vidit win, Prague draw. You know what? I'm going to make an extremely bold prediction. तीनों जीतेंगे आज. आज तीनों जीतने वाले हैं. आज हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि इंडिया will have 4 players of 2750 and कल Arjun will also win and we'll have 5. I am going to make this crazy prediction. जितना भी crazy हो, I am going to have this. So, by the way, rook h e1, extremely logical move. Rook is coming to e7. So कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका. h3 नहीं भाई, g4, h3 might be a problem because black can also consider h4 and आप उनके एक pawn ने आपके 2 pawn 3 pawn रोक लिए. So h3 बड़े ध्यान से खेलना है. And I ideally don't even want to play h3 and g4 because pawn exchange होंगे. I want to exchange as few pawns as possible. जितने pawn maintain करोगे उतनी potential queens है भाई. Imagine करो you have 10 girlfriends and you have 10 phones for them. ठीक है, जितना queen को तुम बोलोगे you break up with them, उतनी queens कम है ना. So potential queens you have less, potential marriage material कम है तुम्हारे पास. So same way these are all potential queens. जितने exchange करोगे उतना कम chance रहेगा. I miss coach ना, he used to cry against me. कहने fake Karpov जी. Karpov जी अब हिंदी में कुछ लिख दे, मजा आ जाए भाई. अपनी हिंदी का भी हमें प्रयोग करके दिखाए. कितना मूव मिलेगा? 40 मूव से मिलेगा भाई. अभी 20 ही मूव हुए हैं, 20 मूव पेंडिंग है. 420 की वॉचिंग है चैट. जल्दी से 369 लाइक्स कर दो. जल्दी से समोसा चैलेंज करेंगे 369 लाइक्स के ऊपर. कैन यू रीड माय नेम करेक्टली? हरि कृष्णा पारिक. आई होप दैट्स करेक्ट. So by the way, chat 47 minutes. अगर हम देखें नोदिरबेक को थोड़ा स्ट्रेस में लग रहे हैं. वीडियो भाई अपनी दाढ़ी खिंचाते हुए, देखते हो क्या करना है. Who is the GOAT according to you? It is Magnus Carlsen. Absolutely. Gukesh game, तीनों गेम में एक बार अप डाउन करते हैं भाई. एक बार Gukesh game में कुछ हुआ नहीं after knight c2. He's still thinking. He's slightly better. We had a look at this position earlier. Again, white is trying to exchange the active knight. And black can comply. It's not a problem. Then play bishop f5 because he wants to develop this bishop anyways. And queen हमें पहले रोक रही थी. And उसके अलावा, by the way, Prague की गेम में भी he has he did play. He played knight to h3, castles, and now castles. And chat, यहाँ पे काफी logical move है black के लिए. And that is the move e5. You want to open the dark squares. This might be a logical try
For example, d5, you can see how queen c5, knight c5 are possible. I'm controlling all these squares. So let's see, e5 is a potential move. You can also play rook fd8, putting the rook opposite the queen and then preparing e5. Again, a better version. So both moves possible. There might be other ideas as well. Let's go back to the game of Vidit and see क्या चल रहा है, कुछ हुआ नहीं अभी. What makes Carlsen so strong? Is he naturally gifted? Naturally gifted, plus he had Kasparov as his coach. That really helps, भाई. That really helps. 10 छोड़ो, एक भी नहीं है भाई. तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? गलती किसकी है? अगर तुम रोज स्ट्रीम पे आओगे, रोज टिप्स सुनोगे, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा तुम्हारा. है, तुम आते ही नहीं स्ट्रीम पे रोज. Gukesh not on board, time ticking. Even VD not on board. Okay, it's the opponent move. ठीक है. देखो ब्लैक कैसे हो गए? ब्लैक लग रहे हैं क्या भाई? मुझे तो ब्लैक लग नहीं रहा, बिल्कुल सफेद है. अभी तो है मेरे बाल, बिल्कुल व्हाइट है भाई, जस्टिन बीबर की तरह. यार पता है गर्मी बहुत हो रही है यार. चैट दिल्ली में ना अब आई थिंक दिल्ली में भाई गर्मी होने लग गई है. मार्च फर्स्ट आ गया है. वी वेंट फ्रॉम keeping heaters to switching on fans very quickly within a couple of weeks. Anand is considered the most naturally gifted player last 50 years. That's for sure. He would be a great candidate for that. I absolutely agree. Why Ding is already in finals and why Max not playing World Championship? I think Carlsen was tired of preparing for a few months for the World Championship. He did not feel he had good competition. That was one of the reasons. And he wanted to focus more on Rapid and Blitz. वो stress नहीं चाहिए था उसको. And that's why Ding became qualified for the candidates, defeated Nepo and won the World Championship. थोड़ा हिंदी में भी करेंगे भाई. हिंदी, बंगाली, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, जोनसी, सब में करेंगे भाई. सानू सारी लैंग्वेज आती है. जर्मन और फ्रेंच भी करेंगे भाई. दिल्ली नहीं, फरीदाबाद बोलो. अब यार फरीदाबाद किसी को ना पता हो, दिल्ली तो हर किसी ने सुना है ना यार. भाई कमान 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 कमान, जल्दी जल्दी जल्दी. भाई 44 minutes फॉर नोदिरबेक नाउ. बहुत डीप सोच कर रहे हैं. वाई लाख कमा रहे हैं राकेश भाई से, फिर भी एसी नहीं लिया. भाई इतना इतना कमा रहा हूं, मुझे पता भी नहीं है. कमाल है भाई. थैंक यू भाई. आप दत्तू भाई, जो जितना भी बहुत बड़ा गैप रहा है वो आप दोगे क्या? बढ़िया भाई. सेंड मी माय यूपीआई आईडी तो भेज देना भाई. बाकी जो डिफरेंस है. इट्स 0 degrees here in तवांग. वेयर इज तवांग? How do I improve my chess? By following the streams by Kashmiri 125. बिल्कुल. By the way, VD is opponent is still thinking. So Gukesh game में क्या हुआ है? Let's go to Gukesh's game because we have updates there. So after knight to c2 जो हमने देखा था, Gukesh took on c2, excellent move. Queen takes, and instead of bishop f5, which was my idea, he plays bishop to g4. Equally good move. In fact, might be better. You pin the knight and you have even more control over the d4 square. जैसे ये कम था हमारा पहले. And now, of course, knight d4 ideas are in the air. Yeah, I think अब idea simple होना चाहिए कि कल को you could also move the bishop back, by the way, if white tries to attack you. So it's not a fixed deal. I can always put the bishop back. And I always have queen d7 ideas now. Even bishop h3 might be in the air at some point. And yeah, as usual, rook e8, rook d8. टिक्कू भाई का ज्योग्राफी कमजोर है. पलवल, पलवल तो इधर ही है भाई, बगल में ही है. अरे वाह, कभी गया नहीं हुआ है लेकिन पलवल बहुत पास में है. लेकिन इफ आई स्टार्ट कमेंटिंग व्यूअरशिप विल इंक्रीज. कारपोव जी, आपने एक छोटे बच्चे को लाया था उस दिन यार, याद है? वो जो मीशा नाम का छोटा बच्चा था. बच्चे को लाते हो आप, ऐसे नहीं आती आपको यार? ऐसा नहीं होता यार, ऐसे बच्चे को नहीं लाना चाहिए. बाय द वे, गोइंग टू द गेम ऑफ Prague, व्हाट हैज हैपेंड? नथिंग. Wow, so Prague and Maghsoodloo are definitely taking their time here. इनको थोड़ा फास्ट तो खेलना पड़ेगा. And Prague also has to be careful because अगर वो ज्यादा स्लो खेलेंगे ना इस पोजीशन में, मान लो he plays some normal moves like rook e8, nothing so active, then suddenly धीरे धीरे करके ना white will consolidate, control these weak dark squares, and this center can actually mean something because हमारे घोड़ों के पास अच्छे स्क्वायर नहीं है अभी. I would love the c5 square for the knight, but it's controlled. Yeah, I would love the d5 square, but it's controlled. So Prague also has to be active here and counter this center immediately, or at least prepare to counter.
दिकू भाई जल्दी आएंगे और अपना कमेंट्री कंटिन्यू करेंगे। हेलो हेलो चैट, वेलकम वेलकम। कैसा है सब कुछ? तो थोड़ा पावर कट हुआ होगा इसीलिए थोड़ा टाइम लेंगे। तब तक के लिए मैं आपको सारे बोर्ड्स और कैमरास दिखाता हूँ। ये हैं प्रणनानंद जी, खेल रहे हैं मकसूदलू के साथ। यहाँ पे डेविड नवारा विंसेंट केमर के साथ खेल रहे हैं। फिर एक और इंडियन बोर्ड, यहाँ पे गुकेश खेल रहे हैं ब्लैक साइड से। और यहाँ पे नोडिरबेक कोर्शिट में अपने खेली हुई मूव रहे हैं। तो ऑपोजिट कलर बिशप गेम्स में ऐसा होता है कि जो अटैक करता है उनको ज़्यादा चांस होता है विन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अटैक तो करेंगे ही विदित, लेकिन इन एडिशन टू दैट उनके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है। और चैट में कोई बोल रहा था कि h3 खेलना है खेलना है, लेकिन यहाँ पे h3 एक्चुअली खेल चुके हैं विदित। जय श्री राम भाई, कारपो भाई। आशीष प्रग वेरी क्लेवर प्लेयर, हाँ 100%। थोड़ी बैक खेल चुके हैं, करेक्ट यू राइट। तो मैं उस पोजीशन पे आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बोर्ड लेके आऊँ। एक मिनट का बोर्ड लाके यहाँ पे डाल देंगे। ओके, मैं बोर्ड आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ ताकि आपको पोजीशन भी दिखे और प्लेयर्स भी दिखे। ये लो, बोर्ड भी आ गया। बोर्ड का थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, ब्लैक कलर का है उसको हम क्रॉप कर सकते। अब आएगा मजा। तो यहाँ पे है गेम चैट, बताओ किसका गेम देखना है आपको। वैल्यूएशन बार भी चाहिए, ठीक है, वो भी ला देते हैं हम। वैल्यूएशन था, लेकिन वैल्यूएशन बार थोड़ा चैलेंजिंग है भाई। वैल्यूएशन बार देख रहा हूँ मैं, वैल्यूएशन बार को कैसे ला सकूं। फिलहाल विदाउट इवैल्यूएशन बार मैनेज कर लो भाई। तो मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा वैल्यूएशन बार को। आ गया इवैल्यूएशन बार। यस, आई हैव क्रैक्ड द इवैल्यूएशन बार का। आपको मिल गया है इवैल्यूएशन बार। साफ दिखाई देता है कि वाइट इज बेटर 1.11। तो ये जो 1 पॉइंट है इसलिए है क्योंकि वाइट इज अ पॉन अप।
जैसे देते हैं ना चेस में, पॉन को 1 पॉइंट वैल्यू दिया जाता है, नाइट को 3, बिशप को 3, रुक को 5, क्वीन को 9। अरे आएंगे भाई, अरे आएंगे अभी, आप जल्दी ही मनोरंजन करने के लिए, सबका दिल जीतने के लिए आएंगे। थोड़ा धीरज, थोड़ा रखना होगा आपको, श्रद्धा और सबूरी आ जाएंगे। बाय। तो अभी जो रुक जो है G5 वाला रुक अभी E2 पॉन को अटैक कर रहा है, तो हम इस पॉन को दो तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। एक है रुक E और एक है रुक। अगर आप रुक E2 खेलेंगे तो थोड़ा मल्टीपर्पज मूव होगा, क्योंकि रुक G1 पे बहुत पैसिव लगेगा, तो इसी के हिसाब से रुक E2 खेल के हम अपना गेम चालू रखेंगे। तो रुक E2 सीन्स क्या लगता है चैट? रुक B1 से G2 पॉन तो मार रहा है ना भाई, रुक B1 नहीं खेल सकता, वाला पॉन मार रहा है। तो और क्या चल, और दूसरे गेम्स भी देख लेते हैं एक बार। अब हम देखते हैं रावण प्रज्ञानंदा। सुनो भाई, प्रज्ञानंदा गेम के और रंजन भाई दरवाजा, अच्छा दरवाजा खोलो, ठीक है भाई खोल लेते। टन 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 टन। अच्छा फिलहाल मैं पीढ़ी का ही गेम लगाता हूँ। अब आएंगे टिकू भाई। तो टिकू भाई अगर आए हैं तो सबका स्वागत करते हैं, भाई जी का फिर से स्वागत करते हैं, का जल्द ही आगमन होगा। अच्छा वैभव भाई, आप जानते हो मुझे, वेरी गुड। करेक्ट, गोकुला कृष्ण जो का जो कमेंट है मैं 100% करता हूँ, 100% एग्री। अभी भी ये जो स्टीयरिंग का मामला है चालू है इन दोनों का, जब नोडिरबेक बहुत ही खतरनाक स्टीयरिंग कर, ये मुंह तो मुझे समझ में नहीं आया भाई, रुक G1 क्यों है इन्होंने? क्या इन्होंने सच में? हाँ ये तो मैं भी तो शॉक हो गया हूँ, G1 क्यों खेलेंगे कोई, थोड़ा तो शॉकिंग है। मैं तो रुक E2 खेलता, ये रुक G1 थोड़ा पैसिव नहीं हुआ अभी जी? तो जी ज्वाइन करने की कोशिश में लगे हैं, और स्वागत है टिकू भाई। आई एम बैक चैट। मेरा लैपटॉप भी हैंग हो गया था भाई, मेरे लैपटॉप में चक्कर है, मैंने चेंज करना है। मेरे लैपटॉप में ना वो कोई मिल गया था, तो वो कभी देखा है पॉ 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 पॉ, वैसा ना वो ग्रे ग्रे स्क्रीन आने लगता है पूरा, एंड इट जस्ट गोस डेड। मेरी आवाज आ रही थी क्या उस टाइम पे रंजन भाई जब आ लैपटॉप रही गया थी था? भाई जी बुम्बा। अच्छा आवाज आ रही थी, ओ अच्छा। नहीं तो आपकी मतलब मेरा आवाज सिर्फ यही नहीं चक्कर नहीं अटक गई थी, आपका वीडियो अटक गया था। अटक गई थी ना। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है। रुको रुको, पहले मैं आपको सब कुछ करते हैं भाई, रुको।
हाँ चैट, सो आई एम बैक। बहुत बहुत उमदा। जो लोग 300 लोग यहाँ रुके, जो 25% चले गए, वो समोसा चैलेंज मिस करेंगे, बिकॉज हम समोसा चैलेंज अभी करने वाले हैं टू सेलिब्रेट द पीपल हु स्टेड। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे थे भाई निरंजन भाई की बेसमेंट की, उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे भाई। ये क्या खुल गया भाई, क्या खुल गया ये? भाई क्या खुल रहा है ये? ये क्या खुल गया था? अच्छा निरंजन भाई ने पता नहीं वक्त से कुछ खुल गया था। चलो ठीक है, वी आर बैक चैट, वी आर ऑल सेट विद द पोजीशन। सबसे पहले करेंगे समोसा चैलेंज। जो लोग यहाँ पे हैं जल्दी से भाई देखते हैं। सो चैट, समोसा चैलेंज ये है। रेडी हो चैट? रेडी हो? गूगल खोल लिया है? गूगल खोल लिया है? गूगल खोल लिया है क्या? रेडी हो? सो चैट, तुम्हें मुझे बताना है कि इंडियन जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं उनकी रेटिंग एवरेज क्या है। भाई एग्जैक्ट डेसिमल के साथ व्हाट इज देयर रेटिंग एवरेज। सो हमारी ओलंपिया टीम की रेटिंग एवरेज क्या होगी अज्यूमिंग विशी प्लेस। लेट्स गो चैट। जो पहला बंदा सही बताएगा ही बेसिकली गेट्स समोसास फ्रॉम मी। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं भाई। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके भाई, थोड़ा मुश्किल है भाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। आई थिंक ये कैलकुलेशन बाद में करूंगा मैं। रुको रुको, अभी कर लेता हूँ। रुको, 251 पॉइंट नहीं, रुको 2751.9, ठीक है, प्लस 2750.9, ठीक है, प्लस 2748, ठीक है, प्लस 2746.7, ठीक है, प्लस 2745.9 डिवाइड बाय 5, 2748.68। दैट इज द आंसर, 2748.68। जिस बंदे ने, पहले बंदे ने आंसर लिखा होगा, उस बंदे को मिलते हैं मेरी तरफ से समोसे। 2748.68 भाई, 0.6 चाहिए, 2748.6। ओ 0.5 दिख रहा है मुझे। चिराग खन्ना जी, आपको मिलते हैं समोसे। डॉट एग्जैक्ट आंसर लिखा है, कॉमा लिखा है उन्होंने, बट ठीक है, आई थिंक कॉमा नहीं, डॉट का ही मतलब होगा। चिराग खन्ना जी प्लीज मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे डीएम करें, आइडियल ट्विटर पे करें। आई विल गेट यू समोसास भाई। आज रात को तो पता नहीं डिलीवरी होगी नहीं, कल तो करवा ही देंगे। तो चिराग खन्ना जी, भाई आपको मिलते हैं समोसे, और ये है आपका रिवॉर्ड रुकने के लिए हमारे डिस्कनेक्ट होने के टाइम। सो लेट्स गो चैट, वी आर ऑल सेट। अब हमने पोजीशन देखी थी कहां तक, H5 तक, रुकी 1, H4, और यहां पे वीडी ने अलाउ नहीं किया H3 आने के लिए, उन्होंने खुद H3 खेला। एंड आफ्टर रुक G5, निरंजन भाई आई एम शॉक्ड, ही प्लेड रुक G1, व्हाई नॉट रुक E2? मैं चैट से यही बोल रहा था भाई। What is this? Why not rook E2? मैंने लिटरली बोला भी था स्ट्रीम पे कि you can play this and you can also defend it like this, because rook G1 is such a weird move, right? Such a passive move. I live in Europe, is that okay? भाई सडनली ये 100 रुपए के समोसे भाई 1500 के समोसे हो गए यूरोप में। बहुत महंगे पड़ गए समोसे। यू नो व्हाट, आपको मैं चेसकॉम मेंबरशिप गिफ्ट कर दूंगा इंस्टेंट। भाई ये तो बहुत महंगा पड़ गया भाई। एक काम करो, डीएम मी और चेसकॉम आईडी, आई विल गिव यू मेंबरशिप। दैट्स द इजियर वे नाउ आई थिंक। नया विनर नहीं होगा भाई इफ ही इज ओके विद चेसकॉम। यूरोप में डिलीवरी करना मुश्किल है भाई। यूरोप में डिलीवरी फी ही कम से कम 5 यूरो होगी भाई, समोसा अलग। सो इट्स नॉट वर्थ इट भाई, इतना पैसा नहीं है भाई। इतना हम भाई छोटा मोटा खेल खेल सकते हैं, बड़े खेल नहीं खेलते भाई। हम पोकर टेबल जब होता है ना, जब पोकर टेबल होता है, वी प्ले लाइक 50 रुपए का बेट। एनीवेज, सो फिलहाल के लिए I think this looks like a position better for VD, but I am not sure why he did not play rook E2. So we'll have to see how it goes around. And now we go to the other two games, jahan pe we have Prague here, who's still better. So we saw it till this position, jahan pe F6 khela Prague ne after castles. Now F4. Look at this huge center. Baap re. Now E5, breaking the center. Jo maine kaha tha had zaruri hai, breaking that center. And now comes pawn takes, and F5. So he says, you know what? मैंने D file open कर ली. You got your D file. You got your C5 square. You know what I got? I got the king side. I can launch an attack
I have this huge pawn majority. You have a potentially weak pawn on e5. So white को कुछ चीज तो मिली है, but फिलहाल के लिए ना मैं black के लिए बहुत खुश हूं. Now comes bishop f7, queen e1. white कोशिश तो पूरी कर रहा है, but ये जो अटैक लग रहा है ना white का, ये हवा का अटैक है भाई. मिनिमम ऑर्डर 15 यूरो प्लस 2. मैं था भाई, आई वॉज देयर इन जर्मनी लास्ट अक्टूबर. लिटरली मतलब किसी का कुछ बर्थडे था और एक पिज्जा मंगाना था हमें, उसका ही भाई 2500 रुपए खर्चा था पिज्जा का. एक मीडियम या लार्ज पिज्जा का. सो आई वुड से कि इट्स नॉट वर्थ इट. डन चिराग भाई, मुझे डीएम कर लेना अकाउंट. आई विल गिव यू मेंबरशिप भाई. डन. So queen is coming to g3 now. That is going to happen. So I think Prague is better, but एक problem है यहाँ पे chat. That is the time. 26 मिनट है 31 मिनट के बदले. So यहाँ पे Prague को थोड़ा fast खेलना पड़ेगा because he has to play 21 moves in 26 minutes. It's not going to be easy in this complicated position. कल प्रग ने सारे फर्स्ट प्रेफरेंस निकाले थे क्रिटिकल पोजीशन में, बट वहां पे एक तो प्रेप में भी थे, काफी उनको पोजीशन पता थी, एंड सेकंड उनके पास टाइम बहुत था. यहाँ पे टाइम की कमी है, और लाइफ में अगर समय की कमी हो ना तो वॉचिंग नहीं आती. तो नाइट c5 बाय द वे खेला है उन्होंने. नाइट यहाँ पे d3 आ सकता है आफ्टर रुक टू d8. यू कैन प्ले नाइट d3, गेट दिस स्ट्रॉन्ग बिशप, एंड कल को ये बिशप भी खुल चुका है, एंड देयर इज प्रेशर ऑन द e4 pawn as well. So I think Prague has good chances to win this, but time थोड़ा fast खेलना पड़ेगा, which he is doing by the way. So going to game Gukesh now. Let's see वो game कहाँ पहुंची. So we saw it till I think bishop g4, right? Yep, bishop g4 हमने देखा था, and यहीं पे हम डिसेंट हुए थे. जल्दी से h3 पे आते हैं. And now bishop e6 back. And chat तुम कहोगे कि ये क्या था भाई, डायरेक्ट खेल देते bishop e6. ये मूव वेस्ट काहे करी? ये मूव वेस्ट नहीं है भाई, because after at some point, let's say queen c3 f6 पहले pawn बचाया, queen a3. Now maybe he will play, okay, b6 is not possible, d6 because of some tactics. At some point he'll play queen d7, and ये pawn hanging होगा, so white को move फिर से दोबारा waste करनी पड़ेगी. So there's not an issue with this move, bishop g4, and यहाँ पे I think ये pawn hanging है, so queen d6 has to be played. It does feel like the most logical move. तो खेलते queen d6 भाई, सब बढ़िया लग रहा है. And you can see Prague और Maghsoodloo, यार इतना क्या intense है. Going back to Prague's game for a second, they look so serious. भाई, can we have full screen for a second? Look at Maghsoodloo. ऐसे लग रहा है मतलब कोई पता नहीं किस चीज की प्लानिंग चल रही है भाई. ऐसे आंखों में ऐसे ना मतलब क्रेजी पैशन, नहीं भाई क्या ही चल रहा है भाई. भाई खतरनाक ऐसे मतलब ना फोकस के साथ Maghsoodloo जी बैठे हैं. It's like I don't know, he's calculating some mating variations or something. पता नहीं क्या देख लिया उन्होंने बोर्ड पे. Wow, that's some intensity. Prague भी पूरा मतलब फोकस से बैठा है. Prague looks like that streamer right now. उसका नाम भूल गया मैं. From I think Hong Kong. Okay, anyways, going to the board back. Let's go to Vidit's game. वहां पे कुछ हुआ है क्या? That's going to be a crucial game here. Let's have a look at the. Oh, he's replay. No, not yet. Let's go to the board manager by. So we have we saw it till rook g1 in Vidit's game. And here comes rook to e8. हमने e file नहीं ली तो black ने ले ली, and black is fighting for equality. Now comes c4. Good move, but black plays rook to e6. A decent idea. What's the plan? The plan is ideally rook g6 and simply winning this pawn and winning the game. Why? Let's imagine white move waste करता है. Let's say he plays bishop c3. ठीक है, अब आया रुक g6. ठीक है, लेट्स से अब ये पॉन तो गया, कुछ नहीं कर सकते. लेट्स से मैंने खेला रुक b1. ठीक है, अब मैं मारूंगा ये चेक चेक टेक्स. अब किंग मान लो e3. नाउ सडनली बिशप h3 will fall, and this h pawn is so close to queening, man. So I think you have to be careful. You cannot give this pawn away. Of course, he will not give it away. And the simple solution is bishop e3 here, attacking the rook, basically taking away this square. Rook को यहाँ आना पड़ेगा, and then you can play rook e1. But इसमें problem ये है कि how do you move the bishop now without exchanging the rooks? That's a problem for another day. Maybe there are some f4 ideas or something he can do. But yeah, I think bishop e3 खेलना पड़ेगा यार. मुझे move दिख नहीं रही यार. Maghsoodloo sounds very अजीब. नहीं यार, sounds okay. Maghsoodloo. I don't know. यार मुझे आदत हो चुकी है. ये ऐसे ही हाइप करता है चैट. यार हाइप क्या भाई?
मेरा दिल है भाई, दिल है मेरा, जीतना चाहता है इंडियन प्लेयर, चाहता है जीतते हुए, देखो कोई गलती करी क्या भाई मैंने? Pawn to g4 should be played. That would be a huge blunder, bhai. Big blunder. If g4 just takes, and white is absolutely, मैं कुछ कहने वाला था, white is gone. Vidit will win. Let's hope so. But he has to play bishop e3 now. By the way, Maghsoodloo played something. He played queen to g3. So queen e1 or queen g3. But again, यहाँ पे क्या अटैक हो रहा है? क्या ख्याली पकाओ पक रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है चैट. आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये नाइट c5 पे भी कर क्या रहा है? कोई क्लियर प्लान नहीं है. मे बी द प्लान इज टू प्ले बिशप c4 हियर, ट्रेड दिस, and then we have two active knights, and if for example knight g5, I am going to chomp the pawn and say bhai kahan hai attack, and yahan pe queen h4 pe there is simply h6. I trade queens and I win the game. So abhi ke liye attack utna threatening nahi lag raha hai, but it could change very quickly, you know, rook f3, rook g3, and suddenly we are talking. So I would say कि थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब अपने 10,000 स्टेप पूरे करने पड़ेंगे जल्दी से. सो आई थिंक देयर इज सम चांस हियर. टाइम तो कम है, सो वी विल सी व्हाट हैपेंस. गोइंग बैक टू द गेम ऑफ गुकेश. कुछ नहीं खेला है अभी. ही इज 14 मिनट है वाइट के पास. कैन वी गो टू द गुकेश कैम्प? बिकॉज दिस इज क्रेजी. Even though Gukesh is still thinking, if you look at the clock time, man, I don't think his opponent will survive this. Chat, do you think white here can play 23 moves in 14 minutes? Do you think he can play that without, you know, any blunders? I think that would be impossible for most players in this complex position. What do you think, Ranjan bhai? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, तो असंभव लग रहा है. हाँ खन्ना भाई, थैंक्स अ लॉट भाई. ओ उसका देख लेना, एको का देख लेना भाई. सुपर चैट भेज के इनविटेशन सेंड फ्रॉम प्रोफाइल दिस भाई. ये मस्त है भाई. मतलब सुपर चैट ही भेज दी कि भाई मेंबरशिप दे देना. रिमाइंड्स मी ऑफ अपना अक्षत भाई. वो भी यही करते थे. सुपर चैट भेजते थे 10 यूरो की और कहते थे भाई यार समोसे भेज दे. कहते थे भाई सब 10 यूरो को तो समोसे आ ही जाएंगे भाई. ये क्या लॉजिक है? Thanks for Super Chat भाई. I will definitely give you the membership भाई. Super Chat की जरूरत नहीं है membership के लिए. It was promised 100%. VD Mystic -1 now. That's not possible. I am 100% sure that's a scam. 100% sure that's a scam भाई. I can bet it. Of course it's a scam भाई. Of course. अपने VD पे भरोसा नहीं है मुझे. हाँ तुम जानते नहीं हो मुझे. हाँ VD पे भरोसा नहीं, मुझे नहीं होगा भाई. हमने VD की टी शर्ट बनाई है. ये टी शर्ट ना यहाँ पड़ी हुई है, ज्यादा हिलता नहीं हूँ कि लैपटॉप बंद ना पड़ जाए. वेट कर रहा हूँ VD इंडिया नंबर 1 हो तो मैं कोरियर कर दूं उसको. आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि जैसे वो इंडिया नंबर 1 बने मैं कोरियर कर दूं उसी दिन, अगले दिन से पहले स्पीड डिलीवरी से कोरियर करूंगा उसको भाई. सो दैट्स द पॉइंट. वेटिंग फॉर हिम टू बी इंडिया नंबर 1. चैलेंज किया था याद है. So by the way, bishop e3 played, attacking the rook. Rook goes to a5, and now this is the current position chat. He can also try bishop f2 by the way. याद है मैंने बहुत पहले कहा था rook e6, rook a6 काफी irritating है. Exactly that's what happened. और second rook भी आने वाला है a2 pawn खाने के लिए. I almost feel like you know ऐसे वो बोलते हैं ना जो future predict करता है, क्या बोलते हैं उसको? Do you know VD's एड्रेस? भाई मेरी बात हो गई थी VD की टीम से, उन्होंने कहा था कि एड्रेस मिल जाएगा, कोई चक्कर नहीं है भाई. मैंने ट्वीट किया था वो चीज, ठीक है, कि आई विल राइट एवरीबॉडीज नेम जिसने वो लाइक करी थी ट्वीट. और जैसी वो मुझे शर्ट मिली, VD बेचारा 1 से 3 हो गया. सो इट फेल्ट अ बिट वियर्ड सेंडिंग द शर्ट. वो पड़ी है मेरे पास, पूरी प्रेस करके पड़ी है. वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन ही टर्न्स नंबर 1 आई विल सेंड द टी शर्ट इमीडिएटली. बस Kuro is actually doing, अबे यार ऊपर देखो 90+40 है. 90-40 अबे ऑफ कोर्स भाई 90+40 नहीं है, वो 90 in 40 मूव्स है. फिर वो 40 मूव में 90 मिनट्स में खेलने हैं और फिर 30 मिनट और मिलेंगे बाद में, या 30 से पता है जितने मिलेंगे. By the way, VD is still thinking. Lot of pressure now, chat, because एक तरफ से black is trying to simply grab the pawn. So how do you defend?
Do you say कि भाई चलो ठीक है, I'm going to play bishop f2, तू ये मार मैं ये मार? Is that the plan? Is the plan to move the king? That will not work because black will constantly, harass your king somehow. Could be possible, but doesn't feel like the best move for sure. मान लो कि, for example, let's say क्या पहले तो bishop hanging है, so bishop f2, then let's say black plays g5. Then if you try to bring the king, then there's rook e2 suddenly, and the game is already going downhill. So it's not easy to move the king quickly. 30 second increment है भाई, 30 second increment है, exactly है. If Vidit wins today, he will make India tile number 1 eats. अबे ये क्या है भाई? Oh, he plays the pawn to a3. He plays a very slow move, but the question is, what happens on rook a6? I think the plan is to play bishop f2. He will give up this pawn for this pawn. I think that's the plan because you can't save this pawn anymore. There is no way. The question now is, let's say bishop f2, black plays g5, bishop e3, black plays f6. Now what? Achha, bishop d4, and you still maintain pressure. And next I want to play rook e1 and rook e7. Yeah, it's enough. It's enough. He can hold all the pressure and he has good chances to win this. I saw your super chat, Chirag bhai. I absolutely saw your super chat. Thanks a lot for it. आपको भेजने की जरूरत नहीं थी because I saw your messages and username मैंने screenshot ले लिया है. Thanks a lot. You will get the membership in a couple of days, bhai. You will get it, bhai. Thanks a lot, Sushmit bhai. I did react to it. You can go back and check. Thanks a lot, bhai. अभी सेंड कर दो यार. अगर टूर्नामेंट खत्म हो गया मान लो and VD is number 1, then I know he's number 1 for a while, so it will make sense. It will feel very ऐसे बेइज्जती की तरह लगेगा ना if he's number 3 or 4. In fact, he was 5 right now and I sent him a number 1 shirt. It will feel weird. ऐसा मुझे लगा personally. So I was like, यार रुक जाते थोड़ा सा. VD +2. नहीं भाई, VD, I don't think Saga bhai has a time machine, unfortunately. I know उनके पास समय रहता है usually, but करंट समय रहता होगा कई बार. At least वो पास में था, फ्यूचर में नहीं है. Nodirbek already played. He played rook to g6. भाई दोनों तरफ खेल रहा है, किंग साइड क्वीन साइड. He's like, भाई मैं इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं रुको भाई, इसमें गाना बन सकता है. रुको इसमें गाना बन सकता है. रुको इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं भाई. अब किधर बिशप d4 किधर चला भाई. इससे गाना बन सकता है मस्त यार. हमारे अगर एडिटर साहब सुन रहे हैं तो भाई स्टार्ट हो जाए एडिटिंग पे. 2 यूरोस डूब गए. नहीं भाई, वो उन्होंने सपोर्ट किया भाई. इट वाज ऑल सपोर्ट. Oh, look at VD's move. That's interesting, let's say. So the pawn push to c5. That's extremely interesting. Why? Because on one hand, it does kind of trap the rook. That's the first thing. But the problem is it's on a dark square and black ने एक ही second में, मतलब कुछ ही second में b6 खेल दिया. So Vidit, funnily enough, gets rid of his double pawn. तो आप तो कहोगे कि यार ये तो बढ़िया होगा, double pawn rid हो गया. But also now it's like it's difficult to push any pawns. This c pawn gave him some space advantage, blocked the bishop, kind of stopped the rooks getting to b5. So now after b6, he's kind of simplified now the position, and the position is open and black's pieces become a bit more active, let's say. So it's debatable who this move actually helped. Equal nahi hai bhai, he's still a pawn up. He's still a pawn up. It's not equal. He's still a pawn up, no? He's still a pawn up, bhai. He's still a pawn up. हिटिंग बढ़ाने के लिए पजल्स काम आएंगे बिल्कुल भाई. चेस इज 99% टैक्टिक्स किसी ने कहा था, and I absolutely agree. VD भाई सोचते हुए बहुत फास्ट खेला नोडिर्बेक ने. That's an interesting sign. By the way, VD has 13 minutes. He has to play 14 moves in 14 minutes roughly. So he has to get going quickly. He cannot waste too much time, honestly. So going to the game of Gukesh, what's happening? Let's have a look. We saw it till f6 queen a3. यहाँ पे knight b4 खेला उन्होंने, second best move. And now comes queen b3 back and queen to c8. और जो मैंने कहा था कि इन्होंने एक move waste किया है,
अब व्हाइट को ये पॉन बचाने के लिए मूव वापस वेस्ट करना पड़ेगा. So king comes to h2 and now rook b8 to defend this pawn. And yeah, I mean the knight will come back to c6 and उन्होंने पूरी एक bind बनाई हुई है यहाँ पे d4 पे. And white is basically passive. He's passive. The bishop is a bit stupid. I have active pieces. We'll move off. Knight will come here. Queen on b3 also a bit stupid. And the pawn on d3 is stupidest pawn ever. It's passive. It's backward. So and it's weak. So Chad, with 12 minutes on the clock and 21 moves to go, I think Gukesh is definitely in the driver's seat here. Should be able to win this, especially against the lowest seed of this tournament. I think he will win today and cross 2750. Going to the game of Prague, let's have a look what happened here. We have a few moves. हमने Queen G3 last देखा था with some attacking intentions. Let's see what happens. Bishop C4, he went for that move. And now comes Rook E1, does not trade directly. Rook A D8, excellent move, activating the rook. D2 की तरफ बढ़ते हुए, Knight to F2, Bishop takes, Rook takes, and now I think Knight C4 will happen. And you can see chat कि हमारे घोड़े पोजीशन में घुस रहे हैं व्हाइट के, और यहाँ पे अभी अटैक काफी दूर. I think Knight G4 का आइडिया उनके पास है to put pressure on the pawn and threaten a move like F6. Let's say black waste करता है, let's say Knight C8 खेलता है, waste करता है move. Suddenly Knight to G4. मान लो waste करता है, मान लो waste करता है. Suddenly Knight E5 तो है ही, और F6 आइडियाज भी हैं इस गेम में. This pawn can be extremely dangerous. Pawn से मार सकते हो अभी, but you can see how, yeah, even Rook F6 is possible here. Rook F6, Knight F6, because there's a double check. So ये tactics में मुझे नहीं घुसना है. So you have to activate your pieces immediately. Let's go Knight C4 Prague. कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई. All three of them are either winning or drawing. अभी कोई भी वर्स नहीं है अब तक. कल और आज में एक भी इंडियन प्लेयर बिल्कुल भी वर्स कभी दिखा नहीं मुझे. So all doing really well. ये बहुत जरूरी है कैंडिडेट्स के लिए चैट. That is the ultimate goal. वहां पे स्टेबल प्ले चाहिए. जो भी लोग हारते जीतते रहते हैं ना, वो लोग जीतते नहीं कैंडिडेट्स. यू नीड दैट स्टेबल विन विन ड्रॉ ड्रॉ विन ड्रॉ विन 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 ड्रॉ, एक लॉस विन 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 ड्रॉ 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 विन. ऐसे करके बंदा कैंडिडेट जीतता है, एंड उसके लिए परफेक्ट चल रहा है. एंड इमीडिएटली नाइट C4 प्लेड बाय Prague, फाइंडिंग ऑल द बेस्ट मूव्स. 24 मूव्स हो चुके हैं, 16 मूव्स टू गो, एंड ही स्टिल हैज 17 minutes to play those 16 moves. So has to play it fast, has to play it really fast. Let's go to the game of Vidit. Has something happened? Not yet. Still thinking after the move B6 with 10 minutes on the clock, and he still has to play 14 moves. Should not be difficult because 10 move है तो 5 minute increment से भी मिलेगा, but has to be a bit quick now. Vid is not in time pressure यार, because endgame है. It should be easy to handle this. He takes on B6. Yup, he's grabbed the pawn, and let's see what happens. Just like DQ from this channel. इसमें just like क्या भाई, सब अपना फॉर्म यहां मत उड़ा देना भाई. कैंडिडेट्स में भी चाहिए भाई. ये हमारी क्रिकेट टीम नहीं है भाई, यहां पे सेंचुरी मार दी तो वहां नहीं मारेंगे. If you want to win the candidates, what's the idea? To become world champion, right? और वर्ल्ड चैंपियन यूजुअली कौन होता है? वो होता है जो हर टूर्नामेंट में अच्छा खेले. तो फॉर्म उनके लिए कोई आती जाती चीज नहीं है, वो यूजुअली हमेशा रहती है. एंड चैट यहां पे हम देखेंगे C4 खेला है वीडी ने, एंड नाउ द प्रॉब्लम इज बिशप कम्स टू F5, एंड ये पॉन पे प्रेशर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुश फर्दर. मैं क्या पीस एक्टिवेट करूं? It's not easy here for VD. So draw के chances हल्के से बढ़ते हुए यहाँ पे he's still a pawn up, और ये pawn जो है ना, इसने नाक में जो दम किया है ना, मतलब कह नहीं सकता भाई. प्लस वन पोजीशन में obvious moves नहीं खेल पा रहा. I don't think there were any obvious moves, man. I don't think there were any obvious moves here. एक Rook E2 था, that I can agree with you. उसके अलावा ऐसा कोई मूव नहीं था जो obvious नहीं खेला वीडी ने. I am still shocked why did he not play Rook E2. That's something we would love to ask him अगर option हो कभी. That would be a good question to ask. So we'll see how it goes. This is not over chat. इतना आसान नहीं है ये गेम कि अभी ड्रॉ हो गया, ठीक है, बार कह रहा है तो इक्वल है. बार तो बहुत चीजें कहता है भाई. बार तो कहता है स्टार्टिंग पोजीशन इक्वल है,
So लेकिन ड्रॉ होती नहीं ना. So I would say कि अभी ये गेम चलने वाली है. Let's go to the game of Gukesh. कुछ हुआ क्या यहाँ पे? So we saw it till queen c8, just saving the pawn, rook b8 and now a3. भाई धक्का लगा रहा है घोड़े को, निकलो यहाँ से, हम वापस ले आएंगे, हमें कोई चक्कर नहीं है भाई, बराबर यहाँ पे c6 पे आ जाएंगे. Gukesh has to play 20 moves in 8 minutes. Exactly. This is looking extremely, extremely difficult. Extremely difficult. ब्लंडर करते नोदरबेक यार. भाई नोदरबेक ने लास्ट ब्लंडर 1995 में किया होगा भाई, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था. मतलब लिटरली करता ही नहीं है ब्लंडर यार वो. 7 मिनट है भाई. भाई I honestly think पहली विन हमें गुकेश से मिलने वाली है चैट. First win we will get through Gukesh. I think this is the first game that will finish. Gukesh against Thai Dai Van Nguyen, and he will join the leaders there with 1.5 points. Ian is like cricket team, सारा कैंडिडेट्स ग्रुप स्टेज ही जाता है और फिर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में आ जाता है. I kind of agree भाई. गुकेश गेम में देख रहे हैं भाई, बिल्कुल knight has come to c6, so he has played the move. 7 minutes for his opponent with 20 moves to play. Can we have Gukesh's camera? एक बार ना, let's just look at the game. I said very important move for VD. His opponent has played the pawn to b5. Extremely logical move, opening up the position, exchanging pawns. Exchanging pawns, very important. ये गेम VD के लिए जीतना इतना आसान अब नहीं रहेगा. Let's see क्या होता है. Going back to Gukesh's game. Let's see, can we have Gukesh's camera? Very excited to see his opponent panic when he has less time on the clock. He finds a good move, knight to d2. फिलहाल के लिए अच्छी मूव्स खेलते हुए opens of the bishop. कल को knight e4 पे c5 में हो सकता है, and maybe he can play the pawn to f4 to break this bind that Gukesh has kind of put up here. Nodirbek is a very good player. अच्छा move देखते ही overthink नहीं करता. I absolutely agree with Shibai. He's a great player. There's no doubt. The only thing is he's not playing the candidates. So we have to see it this way कि हमारे 3 player हैं. And at the end, we can all agree Ding is not the best chess player in the world right now, but he is the world champion. So there's a good chance to become world champion because Carlsen is not playing and Ding is not in good form. So all we have to do is win the candidates. So whosoever can do so, this would be such a great moment to do it. By the way, अभी यहाँ पे सोचते हुए Gukesh, let's go to the Vidit game. Something happened. He did not take on b5. He played king to c3, and black can actually just take. Doesn't change much. The problem is कि हमारे pawns सारे रुक चुके हैं चैट. हमारा plan था pawns को push करने का, space gain करने का, but सारा space Elon Musk ले गया, and हमारे pawns यहीं पे अटक चुके हैं. h4 pawn की वजह से अगर ये pawn हम किसी तरह खा जाए तो मेरा फिर से chances मुझे दिखने लगेंगे. But otherwise थोड़ा मुश्किल लग रहा है भाई. So we're still fighting. थोड़ा time है, but it should be okay time wise. We go to the Prague game. We have a move. So after knight c4, knight g4 played. And here chat, there was rook d3. That was one crazy move to attack the queen. And the second move was king h8, the move Prague played. Very solid move. Getting out of these f6 and knight h6 ideas. Excellent practical move. This knight defends the e5 pawn. And this knight cannot be attacked. There is no b3. So all good for Prague, looking excellent. बहुत smoothly खेल रहे हैं Prague. Chat, I have to be honest. ठीक है? I will also let you. Vaishali was losing when we last checked. We'll come to her game. So far, in the 1.5 rounds we have seen so far, ठीक है, this is too early to say. But 1.5 rounds में, the best prospect does seem to be Prague. Not only did he win the game yesterday, his prep was the best. He found the best moves. He converted it effectively. And today as well, he's finding all these tricky moves. So, filhal ke liye, it's like you've just been on the first date. You can't judge the person based on the first date. There's a lot more to learn. But in the 1.5 rounds, filhal ke liye, I think Prague is the best prospect so far for this tournament and the candidates. So yeah, it'll be fun to see as other players catch up
or will they? We'll see. Or can Prague also hold up? Yeah, it's not going to be easy for him to continue playing like this. VDM, don't worry भाई, कार्पोव भाई ने बोल दिया तो मानना ही पड़ेगा. I will not argue with कार्पोव भाई. कार्पोव भाई आपके मुंह में घी, शक्कर, मतलब चिकन, स्वीट डिश भाई, आइसक्रीम, सब कुछ भाई. Besides Austria, she was losing in the opening itself, man. There was no chance there. There was actually no chance. So come on, come on. 20 मिनट है भाई. Let's go to Gukesh's game. एक पहले VD की लुक मारते हैं, कुछ हुआ क्या? No. Let's go to Gukesh's game because his opponent is literally had almost no time. Gukesh is right now thinking. Gukesh looks extremely tense for some reason. I think he can sense this is like, this is within the grasp of, where I start grinding it down. He can sense it. काला जादू करना चालू करे क्या? हाँ बाबे, क्या काला जादू भाई? Carlsen is above chess, is not willing to play candidates. Yeah, I think he lacks. If let's say, the world champion was somebody like, I don't know, Prague or Nodirbek or Firuzja, and then FIDE changed the format to suit him, he might play the candidates. One guy, 8 people in the world who are right now happy Carlsen is not playing. I know 8 people at least, or 7, 8 people at least who are happy that Carlsen is not playing the candidate. So, yeah. आपका जो गोट कौन है भाई? I have a question by the way. पता है बहुत लोग by the way, Carlsen is my answer. बहुत लोग ना कई बार कोई टर्म थ्रो करते हैं, उनका उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता. I want to check. Chat, गोट की फुल फॉर्म जरा लिखो. What is the full form of goat? Goat in chess जो सब पूछ रहे हैं. What do you think is the full form of goat? I want to see सबको पता भी है कि नहीं. कोई बेचारा चैट में बैठा है, भाई ये गोट कहां से आ गया? ये जानवर कहां से आ रहे हैं चेस में? कहीं गाली तो नहीं दे प्लेयर को? Prague's undefeated streak will continue. Yeah, I think undefeated क्या है? तो winning streak की तरफ बढ़ रहा है अब. VD match, VD's opponent is still thinking. By we saw it. This is the position right now. Slightly better for VD, pawn up, but opposite color bishop. So we'll see how it goes. फिलहाल के लिए it's extremely tense. Greatest of all times. Time. Yup. Greatest of all time is the answer. Bakri nahi hai uska answer bhai. Exactly. Why not 9? Count ding 2. Yeah, but candidacy terms mein, yeah, maybe ding as well. Probably. Yeah, actually 9. बकरी नहीं होता भाई. I know मजे ले रहे हो, but chat में I am guaranteeing you कम से कम 5 लोग तो थे जिनको गोट का मतलब नहीं पता था, पक्का. And they were like, गाली क्यों दे रहा है प्लेयर्स को यार? क्या प्रॉब्लम क्या है इस आदमी की? नोदरबेक चैंप. अरे देखो भाई, ये उज्बेकिस्तान वाले आगे क्या? Isn't Nodirbek a pawn down, Mr. Drockmaster? चैनल स्ट्रीम क्यों नहीं करते भाई? I have joined Chesscom India. Now this is my channel. This is where I'll be streaming every single important tournament. So यहीं पे पूरे साल स्ट्रीम करेंगे, तो यहीं पे आने की आदत डाल दो भाई. What could be a good move for Guki now? I think good move. King H8 is a decent one. Ab idea is Kalko you can also consider, first of all moving the bishop somewhere. There's no tactics long term, and also F5. Who knows? This could be on the radar, and it's a very prophylactic move. I can't find a clear plan. Opponent has no time on the clock. Let me play King H8 and give him a chance to blunder. तो कई बार ना ये tactic बहुत सही काम करती है. Nodirbek will win. Dude, you are telling me Nodirbek will win this game, this one. Have a look at the game once, एक बार. Please have a look at the game. Are you sure? Do you want to bet money on this? I really doubt कि Nodirbek has any chance of winning this game. No offense, I love Nodirbek. Yeah, just saying. I really don't think he has any chance here. आप टोरंटो जाओगे? नहीं, I don't think so. I'll be going. ये स्ट्रीम करना है, अब स्ट्रीम करने के लिए टोरंटो से करे, यहाँ से करे, वो बराबर ही है. एंड ऑल्सो आई थिंक भाई टोरंटो, पता क्या हुआ था? आई एम नॉट किडिंग, ठीक है. सो मैंने ना एक बार ऐसी मजे के लिए, जब कैंडिडेट्स का शेड्यूल आया था, मैंने एक गलती कर दी लाइफ में. मैंने टोरंटो के होटल के डेली रेट्स और एयरबीएनबी के प्राइस देख लिए. तो उसके बाद मुझे पता चला गरीबी क्या होती है. तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. फिर उस दिन के साथ दिमाग में कभी आया नहीं.
कि टोरंटो जाना चाहिए, कभी दिमाग में नहीं आया उसके बाद मेरे भाई. Current second best player, he is the one who deserves to be world champion. I agree, he is the second best player right now. But you know what? Even the best player is not world champion right now. Second best is also not world champion. The fifth best is the world champion or fourth best. So we just have to focus कि यार chess के लिए best क्या है, Indian chess के लिए best क्या है. If a player becomes world champion, he will get sponsorships. He will get so much media talking about him. लोग sponsor करेंगे, लोग involve होंगे, नए लोग खेलने आएंगे. We've not had a world champion since Vishy Anand. So that's why it's important. Even though, let's say they are world number 3 in ratings, I would still like them to be world champion. And then, of course, they will get tested next year. So that's another thing. रिटर्न टिकट तो अलग है, वो तो मुझे आइडिया था कि कॉस्ट क्या है. मैंने होटल का प्राइस देखा ना, मैंने कहा कि कनाडा वाले बंदे सही कह रहे थे, जो उनका इन्फ्लेशन इज राइजिंग. वो सही था, वो फैक्ट सही था भाई. ये तरुण भाई क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या है भाई? Bobby Fischer and Magnus Carlsen is better. I think Magnus Carlsen is better, भाई. There's no doubt. But if you had Fischer right now, अगर फिशर यहाँ होता with the engines, he might be the best. राकेश जाएंगे सब मजे, राकेश जाएंगे. नहीं भाई, राकेश जा सकते यार. उनको ही मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया था होटल के रेट का. There is no way on earth. I mean, I think Saga bhai will probably go, but I think because yeah, again, he's the only one. उसके अलावा I don't think India से कोई जा रहा है. I am down for it, Shivam bhai. Down for what? I am ready to bet $100 for Nodirbek wins today. Ready? Really? You think $100 you're ready to bet? Where will you bet though? There's no betting here. But you are ready to bet $100. आपका नाम क्या है भाई? Mr. SS. Yeah, I'll keep it in mind. There is no way he wins this. Just want Will to beat Hikaru candidates. When he said Will is Chokra after he won the Grand Slam, I was, yeah, man. It's not even about Hikaru specifically. I just want him or anyone to win the candidates. Bhai, housing crisis, bhai, hotel crisis भी चल रहा होगा भाई, खतरनाक रेट है. Toronto में है भाई, so that's why the stream will be 1 a.m. to 7 a.m. By the way, let's have a look at the game of Gukesh, जहां पे हमने देखा था till King H8. His opponent has played Queen to C2 back. इस क्वीन ने जो डांस किया है ना इस गेम में, बाप रे, मतलब ठाकुर भी शर्मा जाए. मतलब पहले आया B3, पता नहीं कहां, फिर C3, फिर कुछ पता नहीं B3, फिर C2, पता नहीं क्या, मतलब 50 बार मूव कर चुकी है. And I think this is not looking good for white, honestly. It's stable, but it's not good. Maghsoodloo got 20. भाई एड्स आ रहे हैं. देयर इज नो वे. मैंने एड डिसेबल कर रहे हैं भाई. देयर इज नो वे एड्स आ रहे. पहली बार आएगा जब तुम क्लिक करोगे स्ट्रीम पे, उसके बाद नहीं आएगा. आई हैव डिसेबल्ड दैट. So going to the game of we go to Prague now, which was also, oh, look at this, something has happened, chat. So here rook f3 was played, जो हम सोच रहे थे कि भाई white might play to attack, and black plays rook to d4 question mark. Apparently that's a mistake. It's still better for Prague, but not as much. Yahan apparently f6. Wow. What? Bar cheek ke f6 keh raha hai. What is the plan? Rook f2? Oh. Chad, can you find the best move for black? There is only one move. Before we look at what happened in the game, can you find the best move here? Come on, chat. We'll go to Vidit's game plus Vidit's game quickly. The best move is rook takes c4, sacrificing the rook. The idea being agar knight e4, then knight e4, and it's a fork back. So that's why it's bar thoda kamzor hai. It's not a question mark. And white khelte hain h3, which is second best, but also slow. Now, in fact, I have moves like knight to d2. बाप रे, मतलब opponent के camp में मैं rook attack कर रहा हूं यार. So this is looking really bad for Maghsoodloo practically. Chat, let me flip the board and show you दिखने में कितना बुरा लग रहा है. If I look at this position, I'm like, अगर मैंने 5 move में mate नहीं किया, तो मैं गया. That is what I can see as white. I have to mate or I will get crushed in 5 moves. That is it. So, let's see how it goes. दोनों के पास टाइम कम है. Time pressure will play a role. Let's have a look. By the way, Keymer against Navara has been a draw.
So that's another result. Not too important for us, but just a result there. And now we go to Vidit's game. Jahan pe Nodirbek took on c4, took with the pawn, and rook to e5. I do think we might be moving towards a draw here because Vidit has kind of spoiled his edge a little bit. Again, the rook is passive. Why is the rook on g1? Yehi rook agar e2 pe hota, this will be so much more better. Yeah, I can never move this rook away, and that is the problem. That's why rook g1 जो हम कह रहे थे यहाँ पे move number 22 पे was a big mistake practically, and now Nodirbek is probably going to hold this. Yep, it looks equal. I agree, chat. It looks equal. I wouldn't say it's going to be a draw yet because there are chances of people making mistakes. But, and especially because white has a passed pawn. Important है chat. Passed pawn jab tak hai na, I would not lose hope. Okay? But yes, it's close to a draw now. So this is going to be interesting. Going to Gukesh's game. What's happening there? Black ne khela hai knight to e4 comes up. c5 pawn attacked, so no points for guessing. b6 should be a good move. Also knight d4 should be decent, but I kind of like putting pressure on this pawn and not exchanging. So let's just play b6 for now. Keep the tension. Put pressure back on whites because time hi nahi hai. 5-6 minutes had to play 17 moves. So let's put pressure on him. Let's not exchange any pieces at all. Maybe he lost because having two weaknesses as an name knows. Bhai, he did not lose. He lost the advantage. हारने और ड्रॉ में बहुत डिफरेंस है भाई. b6, excellent move, maintaining the tension. Come on, chat. I am really excited. We might have at least Gukesh crossing 2750 today. Prague has already crossed it, and if he wins, he will go further, and drop maybe he will stay ahead. So Vidit and Arjun will have a chance tomorrow to do that. That is if Vidit draws, and Arjun will start, of course, tomorrow. Vidit हार नहीं सकता है. That's not happening. Not happening. He will not lose that game. By the way, knight goes to c3 back. So he's trying to control the d5 square. Arjun should have been here. I think the reason why the organizers have invited these three is pretty obvious because these three are playing the candidates. So they knew this would be a hyped event. And Arjun would not fit the bill because 3 Indian already ho gaye. So that's why Arjun probably was not invited. And it's just pure luck, man. So Arjun has been kind of unlucky over the last year. बहुत tournaments में Chennai GM ho, एक World Rapid में भी यार Blitz में किसी में he was playing so well. Then you had बहुत event थे यार जहाँ पे he came second. Even World Cup में he lost to Prague, missed it by 1 rank. He was completely winning at one point. So Arjun is that guy who's been right there, like बिल्कुल एक step पीछे, just pure unlucky, and that is bound to change at some point. And when that changes, so he will also, he's already joined them by rating wise, but in terms of candidates and so on, he will also get the same opportunities. He won Qatar. Did he win Qatar? Really? I don't remember that. कोई याद नहीं actually. इस ओलंपियाड से 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेले हैं, नोदिर्बेक और गुकेश. I agree, man. Both played really well. Vidit will not lose this, bhai. He will not lose this. He has a few weaknesses, but he will not lose this. It's kind of just passive. That's why I feel there's no chance. His pieces are passive, man. By the way, after dc4, rook e5, he played king d4. Rook was attacked. Rook goes to e8. I think it's time to play rook e1. I think it's time to play that because we don't want the rook entering on e2. That's not what we want at all. So let's play rook e1 and try to exchange one pair of rooks. Because honestly, at this point, dono rook na bahut active hai. It's becoming difficult somehow. And then after exchanging one pair of rooks, bring the king to f2 and free the rook, bhai. Please, free the rook. This sometimes gets stuck on specific ideas and it holds him back against players at 2750 and higher. Loses his advantages like that. It is possible, but I do think yahan pe it was just, I think he did not understand the endgame that well as Nodirbek did. Nodirbek understood it better than Vidit. So that's something to focus on. Opposite color bishops.
यहाँ पे clearly Nodirbek grasped the position quicker and better. You can see it on the clock and the position. Address the elephant in the room. Who's the elephant here? I hope मुझे नहीं बोल रहे भाई तुम. अच्छा 22 में. Okay. Why are there no mods? Some mods, they don't spawn. Mods ना आते हैं भाई. We can have a mod challenge soon. कौन बंदा है जो regular आता है भाई? रंजन भाई, do you know anyone in the chat who comes regularly in the chat, like बिल्कुल regular? ऐसा कोई है क्या चैट में जो आपको दिख रहा है जो बहुत रेगुलर है? And we finds the best move. Good. रुके E1. टिक्कू ब्लंडर्ड. ये आप मतलब chess.com इंडिया के हिस्ट्री से बोल रहे हो कब? चेसकॉम इंडिया से बोल रहा हूँ. जैसे हमने स्टार्ट किया है स्ट्रीमिंग दोबारा. मिस्टर हॉक रहता है, हमारे हॉक जो मॉडरेटर है वो हमेशा रहते हैं. और कोई है चैट में जिसको हम मॉड बना सकते हैं? क्या लगता है? देखो नथु गांधी जी रोज तो आते हैं मगर ज्यादा ही कॉमेडी करते हैं. शुभन भाई भी रेगुलर आते हैं, ये तो है. शुभन भाई, आई कैन सी रेगुलर कमिंग इन. मी केम रेगुलर. अमन भाई ये क्या है भाई? हमें कनेक्ट कर रेगुलर है भाई. हमें रेगुलर है बट उनकी किस्मत खराब है भाई. वो मॉड बनेंगे तो चैनल क्रैश ना हो जाए. उनकी किस्मत बहुत खराब है भाई. मैं हूं खाली पीली. दो तरह के मॉड होते हैं ना रंजन भाई. यू कैन मेक शिवन भाई द मॉड. जो नॉर्मल मॉड, एक नॉर्मल होता है, एक होता है हु कैन सेट द स्टेटस, एक होता है हु कांट डू इट. सो लेट्स सेट शिवन भाई एंड एज ही गेट्स एक्सपीरियंस यू विल सी हाउ इट वर्क्स आउट. किसको बनाना है भाई? नाम क्या है? शुभन भाई को बना दो. चिराग भाई आपका आगे मौका आएगा. वील हैव मोर अपॉर्चुनिटीज. अभी बहुत मॉड बना रहे हैं हमें एज वी गो अलोंग. शिवन भाई हैज बीन देयर फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रीम, एवरी स्ट्रीम. सो वील मेक हिम मॉड. भाई आप भी हो, मुझे याद है आप भी हो. बट ठीक है, अभी उनका नाम मुझे पहले दिख गया. You'll get chances भाई, don't worry. वही भाई, आज किसी का दिन. हाँ घबरा. हाँ 100 रुपए ले ले मॉड के. नहीं हम मॉड्स बेच नहीं रहे भाई. सो लेट्स गो भाई. शिवन भाई आज बने, बाकी को मौका मिलेगा. रेगुलर रहोगे तो मॉड मिलने का चांस मिलेगा भाई. दैट्स द थिंग. गुकेश को सर्दी हो गई है. क्या बात कर रहे हो? प्राग में टेम्परेचर क्या है बाय द वे? लेट्स हैव अ लुक. प्राग टेम्परेचर भाई, प्राग में -1 चल रहा है मिनिमम. मैक्सिमम 6 डिग्री. तो नो वंडर सर्दी हो रही है इन लोगों को. So with the game, ठीक है, we'll see how it goes. I think they have 8 moves to play in 7 minutes. Should not be difficult. He will trade one pair of rooks. Let's go to the Gukesh game for now. एक बार परख की नजर मारते हैं कुछ चल रहा है क्या? Has something happened since then? By the way, B5 played and F6. He played this move. G takes and rook EF2. So सारे pieces लगा दिए हैं F6 pawn के पीछे. I think rook D6 आना पड़ेगा to save this pawn. Now we cannot allow white to grab on F6. ध्रुव भाई आप भी देख लो ना. बिल्कुल मौका मिलेगा. साहिल टिक्कू भाई, I always blender भाई. Oh, knight D7. Oh wait, but knight H6 and knight F5. That's a crazy strong maneuver, no? Oh, it's getting sharper and sharper, chat. It's getting sharp now. It's getting really sharp. Going to the Gukesh game. Let's have a look. क्या चल रहा है? In this game, after B6, knight C3, he did play knight to D4. Opponent के पास 3 मिनट है भाई. 3 मिनट है. He takes on D4. Pawn takes. This is going to be really sharp. Let's stick with this game for now. Chat 15 moves खेलने हैं 3 मिनट में. I don't know how he will do that. Ninja bhai, do you think he can play 15 moves in 3 minutes plus increment without making a mistake? Do you think he can do that? No, I don't. Against Gukesh? No, I think Gukesh will win very soon. अरे nice guess Ninja bhai. वो ध्यान रखना एको का. Let's go. Gukesh might be the first guy to win this. Ninja bhai ने बोल दिया है तो मतलब फिर तो मैं excited हूँ. Come on Gukesh bhai. Let's do it. Will we have player number 3 join the 2750 club? इंक्रीमेंट है, आई नो, बट टाइम देखो भाई. 1 मिनट यूज कर चुका है उस मूव पे ऑलरेडी. इंक्रीमेंट भी कितना है? 15 मूव है ना, 7.5 मिनट है. दैट मींस ही हैज 9 मिनट्स इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट फॉर 15 मूव्स. दैट्स स्टिल लाइक 35 seconds per move. It's not easy. It's not easy against Gukesh. When you are worse.
You also watch by, oh, Bishop D6 played. What will White play now? Oh, sorry. Oh, immediately खेला Gukesh ने यार. 95 time waste ही नहीं किया. Putting the pressure back. Less than 3 minutes for his opponent now. 40 minutes per chat. White and black both will get another 30 minutes. But for now, he has to play 14 more moves. 14 more moves in just 2.5 minutes plus increment. It's getting spicy. अरे मजा आएगा भाई. हेयर स्टाइल तो मस्त है, लेकिन पोजीशन का क्या? लेट्स सी. रंजन भाई, गुकेश हैज दैट पोज नाउ. ये जो पोज है ना, I recognize this pose when he's very confident. विदित नहीं हारेगा भाई. He will draw or win that game. I'm pretty sure. But फिलहाल गुकेश is the focus. This is the pose. Can we have full screen for a second? ये pose है ना गुकेश का. This pose is when he's winning. He knows he's winning. I don't know. I just understand this pose immediately. Immediately भाई है ना, comfortable, एक हाथ ऐसे है लेफ्ट में, एक हाथ ऐसे. This is the pose Gukesh has when he's winning always. So yeah, amazing. Going back to the board now. Let's go. वीडी का ड्रॉ ही होना चाहिए भाई. वो ड्रॉ ही होना था. Pretty obvious to me ड्रॉ ही होगा. So let's go. 1 minute. कौन कह रहा था इंक्रीमेंट है भाई? Less than 1.5 minutes now. This is getting crazy. भाई 14 मूव खेलने, 14 moves. Finally he plays b4. Man. And यहाँ पे b5 is a great move apparently. That's a good move. Rook b8 is a good move to start preparing an onslaught on the king side. भाई बिशप पेयर हमारे पास है, सेंटर हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो समय हमारे पास है. तुम्हारे पास क्या है भाई? लेवी को तो रख लेते. क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है भाई. He can repeat to gain time. भाई कैसे रिपीट करेगा भाई? कहां क्या चलोगे रिपीट करने के लिए? तुम देखो वो टाइम कितना ले रहा है. We might just be about to win this game, chat. गुकेश ने बैठने का स्टाइल भी कैजुअल है. एग्जैक्टली. गुकेश के बारे में कुछ भी कैजुअल नहीं है भाई. ही इज लाइक भाई अपन जीतेगा जीतेगा, तुमको जो करना है कर लो. ये गेम तो अपनी है भाई. डिसाइड कर लिया उसने अब उसके पोस्ट से. Nothing is going to change that now. Come on, come on, come on. You can do this, Gukesh. थोड़ा फास्ट नहीं, अच्छी मूव खेलो जहां पे ओपोनेंट को सोचने में टाइम लगे बस. He plays f5. Are we going to see a potential attack now? He's launched with f5. This is going to be extremely sharp. Gukesh starts attacking when the opponent has no time. This is a beautiful time to start attacking. If I was his opponent, I would be so angry right now. तब से अटैक कर सकता था. अभी करना था तूने भाई, अभी करना था तूने. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया भाई. चैट स्ट्रीम लाइक करो जल्दी से. Let's do a challenge. If we get to 500 likes in the next 7 minutes, that is 11:05 तक, I will give out samosas to one more person. एक को already दे चुके हैं. Let's go chat. 120 likes, 113 likes in just 7 minutes. Vidit drew his game. Update. Vidit Gujrathi has drawn his game. I think that's a great update. It was not looking good for VD actually. It felt like a draw honestly. Yep. यहाँ पे rook g2, bishop g2, f4. VD has drawn decent result. SS bhai, where are the $100 bhai? Mr. SS, where are you? Where are the $100? We need the $100. गंदा लिखने के लिए करते हैं बैन भाई. अगर कोई अब्यूज करेगा तो उसको फिर टाइम आउट दे सकते हैं भाई 1 मिनट का, अगर अब कोई अब्यूज करेगा तो. अदरवाइज इट्स ओके. सो गोइंग टू द गेम, लेट्स गो. So we have Gukesh's game. यहाँ पे खेला है Queen E2. That feels like a optically a good move, but as we can see, Queen यहाँ पे कुछ कर नहीं रही. E5 pawn is actually defended. So what is the plan? Maybe I can play Rook B E8, put the Rook opposite the Queen, and Queen सोचेगी मैं आई क्यों यहाँ पे भाई. आज समोसे बटेंगे बिल्कुल बिल्कुल. Vidit Prague Masters 2024. Let's see. फिलहाल he has 2 draws and he will have black tomorrow. By the way, he plays Gukesh tomorrow. Oh, that would be crazy. That is crazy. Tomorrow it is Vidit against Gukesh, Prague against Rapport. Man, that goosebumps aa rahe hain, and that is going to be a crazy match. और उसके अगले दिन Gukesh against Nodirbek.
उसके अगले दिन प्राग अगेंस्ट विदित, उसके अगले दिन प्राग अगेंस्ट नोदिर्बेक, उसके अगले दिन भाई ये तो चलता जा रहा है भाई, गुकेश अगेंस्ट प्राग। मैन दिस इज अ क्रेजी लाइनअप यार, क्या टूर्नामेंट बनाया उन्होंने, बढ़िया बनाया यार। And he plays rook b8. He plays rook b8. Rook c1, trying to get a passed pawn. Decent move. Let's put the bishop back on b8 ताकि c5 पे. If c5, then we can just take the knight now. So let's play bishop b8 quickly, Gukesh. Let's go. 43 seconds for white. 43 seconds for white. He has to play 11 moves in 43 seconds plus increment. 11 moves हो कितना हो गया? 5.5 यार. It is 6 मिनट में 11 मूव खेलने हैं विदाउट इंक्रीमेंट। कितने प्लेयर है? 10 प्लेयर है भाई। एसएस भाई $100 का वेटिंग भाई, वो वेट कर रहा हूं मैं यूपीआई का $100 का भाई। वेटिंग फॉर दैट। वेटिंग, नोटिफिकेशन नहीं आया मिस्टर एसएस, आई एम वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। वेयर इज द नोटिफिकेशन? कांट सी इट। Vidit Prague Master 24, yeah, it is possible भाई, but फिलहाल के लिए it feels like Prague Gukesh are the ones pushing forward. Oh, by the way, 15 मिनट गुकेश के पास, ये होता है चैट फास्ट खेलने के बेनिफिट। You can see how Gukesh in this critical moment could take 10 minutes for a move and not be stressed. और white बेचारा गुकेश के टाइम पे भी स्ट्रेस में है। If white wants to go to the washroom, he cannot go to the washroom. Just saying. Bishop b8 played. He cannot even go to the washroom. Hold के रखना पड़ेगा. That's how low his time is. You know, this is not good news. Come on, let's go. We're about to win this game. मुझे feeling पूरी आ रही है भाई. निरंजन भाई, are we going to win this? What do you think? Come on, निरंजन भाई. हरी भाई तो लोकल हीरो ना, वो क्यों नहीं खेल रहे पता नहीं। We are winning this. Oh, 9 seconds. Dude, what is he doing? 9 seconds. Oh, he played the move on 7 seconds and he played a mistake. 7 seconds पे खेला है. Now chat, he has to play 10 moves in just his increment. There is no time. Only increment, 10 moves, 30 seconds per move, straight and question mark. Now he can play b5. Challenge this. He can challenge. You cannot take because of bishop d5. Come on. नंबर भेजो भाई, भेज रहा हूं। अरे सच में भेज रहे? नहीं भाई, इट्स ओके। सच में भेज रहे भाई। नहीं भाई, keep the $100. You know what? Donate $100 to somebody who's poor. Go and donate 100 क्या, $10 donate कर दो भाई. Donate $10 to somebody who you think is poor. If you see somebody on the streets, do that. That will be better. सच में नहीं मांग रहा था भाई. But ठीक है भाई, अच्छा है. Vidit proved you wrong. By the king g1. Come on. Let's play b5. Come on, chat. I think we are about to win this game. Gukesh will... Wait, will he cross Prague? No, he will not cross Prague, right? Because Gukesh 2746 है, 2751. भाई calculation करनी पड़ेगी निरंजन भाई. Is he going to cross Prague now? Will he become the new India number 1? रुको भाई. Fide calculator. Doubt लग रहा है, doubt. Let's assume कि Prague is going to draw, ठीक है? Which is not true. Let's have a look first of all कि Prague की गेम में हो क्या रहा है. रुको, round 2 है ना? मैं round 3 पे चला गया. Round 3 में Prague की गेम में right now knight h6 played, knight d2, and yeah, he's thinking, so it's equal right now. Let's assume Prague draws. So 2747, 2715, score draw, k factor 10. Chat मैं calculate कर रहा हूं. He will lose 0.5. So he will go to अरे भाई add क्यों आ रहा है मुझे? He will go to what? 2751.5. ठीक है? And now we calculate Gukesh. भाई कितना डेसिमल में कैलकुलेट करना पड़ रहा है भाई. क्या जमाना है, क्या कंपटीशन है भाई. आईआईटी वाला कंपटीशन लग रहा है मुझे यहाँ पे. So 2743, he wins against 2630 and he wins and he gets k factor 10. Rating change plus 3.5. So plus 3.5 में no, Prague will be India number 1
but Gukesh will cross 2750. So we will have 3 Indians who would have crossed 2750 at the same time. If VD wins tomorrow and Arjun wins tomorrow, who's playing Shenzhen Masters, then we might have 5 tomorrow. So yeah, crazy there, man. Kya hi crazy chal raha hai bhai. Gukesh having a deep think, chat. Deep think by Gukesh. VD has drawn today, bhai. औकात है $100 बेचने की. भाई औकात की बात नहीं है भाई, इंटेंशन भी होनी चाहिए ना. औकात हो या ना हो, चेस में भी मैथ्स निकल ही आई भाई. मैथ्स तो आती है भाई, मैथ्स कहाँ नहीं है भाई, तभी स्कूल में पढ़ाते भाई ताकि तुम कैलकुलेशन कर पाओ ये सब. Can we have Gukesh's camera भाई, रंजन भाई? I want to have a look at that because बहुत टाइम प्रेशर है ओपोनेंट के पास अगले 10 मूव के लिए. They basically have no time. Let's go chat. We are all set for this crazy match to finish. ओपोनेंट की शक्ल देखो, उनका सर जो हिल रहा है ना वो ऑटोमेटिक क्या, उनके आउट ऑफ कंट्रोल है एट दिस पॉइंट. मैथ नॉट मैटिंग. भाई मैं स्लो नहीं हूं, मेरा साबुन और मेरा बोर्ड दोनों बहुत फास्ट है. कैलकुलेट करते हैं फीडे की वेबसाइट से, मैंने कर दिया है. लकी जडेजा जी कैसे आप? रविंद्र जडेजा जी तो बीसीसीआई से A+ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आज तो जडेजा जी लकी हुए ही हुए. If Prague loses, then of course, then he becomes India number 1. But we are not hoping for that scenario. Prague की game dead equal है. We are going to focus on this game for the next 10 minutes. Gukesh plays Bishop F7. Not the best move, but also not a bad one. ये question mark मत जाओ. It's a decent move. Defends the pawn via the rook. कल को E4 can be an idea long term. And this Bishop, oh 16 second. 10 move खेलने हैं. 12, 11, 10. Can we go to the board? Can we go to the board? भाई टाइम देखो. Queen D2 played. Let's go B5 Gukesh again. Let's threaten this. How about 2 + 2 = 5? 1 कौन मिसिंग है? चैट तुमने चैलेंज नहीं किया यार, मैं तुम्हें कहा था 500 लाइक करने को. I'll give you one more challenge chat. 11:07 हो रहे हैं, 11:15 तक. If we get to 550 likes till 11:15, then one person in the chat gets samosas, garma garam samosas with chutney to have. Let's go bhai. 550 likes till 11:15. Let's go. बंदे का सर भी हिल रहा है भाई. Bishop P6 played very quickly this time. Very quickly. I think Gukesh noticed his mistake. Can we go to the board again? Not this one, yaar. I think with my face in it, unfortunately. थाई भाई को हार मान लेना चाहिए भाई. क्लॉक की तरफ नजर मारी उन्होंने, फिर से नजर मारी. And he plays what? He plays Queen D1. Chat, look at this. He plays Queen D2 and Queen D1, and he is hoping for some sort of repetition. I don't know. Let's go B5. Gukesh has seen this now. Also F4 possible with the intention of grabbing H3. So another tactic, but I do like B5 more. Let's go Gukesh. Chat, opponent के पास हर move के लिए 30 सेकंड है. Yes, VD has drawn. Prague is worse. One brief look at Prague. क्या बात कर रहे हो? By the way, rook E3 played. Maghsoodloo finds the best move, and now Queen E6 and Queen to H4. Apparently, chat, Prague is, well, yeah, it's not better for him anymore. And Maghsoodloo has his own chances with the excellent F5 square. Rook can come to F5 later. Knight can come here. Pressure on F6. So Prague के लिए इतना आसान नहीं है अब. King has a safe square on H2. So फिलहाल के लिए game very complex. 6 और 5 मिनट है. Blunder कभी भी आ सकता है. Going back to the game of Gukesh. Let's see what happens here. 600 की watching chat. Let's go. Vijay streams 50 viewers. 500 some of the youth of India's head is good. Doesn't matter, bhai. We are happy for these 600 people. Glad to have you. एक दिन 6000 भी होंगे भाई. Don't worry. It's a matter of time. समय आता है तो कुछ भी हो सकता है भाई. समय के साथ कुछ भी हो सकता है. Come on, let's go. Gukesh bhai, let's go B5. Try to undermine this knight. Gukesh also has less than 10 minutes now. 9 minutes 55 seconds. Opponent तो literally कुर्सी में भी नहीं बैठा, हवा में खड़ा है वो. I am pretty sure वो तशरीफ सीट पे रख के भी नहीं बैठे.
वो हवा में लटक रही है अभी literally in this moment. Queen f7 played. Okay, interesting idea. Putting pressure here, maintaining the pressure, and also maybe Queen g6 on a good day and f4 and taking on h3. Who knows? If white takes, of course. समय लोडिंग, टाइम इज रिलेटिव, आई एग्री. आप जीएम का अगले जन्म में भाई. फिलहाल हम ओ बाय द वे ही प्लेड समथिंग, रुक c2. वाइट ना इस टाइम पे बस मूव्स खेल रहा है ऑनेस्टली. याद रखना, गुकेश शुड फाइंड वन क्रिटिकल मूव हियर. अगर वो भी फास्ट खेलेगा ना, कुछ कमिटल मूव नहीं खेलेगा, सो व्हाट विल हैपन इज कि ये 10 मूव खत्म हो जाएंगे एंड देन व्हाइट विल गेट मोर टाइम एंड देन ही माइट स्टेबलाइज. सो व्हाट वी डोंट वांट इज व्हाइट को एक और मौका मिले. वी वांट टू फिनिश हिम राइट नाउ. गुकेश, लेट्स गो विद f4 और f5, सॉरी b5. Come on Gukesh, you can do this. Vidit has drawn the game. We will grow with time, don't worry. Exactly, we will all grow by, I'm pretty sure. कुछ लोग 4 फीट के रह जाएंगे, वो सिंगल रहेंगे लाइफ भर, बाकी everybody will grow, don't worry. सेकंड चैनल कब रिवील कर रहे हो? सीक्रेट चैनल वो करेंगे 100K पे रिवील भाई. अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट करेंगे रिवील. यही करूंगा रिवील वो भी मैं. Prague game will go. By the way, one look at Prague's game, just in case. What's happening there? Oh, Prague has made a mistake. Prague has made a mistake. Maghsoodloo is better. If Prague loses, Gukesh will become the new India #1. We are going to have this. Who knows? Let's go to Gukesh now. We'll come to Prague's game quickly. Let's see. Oh, by the way, 8 minutes for Gukesh now. On the wire, man. Look at Gukesh. They are intense. Prague be tense है, but let's go to Gukesh's game. Let's keep the camera Gukesh for now. We'll come to Prague. BCCI of chess. भाई हम भी बनेंगे BCCI, हम ICC बनेंगे भाई. We are the ICC of chess. Let's go. विवेक गुके ने नहीं देखा है भाई, अब देखेगा भाई, अब देखा, मैंने बोला ना अब देखेगा. Come on, come on, come on, come on, come on. Parham has less time, won't find it. I hope so he doesn't. I really hope so he doesn't. Chat, by the way, yeah, Prague's winning streak will be broken if he loses. By the way, chat, you have 3 more minutes to get to 550 likes if you can do it for a samosa challenge. India #1 change होने वाला है लगता है bro. बिल्कुल भाई, हर गेम में. And क्या बोला था मैंने? B5 played. Let's go. Parham mistake. Awesome. Nice. B5 played. And Gukesh has struck at the correct moment. Opponent के पास seconds है. He plays rook c2, best move, but still, yeah, it's looking like a tough struggle here, chat. Gukesh won't be. अच्छा हाँ, Vishy भी है. You are right. You are right. You are right. You are right. Vishy will be #1. Gukesh #2 with decimals though. Decimals का difference होगा. You are right. But as Prague has come back, as chat said, Maghsoodloo ने move नहीं निकाली. Knight f5 खेलना था यहाँ पे. And you know, this side is of course a strong piece, but rook f5 खेला उन्होंने, and that's a question mark. Now you can actually play queen e7, and then you can try to bring this knight to e6. Maybe that's the plan. And this knight will go to f4 and completely block this king side, जो white पूरा dominate कर रहा है अभी. हम center और queen side dominate कर रहे हैं, but वहां पे king नहीं है. That is the problem. VD has drawn, by the way, against Nodirbek. That's the update on the VD game. So he has 2 draws so far. Let's go to the game of Gukesh, जो critical game है. जहां पे rook c8 played. Chat, Gukesh made a slight mistake. Rook c8 is not the best move, and white can now sacrifice. Boom! The exchange. The rook, whatever. And now you can take, pawn takes, rook takes, and white is back in the game. And he has sacked it. He has sacked it. This was a big miss by Gukesh, I feel, because I hope the position is still winning. But the point is, yes, sacrifice is something Hikaru would have played in a second. If you're playing the candidates, Hikaru gets this position. We all know he's sacrificing this rook. So यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है. Does Gukesh understand कि भाई ये position is actually not that simple to convert? We'll get to know soon. And only 4 moves away from the time control now. Only 4 moves. It's not messed it up right now. It's still better, but yeah, white has some counterplay with. Now white has sacrificed the exchange.
but all his pieces are active. The bishop is active, the knight is active, the rook is active, and the queen will be active as well. So, and if you take, for example, let's say I take this pawn, you take, and then the d4 pawn is also weak. You might take on c4, but then, knight to f4, bishop is attacked. If you move back, I mean, you can already see, yeah, it's not possible right now because of, I think, queen f6 and king is on h8. Luckily, मेरे को लगा king g8 पे है. But you can imagine, yeah, थोड़े tactics board पे already दिखने लग रहे हैं, which is not good. Prague sacked a pawn, भाई दोनों गेम ऐसी crazy चल रही हैं. Rook f5, he played b4, मेरा कैमरा भी गया. A takes b4, rook takes b4, दोनों गेम crazy चल रही है. मैं कैमरा शिफ्ट करता हूं तक के लिए. भाई क्या हो रहा है चैट? कुछ भी हो रहा है दोनों गेम में. Rook is strong, knight is strong, bishop is strong, agreed. आप प्लीज प्रेडिक्शन मत करा करो भाई, प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. चेस इज अ कॉम्प्लिकेटेड गेम, इट गोज बैक एंड फोर्थ. जैसे ही टाइम प्रेशर आता है, ब्लंडर आने स्टार्ट होंगे, चाहे हम प्रेडिक्शन करें या ना करें. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी दिस वे चैट, ऑलवेज. Come on, Gukesh, come on. Put some pressure. You can do this. You can manage this. B takes c4 played and knight f4 immediately. Not the best move by white. Luckily, white भी time pressure में उन्होंने best move नहीं खेली, and this allows Gukesh another chance. Just maybe he might get another chance now. Camera set हो रहा है, camera set हो चुका है. Opening it up. Everything should be soon, within just a few seconds. And I am back, Ninjan bhai. Come on. थोड़ा सा ऊपर हो गया, बस नीचे कर देते हैं इसको. सीलिंग क्यों देखनी है भाई? या बढ़िया, ऑल बढ़िया भाई. Come on, let's go. Bishop d7 played, by the way. He found the best move, by the way. Knight f4, bishop d7 played. He found the best move. Chat, I'm still hoping he wins this. Chat कहाँ पे? Gukesh is not well, really? I hope he's doing well. जो भी उसका ख्याल कर रहे हैं, please take care. You want him in best shape for this tournament and the candidates. Knight f4, bishop d7, pawn takes, rook c4. He can now take with the queen. The queen can come in the game. Let's go. And we have a pass pawn, potential pass pawn. Chat, by the way, 38 moves have taken place. 2 more moves to go before the time control. Only 2 now. Prague has lost. What? No way. By the way, update, Richard and Mateusz Bartel have drawn. What? No way, यार, no way. कुछ भी. Queen g4 कहां से हारा भाई? कहां से, कौन से एंगल से हार रहा है भाई? Rook bb8 back. Let's go. Chat, white का थ्रेट है rook g3 and queen g7 में. तो पीसेस को वापस लाने का टाइम आ गया भाई, जल्दी से. Let's go back. Rook go back quickly. Prag भाई please. Chat, टाइम देखो, दोनों के पास 2-2 मिनट है. This is getting so intense. Vaishali has lost. Challenges में she lost a game. Not a good tournament for Vaishali so far. She lost both her games, by the way. I'm hoping she comes back. She will. Of course she will, man. We know how strong she is. Come on, Prague. Going to the game of Gukesh. क्या चल रहा है? By the way, he got it. He took with the rook. Let's focus on the Gukesh game now. Rook takes c4. Queen c4 is apparently better, chat. That was a better move, but rook से मारना. Games, losing streak नहीं, मतलब unbeaten streak है 47 games. समझ गया. Come on. Chat, stream like करो भाई. Let's get to 500 likes quickly. If you're here for the first time, do subscribe. Let's go. रोज करेंगे stream. बड़ा मजा आने वाला है. Good to see you have water nearby today. I do. About to finish though. So hoping the match also finishes soon. Come on. 41 seconds for Thai Dai Van Nguyen. 36 seconds now. He has to find 2 more moves.
Chat, let's make your predictions. Gukesh game. He wins, draws, or loses. Come on. Spam kar do. Let's see what happens. By the way, Bishop F attacking the rook. Let's go back. Let's go back. Rook attack करने के लिए ताकि rook move करे तो वो प्यादा मार पाए. That is the strategy here. Come on, come on, come on. बिल्कुल आठव जी वापस आ गए सब लोग. At some point, all Indians are better. I agree. That's kind of the beauty of chess, beauty or whatever. Wins. Kya wins, bhai? Prague has less than a minute. Kya baat kar rahe ho, bhai? By the Queen G4 ke baad, he has 6 seconds. What? Oh, bhai sahab, 3 second pe game kheli hai. Kya wins, bhai? Kya wins? Prague ne 3 second pe move kheli hai, bhai. 3 second pe. Rook G3. Queen E7. Mate का threat है भाई. Queen E7 mate का threat है भाई. Come on. Come on, come on, come on, come on. 18-17 सेकेंड. Come on, Prag भाई. नर्वस आ गया हूं मैं. अरे 8 भाई भाई. Queen D7 slight mistake apparently. Queen G4 and white can put pressure. Oh, question mark दिख रहा है. Question mark दिख रहा है. Question mark दिख रहा है. I don't like it. I don't like it. Chat, chess is so harsh. पता है यूजली टेनिस में क्या होता है, अगर आपने एक स्कोर मार लिया वो पॉइंट आपका है. सो ओपोनेंट को पूरा कमबैक करना है, बराबर पॉइंट तो करना ही है. चेस में क्या है कि भाई एक गलती है आपके सारे पॉइंट, सारा गेम मींस नथिंग. You not looking at my comments. I'm looking at your comments, but बिल्कुल I'm looking at your comments. Queen D7. Oof, oof, oof. 2.5 minutes for Maghsoodloo. इसको दिख रहा है भाई, तू पैनिक मत हो भाई. पैनिक होना पड़ेगा ना यार. They can't hear us. Don't worry. They will not get panic because of us. Come on, come on, come on, come on. Gukesh game. One look at Gukesh game. Let's have a look. By the way, Bishop का कुछ खेला नहीं है Gukesh ने. He has 4 minutes to play 2 moves. Should be okay. Should be very comfortable. He's slightly better still. Exchange up hai. Going back to Prag's game because that is the critical one. What's happening here? Come on, come on, come on. भाई थोड़ी देर चुप रहो भाई. काहे चुप रहूं भाई मैं? कैसे चुप रहूं भाई? इतना ऐसे वो हो रहा है भाई. एंजाइटी हो रही है भाई. आज इंडिया नंबर 1 चेंज होने वाला है, मुझे फीलिंग आ रही है. फिर से इंडिया नंबर 1 चेंज होने वाला है भाई, मुझे लग रहा है. Come on, come on. Rook takes F6. बाप रे, ये क्या चाल है? I think this would trade queens. I don't think white would like to do that. You will win a pawn, but वो वापस मिल जाएगा black को at some point. E4 is hanging also, by the way. I don't think white wants to trade off queens. It would play into black's hand. By the way, both players have less than a minute. Less than a minute for both players now. दोनों stress में. Oh, look at Maghsoodloo panicking. He knows this is the critical moment. Can he win this? उसके दिमाग में चल रहा है. But can Prague hold this and can somehow he strike back? क्या दोनों हार जाए? Avishya number 1 possible. Regardless, India will have a new number 1 by. oh, हाथ उठाया उन्होंने. क्या खेलेंगे? Both players have 30 seconds. He plays King H1. Not the best move. जैसा तुम देख रहे हो, both players are making mistakes. दोनों प्लेयर ब्लंडर कर रहे हैं हर मूव पे. कॉल समय ऑफ कमेंट्री. बिल्कुल भाई, समय हमारा ही वेट कर रहा है बस. उनके काम धंधा नहीं है इसको. Prague will hold, no issues, hoping for it. 15 seconds. Come on, come on, Prague, come on. Queen E7 खेल दो, normal move है. He plays knight to E6. There's some sort of tactics here, yaar. Oh, it's a blunder. It's a blunder. He has blundered the game. I felt, मेरा intuition कह रहा था कि it is a blunder. He can't believe it. He can't believe it. Can we have full screen? Prague cannot believe it. He has blundered the game. Oh, he is mad at himself. He cannot believe it.
Look at the board. Chat, rook takes f6 is the brilliant attack here. The knight is pinned. If, for example, rook takes f6, then there is queen g8, rook g8, rook g8 mate. He blundered back rank mate, and Prague has to resign. Oh my God, what a blunder. Prague has lost. He loses the Indian #1 spot, and Vichy gains it back. It's not over, chat. We go to the game of Gukesh. Abhi ask, can Gukesh gain the spot now? Prague still sitting at the board. He's moving his pen around. He cannot believe what he has done. Look at his hands. He's still calculating in his head what went wrong. He cannot believe it. Asking his opponent, yeah, that's a weird streak has been broken. 60s, I think 47 game streak has been broken for Prague. Let's go to Gukesh. It's not over. It's not over. Let's go to Gukesh quickly. Nanjan bhai, let's go to the game because the game is only sharpening up. Let's have the board on the screen and let's see kya chal raha hai. Yup, we have the board and Gukesh ke camera laga dete hain. This is the current position, chat. And look at this, 40 moves have passed. Just now, players have gained time on the clock. As of now, let's count the material. Black has an extra exchange, but white will take on d4. So 1, 2, 3, 4. So white will have, a knight and a pawn for a rook. So black has to be better. So Gukesh is better, but he's not completely winning, let's say. So that is the evaluation right now. White will take on d4. He will take the pawn. Let's see क्या होता है. Chat poll डाल दो अपना. Chat में spam करो. बताओ मुझे. अच्छा. Nice. Anyway. Come on, bhai. Van ji ko haraya jaye jaldi se. Prague will come back stronger. We all know, man, he will. And this should be an advertisement for not falling into time pressure, man. This should be pretty obvious. Don't fall in time pressure. There is no point in playing a 50-move long game for 6 hours and losing it all in one move. Yeah, there is no point. So let's go. Let's go. Gukesh wins. Okay, let me do a poll. ऐसे कैसे भाई? ऐसे कैसे यार? विदित का तो I think draw हो गया. 16% people were correct. So let's do a new poll now. So it will be Gukesh. काफी interesting poll है भाई, बहुत important. Gukesh versus Thai Dai Van. So Gukesh wins and Thai. Okay. So chat, let's go. Let's see कि क्या पोल करती है चैट. देखते हैं कितने लोग कहते हैं कि जीतेंगे. Let's go quickly. India #1 changing every day. बच्चों के डायपर से फास्ट तो भाई इंडिया #1 बदल रहा है. Every day we have a new world champion भाई. New India #1. Vidit is playing safe. अरे भाई safe खेलना चाहिए यार. Only one option है. 2 ऑप्शन है यार. Gukesh wins दिख रहा है मुझे पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन भी दिया है. So by the way, come on भाई. Thai Dai Van Nguyen जी बहुत सोच रहे हैं, डीप सोच रहे हैं, बट ऑनेस्टली उनकी पोजीशन लग रहा है दम नहीं है यार. दम नहीं है. मतलब if I was black, I would be partying right now. मुझे किसी ने अपडेट किया है कि वैन का नाम इट्स वान, इट्स नॉट वैन. ओके, थैंक यू फॉर द अपडेट. Indian chess future is bright, chill. It is bright भाई. वो तो है. I agree. Dictatorship chat. Maybe गुजराती की वीडियो देखी है मैंने भाई. तो maybe that is the reason. Anyways, विक्स की गोली खिंच भाई. विक्स तो यार
मैं डब्बे में रखता हूँ विक्स भाई, लिटरली इतना जरूरत पड़ती है. Chat update on the results. Yeah, anybody joining in? सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं. David Navara drew against Vincent Keymer, and Richard Rapport and Mateusz Bartel are still playing. So those are the two important results. And Prague has lost to Maghsoodloo in a one-move blunder. Knight to e6 and rook takes f6. Idea being, if you don't grab the rook, I mean, you're losing knight, rook, sab kuch. If you grab the rook, there is queen to g8 check, rook to g8, and rook to g8 mate. So that was the blunder basically. And Prague has lost to Maghsoodloo. Vidit has drawn against Nodirbek. He was at one point really, doing well, but opposite color bishops always have that tendency to draw. Yeah. So final game, it's Gukesh against Thai Dai Van Nguyen. Let's go. I love democracy. Even I do, यार. Even I do. टिक्कू भाई वीडियो क्या हुआ? ड्रॉ भाई अभी बताया मैं यार, अभी बताया. Okay, all set. Let's go. Whew, man, this is going to be intense. Final few moves. अब बहुत deep. यार ये नगियों जी बहुत सोचते हैं यार, बहुत ज्यादा सोचते हैं, नहीं? Come on. Why is there only one option in the poll? Yeah, there are two options. एक सेकंड, आपका नाम क्या है? उसामा. अच्छा, एक सेकंड डर गया था मैं. Next day's matchup, by the way, कल की पेयरिंग खतरनाक है. I must tell you the pairings. We have tomorrow the cracker of a match. Gukesh Dommaraju against Vidit Gujrathi. Gukesh, who will most likely be India number 1 going into tomorrow and leading the event with 1.5. He will play Vidit Gujrathi, who has 2 draws so far, and if Vidit wins, he becomes India number 1. ये dance चलता रहेगा. And second match है Prague against Rapport. So ये दोनों गेम बहुत इंटरेस्टिंग है. भाई आप जाके 2-3 मूव करके आओ, बहुत टाइम ले रहा है यार. मैं अगर मूव चलूंगा ना तो बेचारा फिर बहुत जल्दी हार जाएगा, तो मजा नहीं आएगा बेचारे को. So let's wait for it. Let's wait for him to make a mistake. Did you see Vidit dance video? What? Vidit dance video with Vishy? ये कब आई भाई? That is like a national treasure. देखना पड़ेगा. गलती से चैट में, अबे यार, विदित प्रग का कल मैच नहीं है, विदित गुकेश का है. Actually, वही 3 इंपॉर्टेंट गेम्स है honestly. विदित प्रग, गुकेश प्रग एंड विदित गुकेश. ये 3 गेम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस ऑफ दिस टूर्नामेंट, बिकॉज यही 3 कैंडिडेट्स खेल रहे हैं, बाकी तो खेल नहीं रहे इनमें से. सो ये तीनों गेमों में कौन जीतेगा विल रियली डिसाइड व्हाट हैपेंस इन द कैंडिडेट्स. आई फील. व्हाट्स योर टाइटल? हैंडसम? नहीं, आई मीन NMCM. Will Gukesh be 2750, 275 wins? He'll be 2750. He will cross 2750. ठीक है भाई. आगे से प्लीज assumptions मत लगाना भाई. assumptions हम कहाँ लगाते हैं यार? हमने क्या assumption लगाया भाई? क्या लगाया हमने assumption में, वो तुम बताओ. कुछ हमने impractical assumption लगाया है? बहुत practical चीजें करते हैं यार हम लोग. We are very practical. No bro, he did it on purpose. Who did what on purpose भाई? भाई मेरे को चेस में इंप्रूव करना है, बट हार बार जाता हूं, तो क्यों स्ट्रेस भाई? जब लिटरली प्रग ने एक मुंह में गेम दे दी, तो आप क्यों ब्लंडर का स्ट्रेस ले रहे हो यार? आई वुड से प्ले चेस, एंजॉय चेस, थोड़ा सीखो, गेम एनालाइज करो यार. एनालाइज योर गेम्स, दैट्स ऑल दैट्स रिक्वायर्ड. सॉल्व टैक्टिक्स, एनालाइज योर गेम्स, बस. छोड़ दो किताबें कोर्सेज अगर नहीं लेना है तो. दैट्स सिंपल. Gukesh is the future India. Future of India. अच्छा ओके, गॉट इट. भाई कुछ तो चला यार, कुछ चला. नहीं, कुछ नहीं चला. ओके, माय बैड. भाई गुकेश तो सीट पे भी नहीं है. आई थिंक थाई दाई वान नग्युएन इज वेरी काइंड. गुकेश सीट पे भी नहीं है, तब भी वो चल नहीं रहे. कह रहे मेरा ओपोनेंट आएगा तभी चलूंगा मैं. विशी भी नंबर 1 है. परम लीडिंग एट नंबर. विशी कहां से नंबर?
Most unstable thing in the world is world India. I agree. Yeah, I saw that tweet. Gukesh hasn't come back for 10 minutes. भाई opponent चल ही नहीं रहा है. वो दूर से देख रहा होगा भाई कि चल ही नहीं रहा है बंदा है, क्या हो गया इसको, चल ही नहीं रहा है. What the stupid one-sided question. One-sided क्या है भाई? 200 लोगों ने वोट किया है, आप भी वोट करें. Yeah, I don't know, man. There is something magical about such a camera angle. There's something magical about this camera angle. It just looks more intense and more real. I don't know why. Niranjan bhai, why do you think that's? मैं कल भी पूछा था आपसे, but I don't know why this camera angle. Can we go back to the old camera angle for a second? I want to compare. Let's have this full screen. मैं पूरा यहाँ पे वो डायरेक्शन कर रहा हूँ भाई. Let's have full screen. Let's have the opposite वाला, like दूसरा वाला जो है फ्रंट से कैमरा है, जो वहां में दिख रहा है वो सांप की तरह ऊपर आता हुआ. हाँ, this camera angle feels, even though it's closer, it feels less real and less like, intense. Then go back to that one. I don't know, this feels more intense. I don't know why. Maybe I'm stupid. वो तो मैं हूँ ही वैसे, but still. मूवीज का असर होगा भाई. मूवीज में, चेस के मूवीज में, क्वींस गैम्बिट में सब वैसे दिखाते हैं. Oh, maybe you're right. Maybe you're right. मूवीज का सर एक और कैमरा लग रहा है यहाँ पे, दिख रहा है हमें कैमरा लगते हुए. वो कैमरा किस पे टंगा है यार? ये मुझे वो इलॉन मस्क का वो चार्जिंग वाला मुझे याद आया उससे. वो टेस्ला को चार्ज करने वाला जो वो था. मस्त है अरे कैमरा का वो ऐसे वो है ना. ठीक है, let's go to the board. Let's go to the board. Let's go to the board. Gukesh is back, I think. Yeah, he's back. He's back. Again, I think the only bad thing Gukesh has done in this round is having tea over coffee. That's the only thing. Baki to he's been playing almost perfect chess. ये वियतनामीज भाई ने डिफेंड अच्छा किया है. ये वियतनामीज का थोड़ी है ये भाई, चेक रिपब्लिक का प्लेयर है भाई. वियतनामीज प्लेयर कहां से हो गया यार? मैं भी कंफ्यूज हो गया, वियतनाम से कहां से आ गया बंदा. अब तो उस गेम से भी विन की कोई उम्मीद नहीं है भाई. जीतेंगे भाई, जीतेंगे. इंडिया नंबर 1 हैज टू बी 2750 प्लस. एंड हाउ लॉन्ग विल विशी बी नंबर 1 मैन? नातिक भाई आप चले गए और देश पीछे रह गया. देश को आपके यहां आने की जरूरत है. यहां पे रहे चैट में प्लीज और लाइक करें. तुम नासिक के जा रहे हो? नासिक में यार था मेरा मन, बट बिकॉज प्राग मास्टर्स है आई कैन नॉट डू बोथ. सो अब unless Prague Masters gets cancelled midway, I think most likely मैं वहां पर नहीं आऊंगा. वरना मेरा प्लान था कि आते हम कंटेंट बनाते, बट ऑफ कोर्स स्ट्रीम है तो यार दोनों काम कैसे करेंगे? दो काम में क्या होता है फिर एक भी नहीं हो पाता. ये क्या बलनर भाई यार, ये क्या था? व्हाट इज दिस? कम ऑन भाई यार, नाम का बाय द वे ये क्या पता है? इट्स लाइक I'll tell you why Thai Dai Van will lose. I'll tell you why. ठीक है, he had no time for 20 moves. ठीक है, 20 मिनट तक he was struggling and he had some incredible defense. Gukesh made a mistake and he has some chances now to hold. भगवान ने कहा ये लो 30 मिनट एफर्ट के लिए, और थाई दान ने कहा ये लो वापस. तो भाई इतना क्या सोचना है भाई? मतलब थोड़ा फास्ट. अभी गेम वापस. यू डोंट हैव एनी मोर टाइम नाउ. लिटरली इस तरह तो एकदम में वापस पहुंच जाएंगे टाइम पे. फायदा क्या होगा फिर मिलेगा? एंड ही प्लेज b5. सो I would say a logical move. Long term white का plan तो यही है, to push these pawns and create a pass pawn. That's how he creates counter play, so to speak, and tries to even win the game, so to speak. But मेरा स्पाइडी सेंस कह रहा है कि it might be slow. For example, back rank थोड़ा चक्कर लग रहा है. Maybe we can play rook f8, rook c1, arrows if I can make correctly. This rook c1. I do think black still should be doing well. And back rank को solve करने के लिए we can always play g6 at some point, or even bishop e8, and it should not be a problem. But it's interesting he did not take the pawn. That's very interesting because he's really trying to push these pawns now. He thinks this ये pawn तो मिलेगा ही कभी ना कभी. Let me not grab this immediately. Let me just push the pawns and create a pass pawn. It could turn out to be, impressive, or could be a complete mistake. Who agrees he is similar to Tanmay? Who is similar to Tanmay?
यहाँ पे कोई भी तन्मय सिमिलर नहीं है भाई. अनिश गिरी का नाम इंडियन है बट वो लेंस खेलता है. बट अनिश गिरी तो ही हैज लाइक दोस इंडियन नेपाली रूट्स नो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. आ गए वापस सीट पे बैठने के लिए. 31 minutes for Gukesh, almost double the time. This should be a okay simple win is like मैं बहुत simplify करता हूँ अपनी शब्दों को, but yeah, Gukesh is really sick. You can see in the camera. Let me have a look now. यार अब yeah, he is having tea. That's a sign. साहब भाई 3 आवर से कमेंट्री क्या इतने की एनर्जी क्या कर रहे हो, कितना कॉफी पिए भाई यार. आधा कप कॉफी पिए थे हम लोग और वो नेचुरल है हमारा. कल पता क्या हुआ था, कल पता नहीं क्यों यार थोड़ा सा मैं एनर्जी कम थी बिकॉज ऑफ वीडियो गेम ऐसी थी ना कि मैं अपने बाकी बाल भी नोच लिए कि भाई वो गेम क्यों खेल रहा है वो. तो वो कल की गेम थोड़ी डिप्रेसिंग थी एनालाइज करने के लिए. एनालाइज तो इज कोर्ट्स बट या व्हाटएवर. आज थोड़ा गेम इंटरेस्टिंग है सारी. मेरी बात हो रही है भाई, मैं कहां तन में लगता भाई किसी भी एंगल से. मैंने बैंक बैलेंस अभी चेक किया है. देयर इज नथिंग सिमिलर बिटवीन तन्मय एंड मी. उनके बैंक बैलेंस से कम 5 जीरो एक्स्ट्रा है. By the way, chat, okay, just to have a look. So, is there a way to save this pawn? That's what I am thinking. So, is there a way? कुछ तरीके से कुछ force कर सकते हैं इसको मारने के लिए d4 immediately. Like, for example, rook d8, just to try and save this. Let's say he takes. कुछ मिला नहीं अपने को. कुछ मिला नहीं. For example, यहाँ पे बाल का कहना है rook c1 is a good move, and that might be a good move, but White बहुत solid है यार. He's very solid. It's difficult to kind of attack his king. I would love a dark square bishop here. Like I would love a bishop on b6 to attack f2. I would be very happy with that. It's very difficult to attack his king. That's the problem. Knight on f4 looks so solid, and I don't really want to play g5. It's extremely risky. I don't hate t, but yeah, it's yeah. तुम्हें तन्मय का बैंक बैलेंस कैसा पता भाई? आई नो द टोटल नंबर ऑफ व्यूज ऑन हिज चैनल. आई नो व्हाट्स द सीपीएम इन इंडिया, एंड आई नो कि स्पॉन्सरशिप के रेट उन्होंने अपने खुद पॉडकास्ट से बताए थे विद क्या नाम था उनका भाई, जो एआई वाले आदमी है वो, क्या नाम है उनका, जो एआई एआई करते रहते हैं पूरे दिन. बड़े मस्त आदमी है वो, नाम भूल गया मैं उनका. एवीटीवी वाले. सो उससे मुझे आइडिया तक मैं अंदाजा लगाया था यार. गुकेश फिर उठते हुए. बाय द वे, देयर आर अदर गेम्स गोइंग ऑन इन द हॉल, बट आई थिंक Masters में I think all games have finished, right? Apart from this one. Yep. 4 results. Prague loses to Maghsoodloo. Only results so far जहां पे somebody has won. David Keymer draw, Vidit Nodirbek draw, Rapport Bartel draw, and ये second draw win होना चाहिए हमारे के लिए. Let's go. G5, what happens? G5 is what you play when there's nothing else. यहाँ पे this is a way to Bar कह रहा है white better है already, and I'm not shocked. But even if white was not better, this is a way to actually lose a winning game or something. This is exactly how you lose. You open up your king. अब आ गया भाई queen d4 check के साथ, and this is how you end up losing. So g5 never ever 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 ever. आप पैसा कैसे कमाते हो भाई? डबल करता हूं मैं. अक्षय कुमार मेरा फेवरेट हीरो है, एंड the favorite documentary I have ever seen in my life is फिर हेरा फेरी. So वहां से बहुत सीखा है मैंने. Okay, he moved his hand, but he didn't play. ऐसा क्यों थाई दाई वैन जी? थोड़ा श्योर होके खेले. What? काका चेस चैनल का स्वागत है. ये क्या है भाई? What does काका mean? He played a move. No, he didn't. Nagyan Bhai loves playing under time pressure, bhai. I think he's the next Grishchuk. Prague streak broken. Yeah, man, it hurt a lot. For sure, for sure. Yeah, now he played something. And he played queen takes d4. What? Niranjan Bhai, answer me this one thing. Am I underrated? My rating is 2186 to be exact. Should be around 2200. वो cheating की वजह से कम हो गई थी. I lost to a couple of cheaters, but maybe that's like 50 points. So my rating is around 2200. Am I like underrated? Ranjay, what do you think? The fact that you are asking me this question itself shows that you are underrated.
I'll tell you why I'm saying this, because मेरे दिमाग में जो logic आ रहा है कि the only compensation I have as white is black का king थोड़ा कमजोर है, he cannot play g5, my king is safe, and it's difficult for black to go on the offensive with his king being slightly shaky. So it doesn't make sense for me to trade queens as white. ऐसा मुझे ला रहा है. Maybe I'm wrong. Please correct me if I'm wrong here, because I could be. ये थोड़ी complex position है. Because now I play g5 आंख बिना सोचे, and guess what? It's the best preference of the engine. Like either I am understanding this position better than the GM, or something is wrong. नहीं, इसका जोक पता है कि नहीं आपको? हाँ, क्या जोक है भाई? मैं जब छोटा था ऐसा मैं सजेस्ट कर रहा था, और वाकई में मेरा जो मैंने सजेस्ट किया था वो अच्छा था. वो इंजन का भी टॉप चॉइस. कुछ बुजुर्ग लोग एनालाइज कर रहे थे, तो मैं बोला ये खेलते वो खेलते, ऐसा 2-3 बार बोला. फिर वो एक आदमी बोला मुझे, ये ना आपकी गेम नहीं, अगर आपका गेम होता तो दोबारा सोचते खेले या नहीं. तो आप दूसरों के पीसेस को सैक्रिफाइस कर सकते हो. जब आपका सैक्रिफाइस आपका पीस का आता है तो हाथ कांपना चल जाता है. ऐसा उन्होंने मुझे बोला. तो द फैक्ट भाई यहाँ पे क्या सैक्रिफाइस किया भाई? यहाँ पे तो प्यादा खाना था. नहीं यहाँ पे क्या है, इफ यू वांट टू टेक द pawn on d4 with your rook, then there are 2 rooks lined up. That is creating a fear in the mind of the white player. देखो, I'll tell you my counter. अगर इतना फियर था तो इतना हीरो क्यों बने v5 खेल के मार देने का था ना फिर एक ही बार में. तो थोड़ा द्वंद विचार होगा भाई, कंफ्यूजन हो सकता है ना. कंफ्यूजन, हाँ कंफ्यूजन हो सकता है. That's true. तो Let's see क्या होता है भाई. Suddenly he feels that pressure is going to be high and time भी slowly down हो रहा है. So let's trade queens and hold solid. I think what he's hoping for ideally is to exchange these 2 pawns for this, and then just hope कि somehow he holds this. First of all, I don't think he'll manage to do this. पहला यही बहुत difficult है. That's the first thing. He will not manage to exchange, the A B pawn for the A pawn. It's not easy to do so. And second, even if he does, it's still kind of losing, I feel. So I don't know what's the plan. भाई ये कोडिंग कौन सीख रहा है चैट में? भाई देखो, एनवीडिया के सीईओ ने बोला कि भाई कोडिंग जावा सीखने का मतलब नहीं है भाई, सी प्लस कुछ भी सीखने का मतलब नहीं है, एआई कर लेगा. तो क्या क्या मतलब सीखने का यार? पाइथन भाई क्या करोगे यार? तो एआई सब जगह, एआई इज टेकिंग ऑल जॉब्स एंड एयरटेल आल्सो टेकिंग आवर्स. He has half the time. Yeah, he doesn't like समय. I mean, he doesn't like time. Sorry, not समय. He doesn't like time actually. उनको पसंद नहीं है. वो क्लॉक पे टाइम देते, कहते ये क्या दे दिया भाई मुझे. उनका ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा है मुझे. He doesn't like time on the clock. Show other games. There are no other games. They are all over भाई. Only game remaining. कल अच्छा है निरंजन भाई. कल क्या है, एक्चुअली 2 ही गेम है. Because 2 Indians are playing, so it's likely it finishes early. Right? भाई एको का देख लेना. AI will not take jobs, dude. भाई Nandu ji, I love your optimism. I really do. I really love your optimism. Love it. By the way, Bishop D3 played. थोड़ा एंड गेम में थोड़ा सा स्किल्स का थोड़ा चक्कर लग रहा है रंजित भाई मुझे यहाँ पे. Because now I can play rook d7 and trade rooks, no? Oh, rook b. अच्छा, bishop is defended actually, but g5. अच्छा नहीं, rook bishop 5 है. Okay, maybe it doesn't work. Yeah, maybe it's my skill set, not his. भाई चैट जीपीटी कोड बनाने के लिए भाई किसी ने सोरा के बारे में देखा था? डिड यू सी टेक्स्ट टू वीडियो सोरा ने जो डाला था उसने, ऑल्टमैन ने, भाई क्या नाम है उसका? भाई खतरनाक था भाई. देख के मुझे ऐसे थर थर कांप गए थे भाई कि टेक्स्ट टू वीडियो इतना खतरनाक है. भाई तुम्हारे जगह स्टॉकफिश ने ले लिया है भाई. स्टॉकफिश तो है ही भाई. स्टॉकफिश तो बेचारा इकलौता इंजन है जो पीछे रह गया भाई. मुझे लग रहा है jobs will get concentrated. Exactly. So some people will have extremely high paying jobs and some will have no jobs. That's the point. Right? Anyways, let's not turn this into a doomsday scenario stream. Let's focus on the chess भाई लोग. Chess में मुझे बढ़िया लग रहा है गुकेश की पोजीशन. I like it. सोरा भाई ओपन है. Exactly भाई.
And as Elon Musk said, open कुछ है नहीं उसमें, but yeah. हाँ, candidates की तैयारी चल रही है निरंजन भाई. Niranjan bhai, would you see robots play chess? If let's say we could have real robot bodies of Stockfish and Alpha Zero and Leela and all these robots, would you see them play chess over the board in a tournament? I would, but उसके अलावा भी कुछ रहना क्या था भाई, थोड़ा entertainment हुआ तो देख सकते हैं. So how about chess boxing then between robots? नहीं, उतना मजा नहीं आएगा उसमें. क्या बात कर रहे हो? Robots fight करें मजा नहीं आएगा? क्या फायदा? Sure. By the way, AI, if you're watching this in the future, I didn't say this. This was Niranjan bhai's idea. He just texted me on WhatsApp. It's not my idea. Please leave me alone. Please don't attack me. If you've taken over the world in the future. Anyways. तो By the way, आपने वो 14 पिक्चर नहीं देखा क्या? रिसेंटली आया रोबोट का लव स्टोरी. रोबोट का लव स्टोरी ये नहीं देखा मैंने यार, ये मिस हो गया बुक मुझसे. आया ना भाई, मस्त है. मैं अपनी लव स्टोरी फोकस करा था यार, रोबोट का ध्यान नहीं दिया मैंने. सॉरी यार, सॉरी रोबोट भाई. AI will not replace you person using AI will. One person using AI will replace 10% not using AI. let's put it that way. Anyways, ये डिबेट बाद में करेंगे भाई, पता लग ही जाएगा हम लोगों को जब हम लोग सारे सड़क पे मिलेंगे. दो साल बाद कटोरा लेके. लेट्स मीट, डोंट वरी भाई, साथ में हैंग आउट करेंगे. उनो और चेस बोर्ड एक संभाल के रखूंगा मैं, साथ में चेस खेलेंगे भाई फिर. एनीवेज, गुकेश में थोड़ा टाइम लेते हुए, आई थिंक what could he be thinking, Ranj bhai? G6 is the most logical move, right? You kind of defend the pawn. Rook B7. Rook D7. Rook D7 also I wanted to play, but Rook B4 apparently. And G5 pe Bishop F5. But there's check actually. King G2. Rook C5. C5. Bishop G4. भाई क्या ही है, पीछे पड़ा हुआ है. Rook D2. And 92 बच गया यार. But okay, now I take B5. So yeah, it is winning actually. But काफी crazy variation है. So it's not easy to see all this, right? Not easy. Force है ना तो देख सकते हैं. Lucy देखा मैंने. What are robots being chess pieces and attack other pieces while taking them? That's possible, but not as entertaining. Rankings we can definitely show. I think Ninja Bhai can prepare it. I will let you know that the क्या standings है. So Parham Maghsoodloo is on 2. He has won both his games. Nodirbek on 1.5. Then you have Vidit, Navara, Rapport, Prague on 1. And then you have Bartel, Gukesh, Keymer, and Thai Dai Van Nguyen. And Keymer on 0.5, and Thai Dai Van is on 0. So if Gukesh wins, he joins Nodirbek on 1.5 in second place, and Thai Dai Van stays on 0 in 10th place. So this is a great opportunity for Thai Dai Van, by the way. By the way, Rook D7 played, yeah, he finds the best move. Yep. I don't think he will trade rooks. Very unlikely. Yep, Rook B4 played. So we will see this crazy variation now. Yep, there's the standings. Yeah, there's the standings. Yeah, Prague का वो 0 बड़ा चुभ रहा है यार, है ना? बहुत चुभ रहा है वो 0. Let's see क्या होता है. And Thai Dai Van फिर से उठते हुए सीट से Rook B4 के बाद I think G5 आएगा. If he has played Rook D7, he will go G5. I don't see him, now being a bit shy, because otherwise White will start pushing these pawns slowly and yeah, फिर वो exchange जाएंगे pawns. Prague का was a sad game. I definitely feel sad कि he lost. And ऊपर से एक move में हार गया ना. It wasn't like he was outplayed. Like मतलब एक move में ही हार गया यार. But that's the point. Chess is so harsh, man. अगर ये तुम हिकारू के सामने कैंडिडेट्स में खेलोगे, वो मारेगा ही मारेगा F6 पे. They will not leave you alone. So it's a harsh lesson, but yeah, it's a lesson. So you have to be careful. Time management का ध्यान रखेंगे अब. Crazy indeed. 14 मिनट और 25 मिनट गुकेश फुल फोकस के साथ बैठे हैं. Only game remaining in the master section, and if my understanding is correct, it should be relatively a simple win for Gukesh. Although yeah, let's see. Gukesh signature pawn move आने वाला है.
Ranjan भाई, do you think like we should have like signature moves ऐसे कुछ जब चेकमेट करने से पहले भाई WWE की तरह भाई कुछ पटाक 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 कुछ कर रहे हैं भाई, मस्त फील आएगी भाई. हाँ भाई, करना चाहिए. मेरे स्टूडेंट्स दूसरे फील्ड्स में है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल में, तो मैं तो छोटे बच्चे जब है उनको भी सिखाता हूँ कि सिग्नेचर मूव अभी से स्टार्ट करो. हाँ, बिकॉज पता क्या है, जैसे वो ओपन करने लगेगा और दूसरा ओपन रिजाइन कर देगा भाई. नहीं 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 नहीं, मत कर मत कर मत कर, नहीं मैं करूंगा, नहीं नहीं मत कर भाई. मस्त रहेगा वो. अच्छा आइडिया. करते हैं भाई. Tomorrow games 7:30 p.m. and tomorrow it's going to be Gukesh against Vidit. VD के पहले black pieces होंगे. We'll have to see how he handles that challenge against the potential new India number one. Actually, Vishy होंगे number one. He will be second, but regardless, the only guy above 2750 among the youngsters. Welcome back, Chirag ji. Checkmate से पहले opponent को argue. That will be fun to watch, but probably कुछ ना कुछ तो फिर legal case बनेंगे. Hikaru is back. Gukesh is back. हाँ भाई, Gukesh is back. नगुएन जी वहां पे स्टेयर देने की कोशिश, मगर दम नहीं था स्टेयर में शायद. यार इनका हेयर स्टाइल मुझे पसंद आया. टिप्स लेनी पड़ेंगी रंजन भाई. हाँ क्या What happens if two, मैं कह रहा हूँ हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है, टिप्स लेनी पड़ेंगी. What happens if two players resign at the same time? But how can they resign at the same time? If one guy is resigning, he would be losing, right? So why would the other guy resign? I mean, unless he wants to lose on purpose, and that would be that is not allowed. So I think it's kind of impossible, right? नहीं वो बहुत वीडियो बन सकता है भाई. कहाँ पे, किसके ऊपर पता है? बहुत जगह है. अरे जगह नहीं, बहुत जगह है. तो बोलेगा अरे मैं रिजाइन करूंगा, ये नहीं 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 मैं रिजाइन करूंगा, मेरी पोजीशन घटिया है, मैं रिजाइन करूंगा. ऐसे एक रील बन सकती है. हाँ, वो बन सकती है भाई, वो बन सकती है. आप उन्हें बनाते हैं, जैसे आप बोलोगे मैं रिजाइन करूंगा, भाई कर ले भाई, तू कर ले. कर ले भाई, रिजाइन कर ले भाई. मैंने करना है, रील भी छोड़ो भाई, फ्री का पॉइंट चाहिए मुझे. मैं बोलूंगा कि मैं रिजाइन करने का थॉट को रिजाइन कर रहा हूँ बस. वाह वाह भाई वाह, ये होता है भाई ट्विस्ट. बाय द वे, G6 नहीं खेला उन्होंने, G5 थोड़ा काम तरीके से खेलने की यहाँ पे टैक्टिक है लगता है. फास्ट नहीं खेले, मतलब G5 से थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता मैटर्स. कैरियर स्ट्रीम करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई. रात को 1 बजे आएंगे हम. मैं सोच रहा हूँ यार, अरे नजमा एक आइडिया है, कोई घोस्ट कॉस्ट्यूम पहन लेता हूँ मैं उस टाइम पे. रात को 1 बजे और अंधेरा कर लेता हूँ, पूरा अंधेरा कर लेता हूँ कमरे में, और फिर स्ट्रीम करता हूँ भाई. क्या फील आएगी भाई, सही में. क्या बोलते हो? डर जाओगे भाई आप. भाई मैं क्यों डरेगी, तो चैट ना जो 10 लोग होंगे वो भी चले जाएंगे. नहीं करने में भी डर लगता है भाई. मैं प्रैंक किया हूँ ना लोगों को. अरे निरंजन भाई तो फ्रैंकस्टर हो. हाँ. बाय द वे, डिड ही प्ले समथिंग? नहीं भाई, खेला A4 खेला हमारा लड़का. एंड नाउ रुक C3 अटैकिंग द बिशप. लेट्स गो. धक्का लगाते हैं बिशप को भाई, निकलो रास्ते से, हमारा रुक ब्लॉक हो रहा है यार. These Indian one changes every week. We should do the things taken. Yeah, but it's good. It's good to have these discussions. No, हर दिन the battle changes. कौन बनेगा Indian number one? मजा आता है ऐसे speculate करने में. Bro, morning. Who will watch? You. I hope you will watch. नहीं कोई मेरी 3 बार नहीं बोला, मेरी तेरी इसकी कुछ नहीं करना भाई हमने. If a winning person overlooks and resigns, and the losing person already resigns at the same time. It has happened with me once. I'll share क्या हुआ था. I was playing a game against some grandmaster, I forgot, some 2350 grandmaster, and I thought I am losing. ठीक है, I thought I am losing, and I am sitting. यार रिजाइन कर देता हूँ यार, मैं क्यों मैं ऐसी ब्लंडर मारता हूँ यार, क्या चक्कर क्या है, मैं क्यों ऐसा बेवकूफ खिलाड़ी क्यों करता हूँ. ठीक है, एक मूव खेल देता हूँ यार, नहीं करना रिजाइन, खेल दी मूव. ठीक है, अब ये मूव खेलेगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, वो ये मूव खेलेगा तो रिजाइन कर दूंगा. ठीक है, मैं सोच के बैठा हूं, द मोमेंट ही प्लेस किंग टू G3 आई विल रिजाइन. ठीक है, बट खेलता ही नहीं बंदा. मैं कह रहा हूं यार 2 मिनट हो गए बंदा खेल ही नहीं रहा है, 4 मिनट हो गए यार बंदा खेल ही नहीं रहा है यार, 8 मिनट 10 मिनट, भाई हो क्या रहा है, बंदा खेल क्यों नहीं रहा है वो. इट्स विनिंग इन 1 मूव.
फिर मैंने डीप सोचना स्टार्ट किया, देखा तो दैट इज अ ब्लंडर. इफ ही प्लेज दैट मूव, आई विन इन वन मूव. So I was legit about to resign in a winning position. So it happens. But at the end नहीं हुआ भाई. कोई टैक्टिक थी बेसिकली, वो टैक्टिक मैंने मिस कर दी थी. अप्रैल में कैंडिडेट्स, आई गेस हिकारू विल विन. नहीं नहीं भाई, हिकारू नहीं जीतेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं. कैंडिडेट्स आई थिंक सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए 1.5 महीना काफी नहीं है भाई. सो आई वुड से नो टू दैट. लेट्स पार्क इट फॉर नेक्स्ट कैंडिडेट्स में भी. गुकेश भाई फुल स्ट्रेस में. टाइम थोड़ा कम हो रहा है उनका, बराबर होने वाला है यार. ये बिशप इज द ओनली स्टूपिड पीस. आई डोंट लाइक दिस बिशप एज ऑफ नाउ. सो पहले इसको हटाओ, रुक सी खेलो. मूव दिस बिशप अवे, लेट इट मूव समवेयर, एंड देन डू समथिंग अबाउट दिस बिशप प्रॉब्ली. कैंडिडेट यान जीतेगा, बस फाइनल हराना उसको. तो अगर दो प्रेजेंट सेम टाइम, इज इट अ ड्रॉ? इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर. जो पहला बंदा रिजाइन बोलेगा, आई गेस ही लूजेस. What are the dates of candidates? 4th April से 21st April. Those are the dates. Why they call goat? भाई अब कैट बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की शॉर्ट फॉर्म है भाई गोट. आपकी रेटिंग क्या है यार? क्या है, लोग मुझे बार बार रेटिंग पूछ के एम्बैरेस क्यों करते हैं भाई. 2200 रेटिंग है भाई. By the way, rook cd8. So okay, the threat is to obviously give us the bishop, please. Of course, Mr. Thai Dai will not give his bishop, so he will probably put it on f1 or on c4, I guess. Then we're going to infinite loop thinking until we real rules in FIDE website. Hey, out of look. Do you code? If yes, what's the language? I don't code by. I don't know how to code, unfortunately. If I knew, I would be. I really wanted to learn though, but फिर मैं सोचा छोड़ो यार, चेस पे फोकस करते हैं. What's happened in Prague's game? मत पूछो यार तुम, वो हो गया, उसकी बात नहीं करते हम लोग अब यहाँ पे. Your hairstyle is so great. क्या भाई, I have had white hair since the age of 9, dude. There couldn't be a worse, fakest, more fake compliment than this. Wow, 22 so great. अरे बढ़िया भाई, लोग 22 से impress होते हैं क्या? Time control candidates, it will be a round robin. Yes, double round robin भाई. Gukesh looking full focused. Finally कुछ चलने वाले हैं. Bishop c4 की तरफ लग रहा है मुझे. I think he'll play bishop c4. Yep, he's going for bishop c4, I think. It makes sense because you also, like, bishop f7 को तुम kind of limit कर रहे हो, so makes some sense. What do you do for a living? हाय राम, क्या क्या सवाल पूछती है रे चैट. हेलो न्यूरल निंजा जी, कैसे हैं आप? पहले आप कैसे हैं ये बताएं मुझे. कोई रेफरल दे सकता है किसी कंपनी में? निरंजन भाई, हमारे यहाँ पे जॉब सर्च भी चल रही है, मैच मेकिंग भी चल रही है, हेयर स्टाइलिंग भी चल रही है भाई. क्या ही है हमारी चैट भाई, एपिक है भाई, मानना पड़ेगा. स्टैंड अप कॉमेडी भी चल रही है भाई. हाँ, एक और ध्यान रखना भाई, hairstyle is so simple. बिल्कुल भाई, when you have terrible hairstyle you don't experiment too much. Although Nguyen Thai Dai Van Nguyen से पूछना पड़ेगा. Your commentary is not interesting. It's okay भाई, everybody has a different style. एक बंदे का कमेंट है सिर्फ भाई, थैंक यू. By the way, bishop c4 खेल दिया है finally. तो but the point is यार, like king is on dark squares. It's still not clear to me कि white का play कहाँ है. I'm really not sure where is white's play coming from. Like I could simply play check. Okay, I can't go king g7 because of check, but okay, some other move I guess. What do I play here?
Again, rook d4 I would love to play, but there is knight e6 again. So ये knight बहुत ही irritating piece है. So do I? That brings me to g5 again. बार बार मैं g5 पे पहुंच रहा हूँ. But g5 there is knight e6 now, so it's kind of a fork. So I can't do it anymore. At least not in the perfect scenario. थाई भाई के अभी ये क्या है भाई? Prague has already lost, man. Prague blundered the game in one move. He was winning, then he was losing, then he was drawing, and then he blundered. So crazy game team. Vidit drew his game against Nodirbek, and we have only one game remaining. That is Gukesh against Nguyen. Come on, Gukesh bhai. सब बेरोजगार है क्या यहाँ पे? कोई किसी कंपनी का रेफरल दे सकता हो? भाई तुम्हारा नाम लिखा है BU भाई. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि तुम्हें जॉब प्लेसमेंट यूट्यूब कमेंट्स में मिलने वाली है? मतलब जस्ट ऐड डू द मैथमेटिक्स. मुमकिन है. Thank you, bhai. But everybody has a style. I can tell you there is somebody who has a watching of 20,000 and there's somebody who has a watching of 2. And there are people in the 20,000 chat who don't like him, and there are people in the 2 watching chat who like him. So it's all about style at the end. So आदत रहती है. Taliban is a Vietnamese as Abhimanyu as Indian and he's Nepalese. No, he might be. But right now he's like, I don't consider Abhimanyu Mishra as an Indian. Like if Abhimanyu Mishra wins the candidates and becomes world champion, yeah, we can celebrate a little bit, but he's not an Indian world champion. So it's the same case here. BU valid resume link भेजो. नाम से जॉब नहीं मिलती टिक्कू भाई. क्या बात कर रहे हो? अपने सरने में कपूर लगाओ और फिर जाओ एक्टिंग ऑडिशन देने, फिर देखो कैसे ओपोनेंट चेंज होता तुम्हारा. बाप रे भाई, सरनेम तो सही लिख देते भाई अगर इतनी रश हो रही है तो. PICK भाई. Didn't take my comment out loud. Taking criticism with a smile. अरे बिल्कुल भाई, आपको लगता है आप पहले हो क्या भाई? ये सालों का काम है भाई, सालों से चल रहा है भाई. अरे टिक भाई भी लाइक यू. अरे यार तुम रुलाओगे यार अब पकले, ऐसे थोड़ी करते हैं यार. वो प्रग की गेम क्या सोचते हैं एक्चुअली. कुशिला he gives a check. So king g2 obviously भाई, obviously king g2. But उसके बाद क्या है भाई? I'm still not convinced. Both sides का plan क्या है? So king g2, I personally would love to pin this. I don't know if this is a move. Like I would just love to pin this. ये कहीं नहीं जाएगा ये बिशप, बस permanent fixed. वही प्लान है भाई. Yeah, I hope so. I like rook d4 now. I like just to pin this forever. Like बस अब exchange करेंगे रुक, वरना बस बिशप दे दो हमें से. सुन लिया भाई उन्होंने, आपका सुन लिया. खेल दिया क्या? Oh, he played it. अरे बाप रे भाई, मैं underrated हूँ भाई. भाई. Anyways, Bishop f7. So Bishop f7 was a consideration, but I think इसमें issue कोई tactics का नहीं है. It's just कि मतलब the position has become a bit drawish. मतलब a5 now, and I will most likely manage to exchange these pawns now. I don't see how you can stop this. Well, yeah, what do you do? Rook b7, just b6, yeah. Okay, it's showing still winning. I'm hoping it's still winning, but in fact, यहाँ पे knight e6 apparently works. Knight e6, rook b8, knight d4. Okay, maybe it's holding like this, but regardless, it has most drawish tendencies than, for example, keeping the bishop. I like this rook d4 move the most because हमने pin कर दिया basically. अब हमें rook exchange करना है जब bishop free का चाहिए. So it's very difficult for white to meet this. क्या करेगा वो? You can never move the bishop. My king is on a dark square. There is no discovered check. So it looks pretty safe. What's a yellow यार? 2200. +1 experience वालों का है फिलहाल. No hiring for freshers. अरे बाप रे. टिकू भाई आप कब कैनेडा में खिलाओगे यार? ये सवाल हम कल जवाब देंगे भाई. ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है. Are you brother of RT टिक्कू? यार आई एम नॉट किडिंग. पता नहीं कौन है आरती टिक्कू भाई. चैट ने दिमाग खा रखा है. मेरी बीवी है भाई, मैं जानता इसको कौन है. आई डोंट नो हु दिस इज.
A new fiddle said that the world championship runner-up will not get an auto qualification. Yes. So it's technically a good rule because I think what's happening is एक spot हर बार नेपो को मिल रहा है and people are tired of it. Like if he wins the qualification events, then it's awesome. But kahin na kahin Indians might have a problem with this pretty soon. If let's say an Indian wins the candidates, but he loses the world championship, then he would have had a confirmed spot. So he would be the unlucky one. So overall, I do agree with the concept, but we might be the first ones to suffer from it. That is the problem. What? It's Tikku, not Tikku. It's TICKO. Tikku की बहुत pronunciation है भाई. जो कश्मीर फाइल्स वाली में जो थी वो अलग थी शायद. Now Bishop exactly. Bishop is incoming by bilkul. So for example, chat, even right now you can play this. That's the beauty of pins. How? Bishop f7, knight d4, exchange sack, no, rook d4, and the bishop is still pinned. So even this is possible. That's the power of pins by. What's your real name? Tikku, exactly. अरे अरे फिर से स्टार्ट कर दिया. अरे शुभन भाई तुम कहाँ हो भाई? तीसरा टूर्नामेंट स्ट्रीम कर रहा हूं मैं भाई. तीसरा टूर्नामेंट. 2 टूर्नामेंट खत्म भी हो गए भाई. इंडियन प्लेयर्स करोड़ों रुपया कमा गए. तुम कहाँ हो यार? यही चाय मुझे मिल जाती है गरम गरम अभी कुछ पीने के लिए. लेकिन भाई कुछ सपने देख रहे किसी के. नगीवन भाई बोला यार, निरंजन भाई नहीं. मैं कहा नगीवन भाई सपने देख रहे भाई. लल्ला लल्ला ऐसे लग रहा था मुझे. सिक्योरिटी इंजीनियर रोल्स भाई क्या करना होता है सिक्योरिटी इंजीनियर को? व्हाट इज द मतलब इंजीनियर्स के बॉडीगार्ड बनना है क्या? इज दैट द रोल भाई? क्या करना होता है सिक्योरिटी इंजीनियर को? यूरोप में चाय नहीं मिलती, क्या बात कर रहे हो? टी इज अ ब्रिटिश प्रोडक्ट मैन एज फार एज आई अंडरस्टैंड इट. फिडर सर्किट क्या ओपिनियन है भाई? फिडर सर्किट बढ़िया तो है यार. जो अभी जो गुकेश ही था ना, दैट वन राइट, दैट्स अ गुड फॉर्मेट, आई लाइक इट. By the way, chat, 10 मिनट से कम है उनके पास. 15 minutes. Slowly we are building up towards the final, I would say 15 minutes of the stream. I think we will have the result in 15 minutes. That's my guess. Rookie 4, I think, is a bit, it's a sus square because I can't pinpoint the reason, but feels a bit sus. I don't know why. I can't pinpoint. F3 to nahi hai, I guess, because there's rook d2 check, but yeah, maybe knight c5. It's a bit sus, the square. I don't like this square. He played something. He played a5. भाई ये मूव, चैट तुम में से एक बंदे ने भी a5 सोचा था? And this is why I am not playing the candidates, chat, and this is why you are not playing the candidates. मतलब व्हाइट के पास पास पॉन है. आई एम स्ट्रेस्ड आउट कि अरे पास पॉन क्रिएट ना कर दे. ब्लैक इज लाइक लेना तू पास पॉन, लेना भाई लेना. ये क्या था निरंजन भाई? व्हाट अ मूव. लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रहा मुझे. अभी a5 पे अरे समझो, इफ यू ग्रैब दिस पॉन कुछ चेक आ रही है खतरनाक. अरे नहीं नहीं, मैं तो वो नहीं करूंगा. मैं ab4 मारूंगा ना. नाइट d4 मारूंगा पहले. नाइट d4. हाँ, but then I will take this. Oh, I will. Oh, first take this. अच्छा. Oh. वो समझ गया. Wow. And now there is no end passant by. End passant can only happen on one move. You cannot do it again. Oh, rook b1, rook c4. मैं तो b6 कैलकुलेट कर रहा था. b6 and now what? Rook c8 simply, yeah? Just in time. So what a move, man. a5. Crazy move, Gukesh. You know, moving around. Yeah, beautiful. T has Chinese origin. Really? I thought, yeah, British ने क्या क्या चीजों पे अपना लोगो लगाया हुआ है फिर. पता नहीं है. I thought it's a British product like T. Maybe I'm wrong. Signature move, अरे बिल्कुल. I think maybe वो बाद में एक साइन करके दे सकते हैं बोर्ड ओपोनेंट को. maybe या ज्यादा हवा में उड़ रहा हूं मैं. By the way, the thing is, पता है, it's like, David Navara and Thai Dai Van are like top 2 players from Czech Republic, I think. Like, it's a great opportunity for all of them.
By the way, he's taken on d4. He finds the best move. So इनके लिए it's also a challenge. Yeah, it's not easy. At the end, they're playing like top 20, top 10 players in the world. It's not easy, man. And people who are motivated to win every game, by the way, जो candidates होने वाला है, it's not easy. So yeah, it's hard luck for them also. Yep, rook d4 captured. गुकेश नेचर पॉन मूव है. आई एम 400 रेटेड कह रहे सुमित शेर. भाई पर नाम तो शेर है ना भाई, क्या फर्क पड़ता है भाई. रेटिंग 400 हो, 200 है, 4000 हो, नाम में शेर हो तो भाई कोई बोले यू, मैं शेर हूं भाई, शेर भाई तो अपने आप लोग कांप जाते हैं भाई. किसी को रेफरल मिल गया, अरे बढ़िया भाई, लोग की जॉब प्लेसमेंट भी हो रही है. चैट सब्सक्राइब टू द चैनल. Who knows? You might learn something about chess. You might support the players. You might get a job. You might get a promotion. Who knows? अगर आपका बॉस भी चैट में बैठा हो, देखे कि आपके और इनके इंटरेस्ट सिमिलर है, then you start hanging out and suddenly you get a promotion. Who knows? Knight or bishop preference? I prefer a bishop here always. Knights are, I hate the knights. Playing with them, playing against them. Don't know. Yours, I guess my age. 8. That would be my guess. And it's SAHIL. आज तो मेरे नाम की स्पेलिंग की मुझे 50 वर्जन मिल गए भाई. सीखने को मिल रहा है काफी. कल को मैं कोई देश छोड़ना हो तो क्या क्या नाम रख सकता हूँ जो सिमिलर हो. By the way, 7.5 minutes for Thai Dai Van now, so it's not looking that great, especially the position as well. Do you think he'll resign, Ranjana? Because technically, yeah, even now we can understand it's just objectively lost, right? So do you think he'll resign or will he play on? I think he will resign in seconds. NM official भी नहीं है कि नहीं? NM नहीं है, but NM US फेडरेशन देती है. So और CM official है भाई, CM फेडरेशन टाइटल है. लाइव गेम का मजा कुछ और है, ये तो है. क्या चांस तो नहीं लग रहा मुझे. Yeah, because basically chat rook hanging है, you have to move the rook, right? Rook तो दोगे नहीं. I pick up this and I'm going to next pick up this and then I will play rook b4 and I will have bishop. So you have to, I think you have to push the pawn. I don't see anything else. And forget the checks, yeah, matlab simple rook b8. Even this, like even simple, forget check and something simple. And a4 hanging here, you can't save this. There is no way. It's completely lost. Rook c2, yeah, bishop d7, rook c7. Rook b7. Nice trick to finish it off. Yeah, it should be lost. बोर्ड दिखाओ रंजन भाई. मैं वेरिएशन दिखा रहा हूँ, बोर्ड ही नहीं है. बढ़िया भाई, एक बार बोर्ड दिखा दो रंजन भाई. So I was showing this variation ki bhai, let's say rook moves to b2, rook c4, b6, rook c8, b7, rook b8. Then you have rook c2 with the idea of pulling the bishop. I could just take this, also possible, but there's also bishop d7 controlling c8. And now if rook c7, there's rook b7. Rook b7, bishop c6, and you win the rook and then the pawn and then your queen. So I'm pretty sure Naguyen is strong enough to calculate all these variations. So he must have seen this. He must have seen this in his mind. I am stuck at 1500 advice. Anuj bhai, 2 advices. One, analyze your games. That's the number one advice. Get Chesscom membership and analyze your games. Analyze every single game. Second would be to really just learn something, solve tactics. Like I was about to say, learn openings. That's a good advice as well. Ek opening अच्छे से जानो हर type की, whatever you play. But also tactics, man. Solve a ton of tactics every day, half an hour, 1 hour, whatever you can do. 9 yellow tactic. You are India's chess hope. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. असली हीरो चेस प्लेयर्स थोड़ी है, असली हीरो तो चैट है भाई, जो जात को बैठ के सपोर्ट करेगी चेस प्लेयर्स को, स्पेशली ड्यूरिंग द कैंडिडेट्स. By the way, rook b1. Okay. I mean, he's playing on, but I don't see the point. Okay, rook c4, king f1. Okay, I think rook a4 pe does b6 work? Is that the idea? Rook b4, b6, and it's not like, yeah, maybe that's the concept here. Will Gukesh win? No, he'll be India number 2, just 0.3 behind Vishy, I think.
आप यूएसए से, मैं यूएस में खेला था यार, आई एम नॉट फ्रॉम द यूएस दो. 5 मिनट है भाई यार, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है. ग्रॉस को. हाँ ओके चैट, लेट्स टेक अ गेस, कितने बजे गेम खत्म होगी? लेट्स सी हु कैन गेस. निंजा भाई, व्हाट्स योर गेस? एग्जैक्ट टाइम द गेम फिनिशेस, व्हाट डू यू थिंक? 12:22. मतलब 2 मिनट में. हाँ. So I'm going to guess 12:37. I'll go 37. Let's see. Okay. नीरज भाई की बात करने का स्टाइल मस्त है भाई. ओ अभी गेम खत्म हो गई, व्हाट? रिजाइंड. ही रिजाइंड 12:20 पे ही. मैंने पूछा ही उसने रिजाइन कर दिया. अरे भाई काफी मस्त बंदा है यार. हैट्स ऑफ टू नगवेन भाई, थैंक यू फॉर रिजाइनिंग. गुकेश ने किंग जी7 खेला, उसने रिजाइन कर दिया भाई. Vidit drew, Prague lost, but Gukesh wins the match, joins tied second place along with Nodirbek. And tomorrow we'll have a crazy match between Gukesh with the white pieces and Vidit with the black pieces. Yeah, there's nothing to do. Actually, I can just play Bishop D7. Exactly. Even King coming up the board, and there's nothing that white can do. And with this chat, thank you for joining in. Really appreciate you all joining in for the stream. And congrats to Gukesh for having a beautiful win. And hard luck to Prague for losing that game in one move. It's just blunder in a time pressure. Yeah. And with it, of course, like he had some chances there, but tomorrow will be a tough match. Gukesh against Vidit. Chat, before I leave, question for you. Gukesh against Vidit. Draw is out of the question. Who wins? Your prediction, and then we end the stream. Nanjan bhai, your prediction for Gukesh against Vidit tomorrow? Vidit will win by. With the black pieces? हाँ लगता है भाई. Oh, VD supporter है Nanjan bhai. Who is the chat supporting? Come on, let's go. All pairing. Kal Gukesh versus VD hai, and Prague against Rapport hai. These are the pairings for tomorrow from Indian players. Chalo bhai, good night. Was nice watching you and your community. Thank you, bhai. Bilkul. Gukesh. All three results for Indian. Prague lost. Gukesh won. As you can see him getting up there. Hard luck to Thai Dai Van Nguyen, and then who drew? Vidit drew. Yes. Vidit, I guess. कह रहे अक्षत रोज. चलो भाई कल देखते हैं किसका guess सही होता है, किसका खराब. Thank you for joining in chat. I'll see you tomorrow. Same time, 7:30 p.m. Bye bye chat. Keep smiling. Good night.